We gon' leave them stinking in the ditch. Niggas say they done with me and niggas say we tight as hell. Niggas ain't true no more. Busters I can't fucking tell. Niggas act like bitches, so I'd rather see them niggas dead. Leave your face down on the ground just for that baby shit you said. The DJ sounding, you don't think it's time to get it on. Misery be all in me, relieving stress. I got the phone. Good morning. Good morning. Welcome. Good morning and welcome back to another What's Buddy? Life is team. Welcome everyone. Welcome each and everyone to another professional Watch Party live stream where this professional analyst will break down every single round for you. Welcome back. Namaste unknown. Namaste Kawaii. Hello Akansha. Hello Vyansh. Hello Amrit. Hello Golden. Hello Unique. Hello Rohit. Hello Electric White. Hello Hardik. Hello Pace. Hello Wadada. Hello Warrior. Hello Golden Legend. Drew Edits. TWG Army Live. Kiro. Sia. Kelly. Namaste. Kriko. Electric Killjoy. Stankish, Johan, Yavish, Ronit, Arshit, Kriko Clips, Warrior, केवल, कृतिका, पीयूष, सोहन, अननोन, सभी का स्वागत है एक प्यारे लाइव स्ट्रीम में. टुडे इज अ बिग डे. टुडे इज अ बिग डे क्योंकि आज होने वाला है फेपरेक्स वर्सेस T1. एंड अगर तुम लोगों को लगता है कि भाई ये एक नल्ला पाव मैच है तो ऐसा नहीं है. ये मैच होने वाली है दो घरों के बीच में. पेपरएक्स में है PRX फॉर सकने. ऑन द अदर हैंड वी हैव अस्कुरेक्ट. और ये दोनों सगे भाई है. ये सगे भाई है ना. तो ये दो भाइयों में आज मचांड होने वाला है, लफड़ा होने वाला है. अगर कोई एक दूसरे को नाइफ किया तो वहीं पे खड़े रह के दूसरे वाले को सटाक करके चापटी कोई भी दे सकता है. So it's gonna be fun, bro. It's gonna be super fun. It's gonna be super fun. तो मेरे को बताओ ये चीज 1:30 हो गया है. नहाए हो कि नहीं? हाँ. How many of you guys are not Shambho? How many of you guys are not Shambho? अबे यार स्ट्रीम चालू करना था यार. तो नो शंभो यार. Par, thank you so much for the 40 rupees on Super Chat. As always, W intro. Love you, brother. Love you. Thank you so much. First Super Chat of the day. दरिया में. भाई मैच तो है आज. कुछ भी बोलो, आज हेवी मैच है. कोलगेट तो कर लेता. कोलगेट मैंने कोलगेट एक्चुअली मैंने कोलगेट भी नहीं किया. अबे यार टाइम ही नहीं था भाई. भाई मैं 12:30 बजे उठा. ठीक है 12:30 बजे मैं उठा. फिर 12:30 से मैं अभी 1 बजे तक मतलब 1:10 बजे तक मैं ये हाईलाइट बना रहा था भाई. मतलब वो हाईलाइट भी मैंने अच्छी नहीं बनाई. मतलब मैंने बस ये किया. ये देखो ये बनाया भाई मैंने.
भाई देखो 20 लोगों ने लाइक किया है, इस पे जो कमेंट करेगा ना वो एक लेजेंड है भाई, लेजेंड है। और ये चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा ना भाई वो तो बकरा है, बकरा इस दुनिया का बकरा है। Sorry, professional analyst should never do that. मैंने किया है सब्सक्राइब, कांग्रेचुलेशंस, आप बनते हैं एक गोटी गेमर। भाई आजकल कोट क्यों पहनते हो? अरे क्योंकि प्रोफेशनल एनालिस्ट हूं मैं भाई। यहाँ पे कुछ चल रहा है, ए रुको क्या चल रहा है, सुनते इन लोग का बात। Fought him multiple of times in the different game and I always lost. But now it's Valorant and I think I'm more experienced than him. So maybe this time I'm really confident. ओ अच्छा, भाई के अगेंस्ट बात कर रहा है कि मतलब भाई को मैं भरूंगा। ओ ये देखो ये दोनों भाई आइच्छा गावत, मजा आने वाला है। Alright, welcome back to another day of VCT Pacific, the semi-finals. And they're looking to punch their ticket to the finals. Give it up for T1! Woo! Bye. One of my favorite teams, huh? Chat, T1, if you guys don't know, one of my favorite teams. And Izu, one of my favorite duelists. Woohoo! क्या बात है, साया प्लेयर द गोट। अरे PRX की टीम पीछे ही है। And now the champions. And now your reigning VCT Pacific champions on the hunt for another title. Welcome to the stage, HyperX. अबे ये दीदी कौन भाग रही है ऐसी बाजू में? अच्छा वो सीट ढूंढ रही है, मेरे को लगा इनके साथ क्यों चल रही है फुटेज खाने। अलग है भाई। मोनिया भाई गिर गए थे क्या उधर? अबे दवाई अभी सो के उठा है भाई, उसको एक गेम हाथ गरम करने लगेगा। चलो मतलब अपने को समझ गया। पहला गेम जो है वो पेपर एक्स हारने वाली है। पहला गेम पेपर एक्स हारने वाली है भाई लोग। कल का एनर्जी का देखा क्या? ये देखो भाई, तेरे को पता ही नहीं मैं स्ट्रीम कर रहा था तभी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला था कल? मैंने लाउड वाला है ना लास्ट मैप देखा नहीं, लेकिन जाते जाते मैंने एक ही चीज बोली कि भाई लाउड का जो थर्ड मैप होने वाला है ना, लाउड जीतने वाली है। ठीक है, लाउड वर्सेस इनका लेविएटन का थर्ड मैप लाउड जीतने वाली है और बड़े मार्जिन से जीतेगी। मैंने बोला वो हो गया भाई। DRX वर्सेस T1। और भी चार्ट इमेजिन करो ना भाई, T1 ने ना अपना नाम रखा है T1 और वो लोग है ना T1 खेलते ही नहीं। अगर ऐसा होता तो भाई मजा आ जाता ना। अरे अबे हाथ उड़ाना होता है बे, क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? एक्सक्यूरेट्स 6 साल बड़ा है 4 सेकंड से हैं। 6 साल बड़ा है ब्रो। छापा काटा। I mean, if I were like T1, I would want to try to bring out Breeze because PaperX's Breeze against GENG. ओ हाँ भाई, T1 का Breeze बहुत अच्छा है भाई। T1 का Breeze, ईसू का योरू भाई। Then again, that is where X could pop off. अबे Breeze बैन किया सालों ने। हट साला। They are more versatile right now. They can't play those non-duelist comps. But I think what T1 would like to अबे split खेल रहे भाई पहला मैप। doesn't play on that jet. Ooh.
So, you know, just to Where the maybe Gekko put Paper comes X. out. Yeah, to put Paper X in a position where. अबे यार they're छी not यार supposed पेपर to एक्स use ने that ब्रीज energy. बैन किया Well, यार that makes उतना sense अच्छा why मैप है Bryce उनका banned, यार because T1 का Sunday was देखने trying मिलता out that योरू Yoru wasn't too great, हट। but Split and Ascent भाई now. इजू बहुत अच्छा खेलता है यार So this is where we have that Rossi Viper, you know, double controller along with Izu combo, but at the same G time, out, Paper yes. X experiments around. Sometimes they bring out the Harbor with Forsaken, and it can be very भाई interesting. बाइंड भी बैन कर दिया अरे सारे योरू के मैप्स बैन कर दिए हुए हट Yeah. I mean, I'm just curious to see what Suncheck. the comps we're going to be having here. And भाई जिम Sunset. चले जाओ मोटे होते yes. जा रहे हैं वॉच पार्टी देखते Decider. देखते This was kind of the. भाई कल है ना मैंने मेंबर्स ओनली व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना एक फोटो डाला मतलब ऐसा शर्टलेस फोटो डाला मतलब इतना ज्यादा रिवीलिंग्स नहीं लेकिन भाई ने उनको पंप दिखाया भाई का ठीक है कल जब जिम के बाद का वो लोग हिल गए भाई हिल गए समझ रहा है ना ज्यादा बोलना नहीं भाई एक फाइट डालूंगा ना गाल इधर से इधर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा भूत मारता हूं मैं 2 chambers today. It is not 2 chambers, but it's Yoru for second let's go triple duelist Woo! This feels Paper X. Well, but this was the T1. I mean, no, the talent. The talent, but this is not that talent. I Okay. hope. Oh my gosh! I hope it will not look like talent play. Let's see our triple duelist against Triple DRX. That duelist! was god awful. All right, but this is But- classic composition for T1. The double duelist, you know, we've seen that Fezul, before. तूने तो It देखा works भी नहीं, great, हगरे। especially when it's Saya player on that jet, opping off of his, you know, mind. But Paper Rex now bringing Forsaken on this Yoru. That's going to be very interesting if they know how to play around that. I mean, he's used this multiple times. You're on equals mine. to I'm Inni? loving What to is see it Inni, again on a Kelly? different map here, so I'm just again taking it back. Triple by duel this, is Q. but There is I a don't lot know, of things bro. that you I can don't know. utilize But with looks such good for high me. mobility agents that Paper X has, and again, one of the big 'Cause things that's Paper is X. you can always Paper combo X. that Viper and Raze on Paper X's No side. initiator Well, chat, one no thing's for sure, initiator. both teams क्या यहाँ पे massively- no initiator इन लोग को दर्द देगा? दर्द देगा क्या इन लोगों को? भाई T1 की टीम है ना, तुम लोग को पता नहीं अगर रहेगा ना, भाई तुम लोग ने देखा नहीं रहेगा ना T1 का गेम्स, भाई इतना मेजर खेलते ना वो लोग, सामने वाला हिल जाता है भाई. भाई हाइट डिफ है. जिम कितने बजे जाता है? जिम में जाता हूँ 9 साढ़े 9 बजे. ट्रिपल डुअल इज भाई सावाना भाई. Forsaken is 18 year old. सही में? Forsaken 18 साल का है. मुझे बताओ जल्दी बताओ कोई भाई. सीरियसली बताओ, मजाक में मत बताओ. Forsaken कितने साल का है भाइयों? Yeah, I still remember the look on your face after that map. That was a very rough affair for all involved. But this time around, you got to expect it's going to be different. It's Paper Rex. Sure. Certainly with a Yoru, who's sort of a pseudo-initiator anyway. You know, that acts as their flash agent. That's going to act as their ability to get the entry since you don't have the भाई size. इतने छोटे Which क्यों है ये kinda लोग? surprises me that they say this. 'Cause हैं? Devai is like a player who I think of as like a really, really good Sky. So इतने kinda छोटे curious क्यों to है see यार how ये this is all सारे gonna लोग? pan out. I mean, Monyetta, phenomenal Raze. We Demon know One that साला from 21 years के ago साल में before भाई he शादी switched कर रहा है, over to माँ playing कसम. controller for भाई GE. Look, anything's possible with Paper X. I don't ever doubt what they're doing. I don't usually doubt Alex and his ability to really cook up. सब लाइक मारो भाई, सब लोग लाइक मारो, लाइक मारो जल्दी. 98 क्या लिख रहा है? आप भी तो छोटे हो. अभी Demon 1 है ना, Demon 1 आज मैंने देखा Demon 1 कितने साल का है भाई, 21 साल का. और वो है ना, जब उसका इंटरव्यू चल रहा था ना, वो बोलता है और ये है मेरी मंगेतर यहाँ पे खड़ी है, उसको मैं बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ, इसके वजह से आज मैंने मचाया है, ऐसा सब भाई. Specific agents, maybe. This will hold a bit more water. I know. Again, I don't have a lot of doubt भाई in टाइम आउट anybody चल on रहा है this क्या? squad to do their job and do it well for the most part. I mean, yes, you do see from time to time. चालू it's चालू rough, चालू ए but घूस सकले Paper कले X has घूस सकले proven कले us time and time again that they can cook and they can do घूस सकले it कले better घूस than सकले most. कले. All righty, well, here we go. Ladies and gentlemen, strap yourselves in your seats, sit upright, and hopefully you've got some water nearby because this is going to be a bumpy ride. Gate's going to be going down in 25 ट्रिपल seconds. डुअलिस्ट का डिफेंस देखते हैं अभी. What Oh, this B-Fake pump A जा रही does क्या? do as they start on the defense. I think Paper X is setting up for some kind of mid-hit here. You've got 3 players. Along with Mind Freak, could throw a Paranoia, try to crunch. with something in mind. Yeah, pretty far back is Forsaken. Probably looking to set up the TP. Yep, there it goes. And they are getting ready. But T1 on the other hand, फाइनल्स है क्या? spreading सेमीफाइनल्स out है. the map. Doesn't look like they're going for anything fast or aggressive. Really, the pressure here could be 3 potentially जन on पुश कर रहे हैं Carpe. भाई.
4 जन पीक कर रहे हैं, पीछे चले गए बे भाई। एक की वजह से 3 जन पीछे चले गए, नहीं तो अभी घुस जाते। इन्फो लेने का ट्राई कर रहे हैं दोनों टीम्स, कुछ ज्यादा भन-भन नहीं किए। Smoke this off. Yep, Paper Rex. Now they await. With that Trailblazer there, you're starting to think that maybe this is going to be some kind of mid-hit. They're going to reaggress towards this angle, but with the spike over on the other side, it's going to be the sewers maneuver. Something T1 and sewers. They're going to cut their way back over towards A. I was waiting for you to say it. The gate crash has expired. So it'll just be this 4-man push out here, peeking in towards Ramen. Checking sewers, but nothing being seen, and still only Davai on this side of the map. He does have that sheriff. ये वॉल है ना भाई, इसको बीटी दे रहा है क्या? Nothing to really try to slow दवाई भाई को वॉल बीटी दे रहा है, उसको लग रहा है क्रॉस कर गए। भाई सब दवाई gets one. Finds a headshot, also puts one to the Saya player. Crazy भाई, डायरेक्ट आइजू को मार दिया ले। No armor to speak of, so first blood is found here. कोई रैम्स पे नहीं है, सीधे उधर गए भाई। 3 जन स्क्रीन्स पुश कर रहे हैं। T1, I mean the triple push out into screens, taking really forward positions here. Trying to intercept the fight. Oh, he has done the damage, baby. Carpe भी 50 HP है। Easy round for PRX. 2v3 guys. Oh, 2v2? 1v2? Oh, Rossi! And T1 will walk away with the pistol round win. Yeah, a great hold here from T1. This was a really challenging retake that they had to defend. Good job there clearing screens, kind of identifying that Davai was more or less likely pretty alone there. They didn't get a lot of contact other than the sheriff shots that got the opening kill. So they're able to overstack that angle, take him down. And Paper Rex. अच्छा राउंड निकाले, अच्छा राउंड, काफी अच्छा राउंड निकाले यार। यार बहुत अच्छा राउंड निकाले भाई, बहुत अच्छा राउंड निकाले। Well done, well done. Well done भाइयों। Some fancy भाई क्या रीड करते रहे लोग। अभी देखो बीमेन लगा के रखे, 3 जन बीमेन एम कर रहे हैं। वाओ, Saya player reads him so well. Nice, Mindfreak gets him. One yet ends something into the ground. One kill traded back, but Yes, Kiros ही क्या हाँ। able to be safely recovered, so Mindfreak just has to leave it on the ground. प्लास्टिक सर्जरी किया है उसने। This lurk forward up over onto ramp. बहुत महंगी होती है भाई, बहुत महंगी होती है, मजाक से हटके। प्लास्टिक तल डाली। I really like the way that T1 is approaching this. Immediately when they see the triple duelist come out, it's a pump of the brakes across both the pistol and this round. They're not going to overcommit to anything. They're not going to give those duelists the ability. फैंटम किसके पास है बे? रॉसी भाई के पास ही है। लैपटॉप इनफ आएगा, बहुत ग्राफिक डिजाइन स्टार्टिंग हाँ। In hand before you make your decisions, and this is really nice to see from T1. अबे जाओ ना अंदर घुसो भाई, इको राउंड है इनका, मारो जा। इला 2 ही जन बचे भाई। खौफ है बे, खौफ, समझ लो, खौफ। मेरे तो भाई डब्ल्यू छोड़ता ही नहीं भाई। फ्लैंक आ रहा है माइंडफ्रीक। एक्सपेक्ट किया। ओह भाई इसका फैंटम मिल जाए भाई, इसका मर गया। मेरे स्पेक्स, एक्सक्लेमेशन स्पेक्स। Again, stops Mindfreak from being able to get that weapon that had been dropped earlier on. भाई दवाई का यार क्या है शेरिफ? Izu making this a little bit more costly for the side of T1. Currently in a decent spot if Saya player can upgrade the Marshal. Anything more than that. दवाई का शेरिफ है भाई, दवाई के शेरिफ में ना दवाई देता है वो। दाम धूम। अभी ये साया प्लेयर को तो ऊपर ही जाना पड़ेगा बराबर। नहीं सीडी से आ रहा है भाई, समझता है, उसको गेम प्ले आता है। सीटी पिक करो ना यार, सीटी पिक करो भाई सब लोग। अरे भाई कार्पे ने दोनों को मार दिया है। T1 में एस्केरोस ही है हाँ। नो इनिशिएटर बीटी होने वाला है, क्या मालूम भाई। So far so good for this T1 squad. कुछ सोच समझ के ही लिए रहेंगे वो लोग। You have to anticipate that for Paper Rex, you know, with जिंक आया हॉर्स भाई, वो गया है बाहर जा मार्केट में। कैसा दोनों को हेडशॉट दिया भाई कार्पे। Hit a lot of heads with that bulldog spray. बहुत हेड मारा भाई। साया प्लेयर ने ऑप निकाल दी भाई अटैकिंग। ओ भाई साया प्लेयर, भाई ये साया प्लेयर बहुत डेंजर प्लेयर है। आई लव दिस गाय।
No util on something and only a Another dash. 3-man stack here to play for the orb. Be able to feed it over to Monyet, get him closer to that showstopper. There's a lot of T1 waiting. Again, they're expecting aggression. You got to imagine with this triple duelist comp, that Paper Rex is looking to find favorable fights, overstacked fights, and try to claim victories that way. Again, so far so good for T1. I really like the patience. I really like the discipline we're seeing. And this early operator could be very, very challenging for Paper Rex to deal with. Slow चल रहा है भाई बहुत. Oh, smoke हटा. भाई साहब. Oh भाई, something को है ना. अरे भाई क्या adjust करके दिए ला भाई. मुझे भाई गन रखो ना, एक चापटी तो देनी मांगती है आपको. ट्रेड ले ना भाई का. लग गए, लग गए, लग गए. Drag that spray across. He gets taken down, and things looking very dire here for the side of Paper X, who are going to have. भाई लोग पेपर एक्स वालों का हाथ गरम नहीं हुआ है, शायद हाथ गरम होने के लिए टाइम लगेगा. Like the start we saw from Paper Rex against Gen G, where it was टाइम लगेगा, टाइम लगेगा. Doesn't seem like the pace and the normal Paper Rex style. Shouting भाई. Gaming style is quite Shouting भाई को there, घुस के मारना चाहिए ना. For now. बस भाई आते ना मेरी शादी में. अरे रवि भाई काश आप आता यार, बहुत दूर है यार. Knows it. Wants to go on the hunt, see if he can steal. ये माउस हिल रहा है बार बार. Love you रवि भाई. Happy for you baby. T1 साला अभी लीग ऑफ लेजेंड जीते और इधर भी. हाँ क्या? लीग ऑफ लेजेंड जीते. भाई मेरे को चाय या कॉफी की जरूरत है भाई. बहुत हेवी जरूरत है. मेरा है ना हेवी लग रहा है. मेरे को बोल के आता. It's that pistol round back in his mind. He's like, they did this last time. They came all the way through spawn. Ping is coming down. Easy round. Nothing noted here. In the end, will be Divide and Forsaken holding on to their weapons, but T1 converting that bonus to move up 3-1 nice and early. Paper Rex with the timer stopped. That might be the intervention coming through here from Alex. Yeah, and it's just a good hold in garage, and then a nice push-up for Saya player. Able to outduel Ilya. And then I like this move by Mindfreak. He gets ahead of the Sky Flash, expecting it to come. He just can't get his spray down in time, so it's not a bad idea at all. Just doesn't quite pay off as you would normally expect. And yeah, already gonna have to see if they can get their heads on straight. But this is how many times you can see face cam too. किसका? रॉसी का ना? Starts out a little bit slow, and you're thinking, oh boy, प्लास्टिक सर्जरी किया है भाई. सादा सुदा नहीं रहता है. बहुत कमाएला मार्केट में रॉसी ने. Well, this season once so far, but maybe twice. कल का नहाया नहीं, कल का नहाया नहीं ना. छी सेम सूट. भाई ये सेम सूट तो मैं 10 दिन से यूज कर रहा हूँ. Typically very much on point on when they will find the most amount of value. जिंग नहीं खेल रहा. नहीं भाई. Very different territory, but then again, it was different territory that we भाई saw from Paper एलेक्स Rex. का हुडी दे दो यार मुझे. क्या प्यारा हुडी लग रहा ना वे. क्या भारी है हुडी है. So it's kind of कलर देखो ना क्या प्यारा है उसका. It might not be 5, but with the way that these guys like to play, it may as well be. तुम भी करा लो प्लास्टिक सर्जरी. अच्छा लोगे. The tough part here for Paper Rex. ऐसा भी ना. ऐसा ना भाई. मोनियट भाई ने यहाँ पे बकी लिए. अरे यार कुछ करो ना यार. पेपर एक्स मजा नहीं आ रहा है भाई मार्केट में. ए भाई लाइक मारो तुम लोग. 315 को अलार्म लगाया था. अलार्म ही नहीं बजा. चुप साली. ऐसा नहीं होता कभी. उन्हें पीएम का लगाया रहेगा एएम का सोच के. ये मोनियट भाई गेट इनसाइड. As we've yes, come to let's kind of go. expect with this new iteration of T1, ever since the AVL, they felt really stable, really solid, and you're seeing it once again here भाई today. इतना दूर एंगल क्यों लगाया बे उसने? उससे मरेगा क्या? उससे मरेगा नहीं ना? Grab the orb, send out those stinger shots from Mindfreak after the orb is taken, making them think. 3 जन मिड पे पीक लेंगे अभी. भाई कैसा मरा हुआ भाई PRX पे. Never. Oh, Yoru just sent his TP into there as well. Oh भाई अभी oh पर सकने. अरे shit. Finds one. And yep, now I mean even identifying what weapons around the corner. Nice smoke यार. कंट्रोल ही नहीं दे रहे भाई. गेमर्स है ना सब लोग. Wait out for a little bit longer here. Boombot's still in the back pocket of Monyet. Can use that to scout and guarantee that there's still some presence outside of the garage.
Rossi not quite भाई catching. ऑपर को गिरा के ऑप निकाली क्या? नहीं नहीं, ऑब्वियसली पुश नहीं करेगा वो. Drifted back over into mail towards safety as the आज smoke भाई आप comes सोए down. कि नहीं? सोया ना मैं. Mindfreak just trying to cover his money. 9 बजे सोया और फिर अभी उठा 12:30 बजे. Every single corner that they go to push into, they have to suspect that there's going to be a bucket around it, but as the boom bot will identify. ओ मार मार. Now where he's positioned, there's the jump forward. Oh, Shots भाई. going in. He's Oh, already Mindfreak out of got the midair. trade. Takes Ah! out Montiel, but Forsaken just has them all lined up, one after the other. Picks up 2 more kills to finish the round and get Paper X on the board. Yeah, and you're seeing some good adjustments here where Paper Rex spreading the map a little bit, having Forsaken with that gate crash all the way on the other side of the map, able to come over and help Monyet. His whole play there is, I'm going to make contact Double with somebody headshot. on the other side, on A's side here. He got the kill. खेला है भाई, खेला है. 4 सेकंड खेला है भाई. माइंडफ्रीक के ये 2 किल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. इतना हगिस किया 4 सेकंड ने, लेकिन लास्ट में भाई कोलेट मार दिया. He does a great job with it. शाइन For his troubles. 4 सेकंड पे यहाँ पे अल्टीमेट रेडी. Attempted setup, but a fast hit here. Izu, Potentially Rams जाते हुए. just gaining space initially. 4 सेकंड फ्लैश पिक कर रहा है. इजू ने 2 मार दिए भाई साहब. Showstopper into play. Looking for a target. इजू को अल्ट आ गया है तो इजू ने खोल दिया, लेकिन साइड पे कोई नहीं है. मॉनगेट यहाँ पे रैम कंट्रोल लेते हुए. अरे भाई मॉनगेट ना सुन रहा. Now his own showstopper at the ready. Spots Izu for a moment. भाई साहब. No further mobility, no escape. Shish. Monyet राउंड है यार. barely यहाँ पर survives in the round. Rossi now has his work cut out for him. Low HP bars, however, so certainly is still possible for him to try to get this. कोलैट मारना एबिलिटी है कि तुक्का? He's already done it भाई once. कोलैट का तुक्का है ना, उनका ही लगता है जिनके पास वो एबिलिटी होती है. He's been pretty good in these situations for T1 so far this year. Really disciplined. भाई आपके भी दोनों साइड से चांद उड़ गया है. हेयरफॉल 7 seconds, बेच में so that's more than enough. कौन है ब्रदर्स? फॉरसकने और एक्सकुरेट. हिंदी कमेंट्री क्यों नहीं देख रहा? ये हिंदी तो है. Paper X sometimes not known for their, you know, their reserved. क्या रॉसी भाई यहाँ पे 1v2 निकालेंगे दोस्तों. 20-25 सेकंड है भाई. अभी तो पनिक होएगा भाई का. अभी तो पनिक होएगा. Not even on the spike. ऑल अप करो, लेफ्ट चेक करो, आराम से बेबी काम डाउन. Rossi, वॉल ड्रॉप हो रहा है लेकिन भाई का. every single angle, every corner to check. 15 सेकंड ऑन द क्लॉक. He plays with just as much ambiguity here as Paper Rex. He's going to try to sprint it over here towards the B side. ये तो आउट ऑफ सिलेबस निकला. They have just barely enough time. Right on the corner. And नहीं है, हार गया. oh, it's going to be so close, but I think he just missed it. No, he's got it. Never mind. Okay. By a fraction of a second. Now takes this Even he fourth thought he spot. lost it, Again, right? HP bars here on the players of Paper X. So very low. First contacts there. Monyet take it down to Vi now. Looking to push the corner. Rossi turning away from it for a brief moment. Goes back into Vi. नाइस वन. दवाई भाई 30 HP था दवाई. माँ कसम भाई ये भी गए. मेरे को लगा जमा हो जाता अभी. It's a brilliant Sheesh. attempt by Rossi. I mean, well done. I really didn't think he had it. I thought he would just हाँ, come up पर short, X. maybe. He got भाई ahead of लेकिन it by खेल लिया था क्या? fractions of a second. रॉसी ने खेल लिया था भाई. गेमर है वो. Able to catch him off guard as well. Still had a couple snake fights there. Maybe could have used one to delay a little bit after he got the first kill, but भाई ये मोनियट ने खेला है भाई so इधर. tricky to deal with. कितना प्यारा And I like पोजीशनिंग the करता change है. pace from T1 this time. They say, okay, you guys are playing a little bit slower. You're playing for information. मोनिया भाई. He did hit it. He's right. Increasingly more lax these days. Well, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही भयंकर गेम प्ले चलते हुए PRX ट्रिपल डुअल इसके साथ मचा रही है भाई साहब. लेफ्ट राइट सेंटर मजा आ रहा है देखने के लिए. लेकिन T1 भी ऐसी एक नल्ली पाव टीम नहीं है. T1 एक बकरा टीम है. अभी T1 एक लीड पे, लेकिन सिर्फ 1 राउंड का लीड है. 3-2 स्कोर है. देखते हैं अभी क्या होता है. With Paper Rex, you have to expect एक the मछली unexpected, पानी में गई. but फिर अर्जित भाई उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताना पड़ेगा. जल्दी बताओ प्लीज. Triple थैंक Duelist यू. here is pretty out there, even for थैंक यू Paper फॉर द Rex. 40 रुपए अर्जित AK 8X भाई. उसके बाद क्या हुआ? his team, we just don't have the processing power to make it No, happen. there's not enough quantum computing in the universe that can accurately predict what Paper Rex wants to do. But timeout called. T1 for now still here with this lead, but does it last? 2 stingers coming into this one. They do have a pit, so they can get themselves onto the site. Would be in a good spot, but something is going to look for some early aggression. Backed up here by Forsaken with the flashes up in hand. Instead, okay, trying to Oh, slash why it. Nice amount of something? Wow. Something. Oh, that is just अगर ये insane. मारता ना And something. that's the line he
decides to take. Now he's going to go pushing up and What? What a turn! Managing to find one, turns back, takes down Forsaken as soon as शी यार इजू बहुत अच्छे ट्रेड्स ले रहा है भाई. Bro, इजू is cooking भाई. इजू को लेके ना POV नहीं दिखा रहे साले. इजू का POV नहीं दिखा रहे. उनको लग रहा है भाई 4 सेकंड ही मारेगा, सबको समथिंग ही मारेगा भाई. इजू भी बकरा गेमर है यार. Instead, they're able to turn it on their heads. RT1 just great. चले ना भाई लोग, शायद मैंने मच्छर अगरबत्ती लगाई थी ना, तो ना शायद 5-10 मच्छर है ना मर के मेरे सर में गिरे. Really exciting stuff from him. He's hungry. Yeah, to that range. Oh, he's got a pretty weak though. अरे मार दे. अबे क्या कर रहा है? ओ भाई पोजीशनिंग कर रहा है भाई. For the sake of saving, absolutely. So prize does get collected here. Manya just going to be holding on to this one for dear life. To pass it back over to something, see if he can find सही में भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ next round, because it seems like timeout call very good. Izu performance. लाइक मारिए दोस्तों, 500 लाइक के लिए ना 3 लाइक चाहिए. 3 मैंने अभी गिना, 1 2 3. तो वो जो ऐसा फुल स्क्रीन में देख रहे हो ना भाई लोग, अभी देखो राउंड चालू नहीं हुआ है. एस्केप दबाओ और लाइक करो. चल you're able to react to these कैसा मारा भाई समथिंग को वो इजू. Oh my god, what? भाई वो फोर्स भाई वो दोनों को भी ऐसे ही मारा है. You're not allowed to do that, Izu. Oh my god. ए भाई पागल है भाई इजू, दोनों को ऐसा ही मारा कुछ भी. Well, they're showing that they can hang in terms of mechanical ability with Paper Rex, that's for sure. Goodness. God, go buy a lottery ticket. Oh, my jaw is on the ground. That is just insanity. I mean, but that's, you know, Izu said ये it पॉइंट्स in का one of his interviews लोचा that किधर he डालने का? wants to be known क्या? as the faker लोंचा? of Valorant अच्छा लोंचे. for Korea. I'm not finding anything, but I mean, Forsaken अरे is still नाच there. रहे He's क्यों just हो not भाई? really एंगल्स giving क्लियर any करो breaks. भाई. Sideplay भाई figure out आज the पेपर board. एक्स को है ना Takes advantage. टोचन देना पड़ने वाला है. Seriously. 2 kills found. Poison टोचन off देना the पड़ने वाला है भाई. top ramp is something otherwise would be in a decent posted position. He dodges down the boom bot. भाई पढ़ी भाई सारी सुपर चैट्स पढ़ी मैंने. गूगल पे भी पढ़ा मैंने. Just chucked in here. C1 wants to Shot get this way. something. 3v3 सिनेरियो गाइस. कारपे के पास भी अल्ट है. अगर ज्यादा ही काम 25 होने आ गया ना तो अभी अल्ट मार दिया उसने सीधा. No 1v2 1v1. He finds them both. Now brings it into a 1v1, but he has to try to flush Rossi out of this pit. So it's the paranoia. गंदा पिट है मालूम भैया. वो अच्छा है एक्चुअली. Tap on the decay. He's got to back away from the pit for now. Oh, well played, bro. He has to stick it now. This one, the retap again. There's the spray. Oh. Rossi able to take हट him down. यार. T1 carrying on their merry way now 5-2. भाई एमएन वालों यार मारो ना भाई. क्या कर रहे हो? Obviously Saya able to punish the aggression of Paper Rex outside of A main. भाई कोडिंग कब सीख रहे हो? आती है मुझे. Their own operator. Yeah, why not? नाच रहा काई को था भाई 4 सेकंड. Sort of understanding the way that Paper Rex wants to play some of these. ये देख ये कुछ भी मार रहा है भाई इजू. ए भाई इजू का है ना पेपर ये क्या उसे कहते हैं? इजू का पीसी ऐसा गायब करना पड़ेगा. बहुत मार रहा है वो फील कर रहा है भाई खुद को. Viper's Pit. Blade Storm as well for something. मिड अल्ट यहाँ पे क्लासिक दवाई का. Down into mid. So now you're going to have to really rely इजू का एक किल में अल्ट आ रहा है भाई. and something to control the edges of this map. Try to keep T1 from getting any easy hits onto the site. Mind Freak though, just with a stinger. So they're one-way set up. Yeah. Oh, they're looking for the stun here as well. Yep. Barely managing to get out to safety. The Trailblazer expiring before it rounds the corner and spots. Guess करो मैं क्या खा रहा हूँ. Also just watching to see if there's any forward push out of this Viper's pit. Something continuing the jiggle here around ramps, but it seems like it's just going to be similar movement here from T1. 3 जन बीमन पुश किए PRX के. Now they know they are A. And then just drift through those sewers ever so quietly and get ready to attack the A site. I mean, something's gonna have to come up huge potentially. He is getting some help from Manya. Something ult में peek ले रहा है. Oh. Will it be in time? Ooh, be able to dodge that. Snappy flick on Butter, yes. It's now pulled out as side player wants to go for the entry, drops down into the cubby. भाई एंट्री मिल गया इजू को. ओ भाई समथिंग. भाई समथिंग डायरेक्ट बाहर पिक आउट किया है वैसा. The last two standing, and given that they just have these stingers,
they need to kill somebody, recover a ठीक weapon, है, then go for the save. ठीक है, As Rossi snaps ठीक है on भाई, to ठीक है. take him down. But they try to play this one out. 6 and 1, Rossi on the jiggle peak, able to spot him out. Mind Freak just wanting to try to isolate somebody, get a kill, find something additional here, but Saya player with the option. आप खेलोगे इसके बाद? हाँ, मेरे को अभी सब इन करेंगे वो लोग. Yeah, again, they're just reacting so well. भाई please comment on Tens playing controller. To get the reinforcements मैं there, क्या but comment करूँ? Izu's so ready for it. While this is the first time Izu has उनका played IGL है ना, Raze, IGL. here in VCT पप्पा है specifically, has पप्पा. played it some before. ऐसा He was मारता है ना वो. a duelist main सामने वाले को दिखने नहीं before he देता came over भाई. to T1. कुत्ता बनाता है People don't कुत्ता. know, you know, back when he was playing in the VCJ, उसका नाम भूल गया he अबे was मैं. often playing Jet. Sometimes Raze, but mostly Sentinels Jet. वाले So he's IGL का very क्या नाम है? comfortable. भाई We've seen एकदम it on हीरो Dota, माफिक right? He दिखता है has वो. played क्या that नाम है this उसका? year. Look damn good. Yes, exactly. So when you get him on the duelist, you can see he's very John comfortable. QT, He has yes. tremendous reactions, tremendous reflexes, and it's even John giving QT. Paper Rex a hard time. And ऐसा speaking मारता है of ना hard वो. times, Alex क्यूटी is, बना you know, देता है सामने वाले को. having one right now himself. He's trying to keep the arms folded so he doesn't instinctively start slamming the Yeah. But भाई ये देखो ना ये कैसा खेलता है भाई. चैट वो वाला माउस पैड देगा क्या? मैं सोच रहा हूँ वो वाला लेने का. क्या बोलते हो लियो? I mean, this is the reigning Pacific champions right now in a single elimination playoff versus the team that finished in 3rd. ऐसा बोलते हैं Obviously some changes. कि अगर मैंने वो माउस पैड लिया ना 41. तो मैं इमॉर्टल आराम से पहुंच Like a पाऊंगा. much different, a much stronger team this season. Well, नहीं now मॉडल you're- आराम से One of पहुंच the ones पाऊंगा who are बोलते dictating हैं. the pace of this game. Right Yeah. now they are not. No, exactly. And one thing that's really impressive with T1 that I want to touch on quick is भाई the T1 fast flexibility भी कर रही है that शायद, हाँ? Izu gives this team. He's played so many different agents, so भाई many different roles. अगर and he वो plays them off फास्ट stream कर रहे as हैं well, whether it नहीं be नहीं नेड Omen, कर रहा है ये तो माइंड फ्लिक Yoru, पीछे the जाएगा. Raze now, he has been really impactful. Izu straight up ult कर रहा है क्या? for T1. नहीं 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 straight up Just नहीं straight why up they नहीं. were so high on this pickup coming out of the off season. It's another big change up though. Haven't really gone for that many full sends here onto the B side. खत्म जमा Looking जमा. for it as, okay, the TP out, trying to engage. Nice one, one hit by. अरे मर गया. Take down Izu, so that's going to be one piece of the Double equation blind here, taking down प्यारा. Flashes. You managed to connect भाई. on the side player there, backside. Oh. Or on the car bench. Nice. Forsaken, swinging back in, managing to find him. Spike now. भाई ऑपर को अल्ट कर देना प्लीज. एक लेट मिड आ रहा है यार. Tucked away behind the box, stay quiet. Rossi looks Excurate is some still in space. sight. They'll surely check him though. Maybe the dash in, but the dimensional drift as you Nice. mentioned does come into play. Excurate now going to be taken down. That's going to be the spike. Nice. Spotted. Forsaken just किधर भाग रहा है? हाँ? किधर भाग रहा है टोटी? Side player's hands. Seems like this timeout going to be working here for the side of PRX. भाई रॉसी सिटी से आ रहा है लेकिन दवाई उसको एक्सपेक्ट कर रहा है सिटी वालों. Defending side. There's a great little bait and switch there between Mind Freak and Monyet. Able to get out. Rossi? Spotted. Rossi does a lot of damage. Gets the Tens kill. और Takes it Tarik. down. I mean, any kills they find. Gautam Gambhir. For Paper X, it's not a good spot. So as much as they would love to just end the round right now, take that weapon out of Rossi's hands, try to deal some additional economic damage. Paper X Excurate and Forsaken are brothers. क्या बात कर रहा? I agree. They really shouldn't be in Rossi. भाई knows आपने that शादी now के he's लिए starting to पैसा be- बचा. माउस पैड में डी रैंक हो जाएगा. भाई बात तो सही कर रहा है. Well, Forsaken with a big round does pick up 3 kills to get Paper Rex 3 rounds. See if that momentum can continue, because so far it's only been 2 rounds consecutively that they got prior to this. गरम They go a little गरम bit deeper, चाय turn the भाई. operator back into the hands here of something once more. Yeah, and Mind Freak there, the TP is, you know, it's hard to know exactly where he's going to go. If he's going to go up, if he's going to go into the back alley, and Monyet takes advantage of that confusion, and then it's a great 1-2 combo from Forsaken and Mind Freak with the fake out into the Paranoia, able to clear the back of that site, and then that sets you up for a little bit of time to rethink things, get Forsaken his ultimate, allow him to find the rest of the players that are on this B site, isolate Saya player, take him down. Really, really nice chain of events there for Paper Rex. It's a bit more defaulty here from T1. Same setup that we've been seeing. Trailblazers check over defense. Only clear out one. Now a gate crash back over towards screens here from Forsaken. आहा मजा आ गया. Over, wants to try to maybe take a position, get stationed up at mail. Yeah, letting loose the gate crash on his way over for sure. Got to make sure that he has the ability to flex between the 2 sites. Saya player, slow creep up. Something ने B एमएन पुश कर दिया है बे. Getting a catch. या वो वॉल अप है, वॉल के लिए रुकाएगा वो. हाँ अभी पुश किया उसने. To advance. इसलिए
3 प्लेयर ऑलरेडी बी पे। ओ भाई 4 सेकंड ने भाई, लेकिन ए पे टीपी कर दिया 4 सेकंड ने, लेकिन उससे स्पॉट किया रहेगा राइट। ओ भाई साहब Backside here from Mindfreak, hits the But full yeah, flash. nice. Sends out the paranoia. TP's forward on towards sight. The swing coming in though. And he's still trying to get the smokes down, but Carpe managing to hound him down around the भाई यार corner. 4 सेकंड Finds ए the पे क्यों elimination. टीपी किया यार, हट। And again, the investment. They have the cash to buy another operator, but might need the cash push forward to try to buy for another teammate here. Caught inside. Oh, His X-Curate ends up getting taken down, but his Forsaken can't get the transfer, can't find the follow-up. Something now. He's just gonna have to drift away back over towards भाई the A ऑफ site. कौन off खेलता है again. भाई अटैक में, वो भी जेट। क्रेजी है भाई साया प्लेयर। With that information jump gate crash there, kind of. आई गेस 4 सेकंड ने वो जो ये किया ना, टीपी किया ना, वो टीपी में दिखा नहीं सामने वाला जेट। देयर इज अ स्वीट टाइमिंग भाई, वो एक स्वीट टाइमिंग होता है। वो 4 सेकंड ने जो किया ना वो टीपी, तो शायद वो है ना टीपी ऑलमोस्ट होने आ गया था तभी है ना ब्लाइंड पूरा विजन होता है, तो उसमें शायद दिखा नहीं उसको, शायद ऐसा हुआ, मेरे को तो लगता है। आज भाई आप कौन सी टीम में हो? मैं पावी स्पोर्ट्स में। Starting to get a little bit worrisome for Paper Rex. If you can get 2 more, then I think on their attacker side, that's again where this comp is going to ओके नेवर माइंड, दिखा था तब भी उसने नेड किया। भाई तुम्हारा बर्थडे कब आएगा? आज है। Attack on paper. दिखा था हाँ। But right now in execution. Nice. On the defending side. Why are you the one making dad jokes today? Wasn't even तीन intentional. जने पे। You leaned into the paper quite a bit there. So. My brain was slow and I couldn't think of an alternative, so I just committed to it, unfortunately. कार्पी का एक किल पे अल्ट आ रहा है भाई, ये नहीं डर रहा समथिंग। Okay, a bit of a change up, going for this peak. Knows that they've been really utilizing the sewers to try to maneuver around the map, but this time it's a full collection of T1 right outside of A main. भाई आज डीमन 1 का गेम प्ले देख लिया है भाई मैंने। मैं भाई 2 दिन तक है ना सिर्फ डीमन 1 का नाम लूंगा भाई। मजाक से हटके क्या खेला है भाई वो बंदा। Forsaken expecting pressure on the back of that. A lot of times the Trailblazer is going to be something that's going to lead the way for a potential hit, but T1 just seeing Forsaken thinks, well, he can gate crash out anyway. Why would we want to potentially risk it? You know, we know the Paper X has been setting up for these bait and switches. Let's take a little bit more time here. रीड तो कर रहे हैं क्योंकि कहीं पे साउंड ही नहीं है भाई। Timed hit. See if they can catch Paper X being a little bit impatient, but भाई कितना स्लो खेल रहे भाई T1। लास्ट के 30 सेकंड पे पुश करेंगे क्या ये लोग? pretty decent idea that this is going to be A. I mean, you've had no contact. A 40 सेकंड हो गए। Mid or B. So certainly, but Paper X still looks confused. It looks like they think they might have peeled off and are sitting in sewers or something हाँ बे 30 सेकंड पे देगा, लास्ट के 30 सेकंड पे पुश कर। Okay, that's going to be the go button here for the side of T1. Let's go दवाई। On the entrance, full flash there on a Forsaken. भाई खुद को फ्लैश कर दिया यार। Saya player, snappy. Managed to make a connection there. Let's go दवाई। Can't quite find Saya, but fine for them. Forsaken will. Clean up as well. Dimensional drift back on. क्या रे? क्या तुमको क्या लगा रे? ऑफर था हमारा मिड पे। 7 and 5 wouldn't be a bad half for them considering how. तो अभी उनका IGL ये तो जरूर सोचेगा ना कि भाई 3 जन कैसे ए पे थे, इवन दो हम लोग ने इतना सन्नाटे में खेला, तो उन लोग को समझा रहेगा कि कोई तो पुश किया है मिड या बी। क्या बात है दवाई। अच्छा साया प्लेयर ने ऑप एक्सक्यूरेट को दे दिया था। ब्रदर when they need somebody to stabilize. 4 जने पुश कर रहे हैं अभी PRX के भाई। क्या फ्लैश कर रहा है? क्या YouTube फ्लैश कर रहा भाई? जरा सा भी ब्लाइंड नहीं हुआ वो। I think he actually wants to move forward, but just can't afford to do it. Another kill this early into the round, which is to be और मिड पे 2 जन पुश किए। Really clear on that Trailblazer, but still concerned that it might have spotted out Mindfreak's forward position. He'll be pulling back. Wow, esports is greater than any team ever. है ना होस्ट भाई? Facts. Reading this pretty well. Wow, esports on everyone's top. The pings came down, the smoke Oh came भाई, through, and they're going to use that. 3 जन बी के तरफ। Close and personal. The Jets. Oh, each other without really knowing it. Nice one, Meanwhile, Monier. back over at B. Thank you very much for the picture-in-picture. Like that. The spot there. Oh, Carpe भाई gets क्या taken down. timing! Monia gets traded. Cosmic Divide now going to be invested. Mindfreak still at back site. Izu. भाई rotate कर रहे हैं। I mean, Carpe. Just because Jet ने rotate किया, oh nice. Good call. Something आ गया वापस। This is really good communications here for the side of T1. ये वो लोग वॉल अप करके रैम्स लेंगे क्या? वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑफर आ गया यहाँ पे।
buy you a little bit extra time, but 30 seconds. PaperX relatively aware of this. Devi's already over here. Something बाहर आ गया. अरे यार miss किया shot. Starts spawning at his feet. He wraps Nice. around. The Devi gets himself up and towards heaven. Drops down, spots Rossi for a brief little moment. Straight pushing forward. And still managing to find the headshot. The jiggle out, just trying to get the timing, trying to get that headshot lined up. Speaking of timing, T1 running out of it. 10 seconds. Finding one, a tap onto the plant, something up over the top. He's got the shorty, and he nearly कर दिया throw. कर दिया throw. But Rossi plants his feet, shuts them out. And it's going to be 8-4 at the half with T1 way out in front. Gotta like what you're seeing here from T1. Their ability to adapt to this comp so quickly and so effectively. भाई वो क्रॉसहेयर में आ रहा था रॉसी. क्रॉसहेयर में आ रहा था यार. थोड़ा बेबी काम डाउन कर लेता है यार. And their decisiveness, that's something that very few teams have had success with in the past. देखो ये वाला माउस पैड देखो. ये वाला बोल रहा हूँ मैं. ये वाला. क्या बोलते हो? This PaperX comp is ओ भाई समथिंग का माउस पैड मिल जाता तो going to be on this attacker side. You've got to expect it. You've got some crazy executes dialed up where you've got the jet and the अबे इसका माउस पैड है कि क्या है ये? B site. You भाई पूरा कंबल लेके घूम रहा है. Go to the other. Yoru can TP somewhere who God only knows where he's going to send देखो those वो है things. ना. ये. So it's going to be pretty chaotic here for T1. So they're going to need a lot of that awareness, a lot of that quickness that they displayed at times in that previous half. भाई क्या है वो माउस पैड का नाम क्या है? GSR. I mean, I wouldn't want to face this triple duelist comp in PaperX. It cannot be comfortable. गोटी माउस पैड भाई. He wants a ब्लैक win. वाला उसका अवेलेबल है. मालूम क्या मार्केट में? ब्लैक वाला ही चाहिए मेरे को. क्योंकि मैं इन फ्यूचर अपना टेबल ब्लैक करने वाला हूँ तो ऑल ब्लैक सेटअप भाई. See that dedication as well as a significantly more riled up crowd. They were fired up outside earlier before the event. They were. सुशांत तो दरबी. Yes, सुशांत भाई. You could hear them. They were lined up. Hours. I think 3 hours before I left my house. ए चलो भाई अभी PaperX का अटैक देखते भाई लोग. PaperX with the goatee push. Damn, everybody's already there. कितने का है वो? 3500 का है यार. 3000 का. महंगा है भाई. बहुत ज्यादा महंगा है. इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ बहुत ज्यादा कि लूँ कि नहीं जरूरत मतलब है कि नहीं. देखते. Double up in those figures here as flash over the top. Carpe getting some information, but not quite as tell-all as they would like. Gate crash in the meantime set up just alongside that screen's entry. Nice one. Winning the opening fight. Gets the catch onto Carpe, swoops through, trying to spot the rest of the site. Now they know that it's clear. Spike can be planted. तीन flank आ रहे T1 के. Hold the back line where this double push through sewers getting ready to come through. 3500 ज्यादा होता है इंडिया के लिए. Obviously भाई 3500 बहुत ज्यादा है. 2800 है. 2800 दूसरा वाला है बे. वो जो है SE वाला है ना. GSR SE. वो वाला महंगा है. He's able to take him down. The 4v4. Second, however. एक माउस पैड के लिए 3500 बहुत ही ज्यादा है. ओ भाई चलो जमा पहला राउंड PaperX के खाते में. It's just now Rossi trying to see if he can get anything Rossi done. versus Monyet and go 1v2. Stabilize and find Monyet, but still a lot more work to be dealt. But to be done, ओह he doesn't चापटी. have the time to do चैट so. तुम लोग एक नोटिस किए हो क्या भाई? मतलब T1 टूर्नामेंट्स में ना T1 मैचेस में ना भाई कोई भी है ना स्प्लिट खेलता है तो वो लोग है ना ये प्लांट देते नहीं है सेफ प्लांट. वो लोग ओपन प्लांट ही देते हैं भाई. And just decides to just keep kind of five-manning it slowly. It isn't really anything pacey here. They aren't using the jet utility. आप करंटली कौन सा माउस पैड यूज करते हो? 350 रुपए का माउस पैड यूज करता हूँ मैं और मैं 3500 का लेने की बात कर रहा हूँ. तो लगेगा ही ना भाई. Reinforcements over from T1. You're not exactly sure in that moment. Is it just one player? Is it just two players? You have no idea. That is all 5 of PaperX that are there, and they're going to try it again. They are. Oh, Izu going to be spotted nice and early. Time players right out on ramp, going to be taken down. Nice. भाई इजू ने एक को मारा फिर भी. Everyone's dead in the blink of an eye. ऐसा होना चाहिए भाई इको राउंड. ये होना चाहिए इको राउंड कि भाई समझे ना और खत्म हो जाए भाई. गन्स निकालो भाई. गन्स देखनी है. Roll the replay. Please. चलो अभी बोनस राउंड. I mean, they had the right stack read. I think Mind Freak TP's in here. Oh, they just walk out in front of him. Yeah. There's 3. Okay. Oh भाई Mind Freak ने clean up किया है. That's the other thing with this comp. You got to remember, not only do you have the jet dashes, you have the blast packs, you have last भाई लगातार तीसरा राउंड यहाँ पे ए कर रहे हैं PRX. All over the place. It is going to be so hard potentially to keep track. PaperX वो कॉल दे रही है भाई. ए जब तक हो रहा है करते रहो. फ्लैश कनेक्ट नहीं हुआ उसको. Does take a little bit of spam damage there from Monyet, but overall, could be worse for Ware.
little bit more through the box. Moonbot going forward. It's going to get cleared out, so get rid of the gate crash as well. PaperX, I mean, they're in a forward committed position now. Nice! Oh my god, 4 seconds, you are so... Forsaken! This barrels through them. 3 quick kills into the mask, into the dimensional drift. Looking for the rest of them. स्पाइक लेके घर तक जाएगा अच्छा On for an ace, but I don't know if Rossi and Carpe are going to देखो ओपन प्लान दे रहा है अभी push forward. अरे यार दवाई भाई आपकी दवाई नाइस 1v2 रॉसी भाई ये रॉसी निकालता है यार लेकिन मैंने ऐसा बोल दिया है तो नहीं निकालेगा Just bananas. What Forsaken. बराबर बनानास भाई They just kind of walk and line up for it. They're trying to peek together to try to shut down that push. It's the right idea. It's just the wrong Good gamer of White of Pacific. Yeah, bro. Flopped in. Rossi trying to get in there before it can bloom and just can't. भाई लेकिन है ना भाई मेरे को तो है ना दुनिया ऐसी ही लगती थी भाई 4 सेकंड ओपी है फिर और कौन है अपने में अपने रीजन में और कौन अच्छा डुअलिस्ट है साया प्लेयर ओपी गेमर है और कौन अच्छा डुअलिस्ट कौन है अपने रीजन में समथिंग ही सब कुछ है ऐसा ही लगता था भाई मेरे को लेकिन आज मैंने डीमन 1 को देख लिया भाई आज मैंने डीमन 1 को देखा और मेरा हो गया भाई भाई साहब मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ भाई क्या खेलता है वो यार टेक्सचर एग्जैक्टली टेक्सचर जिंग भाई टेंस को तो अभी भूल जाओ भाई मैंने डीमन 1 को देख लिया भाई नशा हो गया भाई मेरे को आसपास और इस पास भी छोड़ो भाई आसपास भी अच्छा खेला लेकिन आज बहुत ज्यादा अच्छा खेला ये देख और रियलिटी चेक मिलेगा सही में ये मैं ना प्लेऑफ से वॉच पार्टी करूंगा ये का ठीक है as the creep up comes through. There's the first and Carpe. Wow. The headshot managing to find one. X-Grip puts that guard. Oh भाई 1-4-1 3v3 आ गया. सीटी पे रॉसी है. रॉसी ने एक और मारा. 2v3 आ गया. Starting to unravel here for PaperX. Double flash in towards something trying to stop. Nice दवाई. Nice good run. So low. He cleans him up and Divide gets भाई इतना लो कैसे हो गया रे कार पे? उस पे नेट पॉइंट फेंक आ गया. मैंने देखा नहीं. ये तो गंदा मारते हैं. Yeah, I mean, PaperX is anticipating this, and T1 still almost makes it happen just off their gunplay. ये में भाई बकरा गेमर ये है ना सीनेड. One of his calling cards for sure. और कौन अच्छा है? भाई कल डर का क्या खेल रहा था भाई डर का डकार मार के. क्या बोल रहा हूँ मैं? They're getting there. You can never count PaperX out. Slow starts don't mean a darn thing to their mentality. They do it all the damn time. I mean, just look at this. सीनेड कुछ नहीं है ये में. सही में? Consistently, and now they just shipped it up. Go to B. X-Grip, however, looking forward, not taking the bait on that fake out. Now decides to strike. Bro, he played it so well. He played it so well. Why accurate? Brother v brother. For a second, comes out on top, and that tool is Divide hits Izu, intercepting him in mid. तुम लोग सारी फनाटिक की टीम बोल रहे हो सालो दूसरा कुछ बताओ मुझे हाँ सुगेत्सु नाम सुना है मैंने कीको कौन है बे देखूंगा मैं ये देखूंगा मैंने पूछा है परमिशन के लिए अभी मिल गया तो ठीक नहीं मिला तो फिर नहीं कर पाएंगे 1v1 nice nade well played dude well played Monyet will pick up the 3k to close out the round and give PaperX the lead. Great bait and switch there. He knows his brother. Really nice stuff here from PaperX. This time, finally, we're seeing one of those explosive, utilizing those maneuverability plays. Kind of anticipating with this triple duelist. C9 का एक किको नहीं बे. C9 का तो कल मैच देखे हम. उसमें कोई नहीं था वैसा. You need permission to watch party, obviously, right? Nice pull on the showstopper. Yeah, you don't get any kills, but you bought a lot of extra time potentially, and especially with the Viper still in play, you want to buy time for Divide to get into a position where you can potentially use the snake bites and things like that to delay the post plant. So Valorant officials permission देते हैं कि भाई तू watch party करेगा, तू watch party करेगा, तू watch party करेगा. इसलिए तो भाई बड़ी बात लगती है ना भाई. इसलिए तो बड़ी बात लगती है मेरे को कि भाई तुम लोगों की वजह से राइट वाले दे देते ये ले चुम्मी तू कर वॉच पार्टी
भाई इतने टिश्यूज है All of our timeouts used. भाई समथिंग का माउस पैड मिल Either जाए team can make it to double digits. अबे That वो is क्या माउस been पैड all है उसका Paper X, the entire half. दवाई का भाई ये नहीं यार नहीं ऐसा नहीं भाई ऐसे नहीं मैं नहीं जानता भाई मुझे माउस पैड चाहिए अब तुम लोग बोलोगे भाई माउस पैड डजंट मैटर It's hard for you to भाई slow दवाई का some of माउस these पैड hits भाई down क्या है वो ऑफिस वाला है without making contact, without getting into the faces of Paper X and actually trying to out-gunplay them. And few teams Yuki can aim make that mouse happen. pad He's doing something some का really good हाँ ults here क्या for T1 to maybe go for those contact plays and बिना find परमिशन success गेम to place them in the showstopper. स्ट्रीम किए तो फिर स्ट्राइक वाइक आ सकता है Well, the last thrifty attempt was a pretty damn close one here for the side of T1. We'll see if this can have a यूकी similar क्या effect. यूकी The side player will have the knives. Showstopper is there for Izu as well. We're not just going to be popping these, but not looking for the jump. क्या है भाई यूकी नाम का तो कुछ नहीं है Amazon पे Push from T1. Everybody just fanned out across the map, playing this one out very patiently. Man, look how deep this star is. There's a Or jump Xcure. in. Oh my god. The timing of the flash, absolutely gorgeous. Xcure still able to find Manya, but Forsaken takes out Carpe. Something gets the enemy Astra. Side player now swinging around from behind. भाई लर्क देखो उसका Make his way through here, but they are दवाई still का noting this, especially as the jumps and the cloudbursts come down. They know exactly who's there. Chasing Ghost is Saya player. He's expecting somebody to play 3v3 right around this oh he's corner. expecting mid Meantime, रॉसी मिड देख रहा है Getting ready around the corner up towards Mail. Rossi भाई is मिड पे looking क्या हो for रहा it. है It's point blank range. रॉसी पीक करने जा रहा है Stinger मिड can find oh value, he and it does. oh my Izu god he also got able the to flank find guy something. There's the showstopper. Whoa! He could have had them both. Izu, that could end up costing him the round. 'Cause he's not Bye. able to find the headshot there with Crazy Guardian. Forsaken, Rossi, 1v1. however, finds Forsaken. मॉली है इस पे Pushing in, knew that they were both in backside. ओह behind भाई three. क्या राउंड था Gets the ये headshot again. Such a लो बाय था ना small T1 का gap ये here फिर for भी भाई T1. इतना क्लोज आया था ये Izu, if he's able to adjust that showstopper a little Crazy, bit more, भाई, crazy. that would have been the round done and dusted. I mean, just अगर इजू unreal थोड़ा timing ऊपर एम from करता ना भाई Forsaken काम on that 25 हो gate जाता crash to get क्या out of the way of the पेशेंस है भाई इनमें showstopper. He knew it was coming, and he set that up as a bait. I mean, he's just so brilliant on Euro. ओह He's just absolutely one भाई of the क्या best in the world. फनकाया है उसको Oh boy. I love राजर this. दे यार We get to पुलिया listen to the Paper X comms. Forsaken का अल्ट आ गया Especially when you have a brother on the opposite side of हर्ष the भाई stage. कभी उदयपुर में रुको You मीटअप gotta taunt- you श्योर gotta श्योर taunt the older brother, no doubt about it. We've seen the success of the brothers over in EMEA as well. True. And now The they're on boost. opposing sides. It's Forsaken spotting him out. Paint shells coming down. Bro! Out, but a little too aggressive. Rossi ready for that one. Something does manage to find the kill, however. Picking him down now, looking to entry down onto the site. As the flashes come अरे, flying, अरे, अरे, coming अरे. around the box. Eventually, What? this falls actually Manya. कार्पे ने मिस कैसे किया वो At the end of शॉट्स it all. मोनियट पे 2 for 1 as Divide looks to try to get the catch here in mid. शायद वो भी blind था. Izu managing to stay अरे. alive. Oh boy. Whiffy is all भाई help इजू from पे सब something. विफ कर रहे हैं भाई और वो बहुत अच्छे से मार रहा है 2v2 आ गया 2v2. Saya player, however, still holds on to that operator. Mind Freak TP's into garage. Doesn't spot anything. Izu makes his presence known here, up in heaven. Clearing right underneath sight. He's trying to clear out this box, but Yeah. Paint Shell's kind of They were a missing out on little that short. opportunity. Yep. Manya just holding his eye, not looking. Wow. Walks right into the crosshair. Now it's all on Izu. भाई हेवन आ गया भाई माइंड फ्री In heaven. There with the Crazy crossfire. round, crazy So round. far, Paper that X second on half round 11. win continues to elude Sheesh. T1. 7 भाई consecutively आईपीएल देखोगे now. सवाल ही क्या Paper X get themselves up to 11. Well, you expected it to be good, and it certainly has been great. अच्छा on this यूकीएम की attacking वेबसाइट side से for लेना Paper पड़ेगा X. कितने का है No slowing down here. You know, tough भाई position मैं for ड्राइंग Izu, पे trying रख to के guess खेलता where हूँ Manya नो is माउस पैड hiding. ड्राइंग पैड पे He's क्या actually बात just है right भाई by the क्या spike. बात है On the site क्या itself, बात है भाई? not behind that box that he maybe was anticipating. Maybe he had a भाई read, साया प्लेयर भाई ये चला ले थोड़ा previous VODs or अच्छा something, ये but सॉरी that was the साइड box that स्विच हो Manya गया liked to hide behind. मेरा सिस्टम हैंग हो गया This सॉरी time around, समथिंग ने ऑफ निकाल लिया यहाँ पे something going exploring. साया प्लेयर देखो कैसा खेल रहा है उल्टा Anti-flash around that corner now. Starting to work around the edges of the smoke. Rossi catches a glimpse. Get that fight Oh! down, gets the vulnerable. That allows for him to come out on top, taking down Divide. Big crash now, pushing Crazy. towards the Oh! flash, not even deep enough to actually catch him, but Forsaken still pushing through the wall. Oh, भाई Comes बच up with गया। the kill. Side player puts that judge to use, finds अरे। something, execute it, wrapping back around. 4v2 towards आ this गया A वे site, राउंड catches the enemy Yoru and gives T1 कार्पे पे advantage, ult their है। best chance at closing out a round since this half began. Moving out, Mind Freak still getting tagged down to just 11-9. barely HP. 9 It should be inevitability right now. They need from Monyet to try to hold the line. The swing in, he's spotted.
Rotates off, checks in behind. Oh, and nice cannot find time, Carpe. nice T1 time. will break Nice the winning time, streak. Paprix. Themselves back into the Nice driver's seat, time. at least for a round as they hand this over to Carpe for the defuse. $65 मतलब कितना होता Now है? it's just 2 rounds separating. Yeah, and this time around, they're able to anticipate the pressure a lot better. Saya player. Support doing a किसे good कर job रहे हो? holding the top of the Paprix. ramp, not giving anything up there. On the site, Rossi, fantastic work. Doing a lot of पेपरएक्स कितना damage. साथ में जा रही है ना बे? Sneak around उन that लोग का corner ए काफी with that अच्छा वर्क judge, कर रहा but है. good use. Not checking it. बी भी उन्होंने ट्राई किया तो भी बहुत ही अच्छा गया था, बट उन लोग का ए बहुत फेवरेट साइट है, इसलिए साया प्लेयर ने ऑफ निकाली है, तो इट इज इजी फॉर हिम टू रीड कि वो लोग ए ही करेंगे. एंड दे हैव नो इनिशिएटर्स, सो दे आर प्लेइंग टुगेदर. Got a blade storm and a shorty. It's a day that end was Y, so you know something's gonna have a shorty, no doubt about it. रैम्स पे ऑफ लगाया अबे उसने. Is open. Saya Oh my player god. looking Oh my shot. god, he whiffed him. Manages to find it. Wow. Something just not lining them up here. Site still going to be taken by Paper Rex, but they're not aware that this is completely empty otherwise. So still are taking their time trying to move up, worried about that potential deep lurk, back screen, or an elbow. But look where Monyet got. He's way in spawn. But no one's भाई वो rotating स्पॉन में कैसे पहुंचा मोनियट? So he needs to be the one to go and backstab. Could still push up in towards heaven, but actually maybe तीन Rossi's gonna end up Gen-Sewers walking आ रहे right भाई. into him. Do they know that he went back here is the real question. Oh, Mind Freak. Spots one. That's all he's going to be able to get. Izu pushing up, and Rossi What? does Monet find मर it. गया. Seemed like he was very well aware that somebody could have taken that position. भाई 2v4 आ गया He's वापस flushed him out. यार. Shit. Hit invested. और उनका फ्लैंक बहुत ओपी निकला यार. Divine Forsaken to try to hold the line as the gate crash comes in behind, and Forsaken Jeez. is ready for it. Takes out Izu. Oh, important kill था यार. It's great. Dude, Holds it. साया प्लेयर का player. राइट क्लिक They कनेक्ट climb हो गया उसका आर पार. Get rid of the enemy अरे fight यार, एक और मार देता ना 4 सेकंड तो राउंड था मालूम. 11 to 10. T1 keeping it neck and neck. Now T1 is really starting to get a good मंडे को feel. सेंटिनल्स वर्सेस लेविएटर में कौन जीतेगा? सेंटिनल्स. Good read by Rossi. Such लाउड great वर्सेस सेंटिनल्स, communication with लाउड players वर्सेस here from सेंटिनल्स में T1. सेंटिनल जीता. To know that there's a लाउड player वर्सेस back लेविएटर there. में He was लाउड expecting जीता. it the whole way. So by the way, he's peeking that angle. भाई देखो, सेंटिनल्स में कोई नहीं खेलेगा ना, तो भी मेरे को अभी भरोसा हो गया कि वो जॉन क्यूटी खेलेगा, Out of the backside of that क्योंकि वो है ना Viper's प्लेयर है pit. भाई, प्लेयर है. And Forsaken, when he TPs out, it doesn't fool anyone. They're ready for him. This takes us, you know, an extra man to get the job done. So this is just so smart from T1. इवन का आईजीएल कौन है? शायद कार पे, पता नहीं, चैट बताओ. Heaven showstopper going forward, not spotting anything here on the site again. मोस्ट प्रोबेबली कार पे. It is clear. Forsaken in the meantime, dead, lurking outside. पैसा मारा 4 सेकंड को. अच्छा वो लर्क कर रहा था बी पे. Spike planted. Some heals found, but obviously that showstopper gone. Monyet just going to get posted up. There it screens, judge in hand. This would get रीटेक के लिए उनके पास सिर्फ एक्सक्यूरेट का एस्ट्रा अल्ट है. chance Nebula. to steal this away. Nebula. Under their control. Take Paper X's map pick away from them. Boombot for now. Izu, one charge off that Jumping. showstopper. ओ भाई फ्लैश कर रहे स्मोक के अंदर ये लोग. Full flash to the face. Izu now in onto the spike, looking for the fuse. He's held at the half. Mind Freak coming up with 2. Gets off the Oh spike. my Izu God. puts down the fire. Oh my god भाई, what a round. And with the defuse, T1. What a round, 11 to भाई. 11. Oh, just phenomenal stuff now. T1 starting भाई to कुछ win करने ही those नहीं दे रहे वो लोग individual पेपर एक्स battles को. on the flanks of the map. Starting to open up the space, give them the opportunity to set up for the भाई लर्कर्स मर रहे मालूम क्या पेपर एक्स के वहां पे ना लफड़ा हो जा रहा है भाई. तो वो लोग फ्लैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं. You lose him on those edges. That's a lot of your flashes gone. The only thing you have left देखो ना is अभी भी the 3 जन आए paranoia इनमें that से was already 3 जन. invested. और उसने So कितना here, अच्छा all you एक्सपेक्ट have किया is वो the स्मोक smoke में रहेगा. and the phenomenal gunplay and Wow, भाई. maneuverability that Paper X can employ, but पेपर एक्स अभी 5A करेंगे भाई. देखो अभी कोई नहीं खेल रहा भाई. अभी कहीं वहाँ पे यहाँ पे नहीं खेल रहा है. अकेला साया प्लेयर ऑफ लगा के रखा है पे. setting up for this A hit. The mental drift is going to come out फूले right फूले away. भाई फूले. Saya player gonna be spotted. क्योंकि भाई उन लोग Backed off split by खेल रहे तो utility, मर जा रहे हैं. shells invested. Make sure साथ that में they खेलेंगे get तो this निकालेंगे site, वो लोग. plant down. Season once again. Just a fake अरे outside. अरे 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 भाई सब बटन दबा दिया. Life is intact. सीडी बहुत फॉरवर्ड कंट्रोल रखे है, लेकिन यार सीडी का इशू होता ही नहीं है, वो लोग के फ्लैंक का ही इशू होता है. They will be forced back. They have to respect this operator. 3 जन तो हेवन आ गए सीवस से. Try to hold here in I mean, heaven. Cosmic fence. Divide going to be invested. That gonna try to push the Nice forward here. one, Monyet Monyet. finding one, jumps back behind the wall, keeps himself alive and in the fight. Oh, what? The shorty wins it out. Saya player
finding one before getting traded out. Mindfreak comes up with the 4v3 है. Oh no. On the dash, Rossi finds 2v3. Nice 2v2. Nice. He's in the corner. What? Can't stop What? Defy with 3 means absolutely nothing as T1 take the round away. The wall was everything for their win. Just such a beautiful cosmic divide for so What many was reasons that here for T1. One, it cuts off all of Paper Rex, completely denies their vision on how T1 is trying to attempt this retake. And then the follow-up is it gives them enough of a corner on the plant that you cannot spam through it. You have to get like right on top of Carpe to stop it. That's got X-Curate fired up. भाई क्या था ये? Unreal. And now we're here at map point. T1 looking to take this one away from Paper X with a scent on Oh the my horizon. god भाई. Oh my god. Nade out a little bit of damage. Crazy दिमाग भाई. Crazy दिमाग. Look, टैप का भी आवाज आया रहेगा क्या चैट? Looking to get aggressive themselves. Seeker's now going to be let loose, and that is going to. वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया रहेगा कि उतना जगह है वहां पे छुप के डिफ्यूज करने के लिए. Positions. They clear this out. Something in a rough spot. Might have to dash across, but he's not given the opportunity. And Madi X going to be taken down simultaneously. भाई दोनों मर गए. वे डबल पिक किए थे उन्होंने. Okay, थर्ड तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लेकिन एक्सक्यूरेट एक्सपेक्ट कर रहा है भाई. Back through Ramen out to safety is Mindfreak now going to be TPing forward here on to the site. Rossi, the shorty held. GG है. नहीं रुको. 3v5 है सालो. Snakebite coming down. Forsaken now reading that as Mindfreak gets himself up into heaven. Yeah, GG है. The back of the flash trying to peek Actually. in. There's a swing out. Rossi caught with utility and Mindfreak managing to find 2. Suddenly we find ourselves now in a 3v3 as Good Paper X position, trying to take bhai. this into overtime. Good position भाई. 2v1. He's in elbow. He's for it. 4 It's seconds. not done yet. Playoffs. How I love you. OT baby. 12. We're going to overtime. Unreal, full flashed. Oh my Ran god. down भाई the साहब. fadeaway from We Forsaken. talking. And what a map he's had so far. 25, 18, and 5 on the Yoru. Kamchi ne kamchi. Having a whale of a map as well. Sheesh. Odin? What a Going game. to be seeing potentially on the defender भाई side here. Mindfreak so well Side of played Paper भाई. X, we'll see if he keeps it, but full flashed. भाई वो smoke Just में जो knew he had the निकला है ना crosshair 4 second, that was so trusted good. in his own instincts. Kostum, thank you so much for the sponsor. Welcome Gets to the that Pow kill, Gang. and what a setup Love you, there to Kostum. get Bye. Mindfreak up Welcome on back. top. I mean, Get welcome that to the spray Pow out. Gang. Completely befuddles T1, not expecting it Thank at you. all. Okay, no Odin, but there is an operator. Even बीच खेल रही है. और ऑप भाई साया प्लेयर ऑप चला रहा है यार अटैक में यार भाई कौन चलाता है भाई With it so far. कोई चला रहा है भाई T1 तब से now back here on the attack. Trying to see if they can rework some of that magic we were seeing from them in that first half. It's Forsaken inching forward here into the smoke, but it's such a heavy stack. There's a flash out. He manages to transfer on a 2. Gate crash out to safety. And Forsaken may have just stolen this round from right in front of T1's eyes. How does that work? How do you get away with that? Because you're Forsaken. Yeah, only him. Mindfreak now tucked away in backside. Gets himself up onto the box. This is such an aggressive position to take as the smoke dissipates. Forsaken finds a third. Ooh, Carpe with the operator in hand. I've seen him clutch many a time with a sniper in hand, but this one I think might be a bridge too far, but have I spoken too soon? Seeker's now built up Divine, getting himself over here towards the Seekers site. उसको भाई मस्त पोजीशन देंगे बस Everything to do, swings aggressively over top of the snake bite. Vulnerable down to 55. Something on the corner, and Divine in heaven above. हेवन आ गया भाई दवाई It seems Dawai like ah. such an impossible position. Nice. And it is. Carpe will go down, and Paper Rex will क्या get themselves crazy up ना to भाई that point. I mean, this. ओमन फ्लैश था और योरू फ्लैश ने पीक किया भाई भाई तुम सोचो ना ओटी में भाई ओटी में तुम ऐसा कर रहे हो Because he got full flashed as well. Up and in. And they're just Why like, that trying to Omen get flash out of was there. huge as well, Can't huh? do anything. Unbelievable. ओमन फ्लैश भी ह्यूज था भाई वो Wow. भाई Now साहब the Paper X get. ओपी गेम प्ले यहाँ पे पेपर एक्स के तरफ से मेरे को लगा पेपर एक्स एक टाइम पे यहाँ पे हार जाएगी लेकिन T1 को वो लोग ने मार गिराया और यहाँ पे आ चुके हैं हम ओटी में और ओटी का पहला राउंड PRX पे आ चुका है एंड T1 ने वो रियलाइज किया कि पेपर एक्स पे यहाँ पे क्रेजी मोमेंटोनिज्म आ चुका है क्या अभी T1 ये इक्वलाइज कर पाएगी या We are going to the second map with Paper X, the winners of the first. क्या चल रहा है मेजर मचान चल रहा है भाई मजा आ रहा है जो भी चल रहा है समथिंग का माउस पैड 3300 का है
really प्रिंट तो अच्छी है need उस to पे dial यार. up something special here. Make sure you're ready for Paper Rex's aggression. See if you can really shut this down. And looks to me like they're setting up for an A hit. Couple stars down already, expecting some लाइक kind of मारिए pressure. दोस्तों, अगर आपने तो लाइक Trying to मारिए. gravity well at the front stars. 2 for himself on the B site. Seen him double smoke off of that to try to play protection because that is potentially 4 second pressure is QT, gonna be just like me. right outside of garage. Paper Rex. ओ भाई, ये कौन सा पीक होता है? भाई पहली बार 5 जन भी पुश कर रहे हैं फोर्स ये पेपर एक्स के. From something goes up and over. Swiftly delivered to death, but Extrate Spike down B. Dude, will find 2. The lob in, the spray, Mind Freak comes away with it now into 3v3. Why going on a very deep lurk? फटा पूरा फट गया. Interrupting. It's a bit of damage there on Amani yet is Rossi. ओ भाई, रॉसी को स्मेल आ गया अबे उसका दवाई का, क्योंकि दवाई ने लास्ट टाइम भी जब बी एग्जीक्यूट हो रहा था तभी वो लर्क कर रहा था, इसलिए स्मेल किया शायद. And win the map. No utility to speak of. Just a teleport. Right here at the top of the room. नहीं, And now it all falls to the newest member of Paper ट्राई X. किया यार, ट्राई किया माइंड फ्रीक ने, किसी को तो फॉरवर्ड पीक लेना ही था क्योंकि 3v2 था, To finish बैन it, एडवांटेज था उन पे. T1 tying us again and extending this OT. He's pushing out, spotting one. Izu taking a bit of damage. He's looking for more. Blast pack lobs it back. He doesn't भाई ये reset the यार, game. ये ऐसा सैचल डाल देते ना आंख पे भाई, वो बैन करना चाहिए मार्केट में. चाइला दिमाग का नहीं करते. This before with Mon yet with that pillar, but he was playing a very different फोड़ दे, age खुद को फोड़ दे. this time around. ओए Not दिवाली. going to be able to come through with the heroic clutch on split as we saw the previous season. I love the way Xcurate plays भाई this बहुत because अच्छा उन it's लोग the का same एग्जीक्यूट था मालूम. smoke setup समथिंग that he had the last time अपड्राफ्ट they करेगा, connected on बैक that- साइड फेक on that करेगा. side, but he changed लेकिन angles. भाई ये He लोग went to थोड़े the ना back of site, ज्यादा not दिमाग playing वाले on निकले. site instead, and that confused Paper Rex enough. अभी that ऑफ नहीं took a निकाला little साया bit to प्लेयर. displace him. There's the Odin. I was wondering. Well, now that they're on the defender side, he's going to bring this दो one out. सेकंड में Because ओडी they can निकाली. work miracles with this gun. At internationals, you think about him on Pearl, mowing down 3 people. Jeez, yeah. Flash out, the rush forward, Nice! something waiting within the smoke, however, shuts out Psy player very swiftly. Boombot cleared, he wants to re-peek. Oh my god, something! Nuh-uh. He's waking up. What? Golly. Boombot cleared, but चापटी दिया है भाई 5 उंगली in वाला. the hands of Paper X. There. Yeah, they just do such a good job here. I mean, what do you do against that? What do you do against something when he's that fast? That Average very few Mumbai players in the player world after realizing they're gonna handle that lose play. buys Odin. That's साले almost unbeatable. कुछ भी बोलने का मतलब हाँ. 3v5. That just grinds everything to a halt here from T1. ये काफी पीछे से खेल रहे. They got B easy. Mentality. Oh my god. Does get punished. Kill भाई लेकिन found, 3 snake जन bite. B पे Ryan अब 4 stops, सेकंड and he TP भी pushed कर coming लिया साइड पे. upstairs. ओ वो लोग ने सुन लिया क्या उसका TP? That's why they are going A, I guess. Finally, they're going to cut their way back over towards this A side, slowly creeping down the vents, but Monyet does arrive. but Ah, they are smart भाई. T1 is smart. Trying to see what kind of rotations have लेकिन we दोनों drawn out. जगह पे 2-2 है. They work their way back over एटलीस्ट 4 तो नहीं है. towards B. Something tucked away just below heaven. Star coming in. Swing onto the corner. Izu gone. Something unable to find the kill. Does थोड़ा cross VFA हो गया. 75 is Mind Freak now TPing Mind Freak around. को बस time Drops खेलना है inside the अभी. pillar. Execute there. 10 Time seconds dwindling. left. They're going to have to go for this plant. They're going to have to stick for it. Spray. Connecting for No second. time. Finding it. And that's going to be the round 1. They don't have to do anything else. Aside from not die. Well played भाई, well Monyet played. will get one. They're on the back end. अच्छा खेले T1 लेकिन भाई something feel कर रहा था भाई. पूरा something ने round निकाला ही है. Loves to play with smokes to get है ना? aggressive inside of them. उन्होंने भाई अच्छा रीड वीड किया, अच्छा गेम प्ले किया भाई, लेकिन समथिंग बोलता है भाई मैं गोटी हूँ. Just god tier play. क्या शॉट था ये? Again, what do you do against that? And he's ready for the follow-up. And I like the way T1 plays this though in the mid round. I like that they do the Oh, double nice pump one. because for Paper Rex, without the ability to get info easily, they have to kind of gamble on which side they're going to be playing. And you साया can see the player Rays with the shifting their operator. weight towards अरे the A भाई side. साहब. Now, operator again, glass cannon for Saya, up and over is something. And spotted him, knows that he's going to be up there on the rafter. Quite not deep enough to really get Saya. अबे यहाँ तक पहुँच गए वो लोग. Rotates across it, gets some damage. Nice Follow one shot. by Saya Gonna be player. punished after Rossi Good. ends up falling. Izu now catching something. The spike stuck. Side up आ गया in Mind heaven. Freak.
both remaining players here from PaperX down on the side itself. Mindfreak Wow. unable to clear the corner. Bhai. And let's keep it going. What a round by 14-14. Saya player, bhai. T1 Crazy, reset us crazy, again. crazy. And now we're getting to see Huge round, huge that round. Saya भाई वो लोग player रैम्स we क्या know and पुश कर रहे हैं love. भाई The फॉरवर्ड operator so strong in सीटी his से आ hands. रहे थे वो लोग And able to put it to such Insane, great use bhai. there. Able to avoid that initial pressure, find some nice angles. Get some big 31-20 kills to 4 open seconds. this one up. Saw something go up there. Forsaken was up there as well, trying to come down. It's a Crazy really shots. nice piece of work from Zaya player. We're back to even Stevens. Odin once again here for PaperX on this defender side. There was a Satchel launch कर moment रहा है where ये shot T1 पे. heard it fire in the previous affair. Oh, The white he's push कर रहा है. full blind. Oh but my he didn't God. realize that he Oh was my on God, the the ball. white. Ends up getting taken down. Divide with a nice lurk forward. भाई Just imagine like अगर वो Nick वॉकअप Nick करता over दवाई यार grabs क्या the वॉल है यार वो अच्छी. Getting taken out by Rossi over at main. Forsaken, however, the Odin hath arrived. Comes up with 2 quick kills. TPs himself up into heaven. But can't redraw that massive weapon before Saya player gets him in the head. Disgusting. Great awareness from Saya player. Goodness. Now the 2v2. एक सीडी से आ रहा है एक रैम्प से आ रहा है. Freaking screens something approaching from main. They make eye contact for a brief moment, and now side player turns his sights back over and turns away. What? He still Bhai. misses the shot. Oh nice, bye Mindfreak, I love you. Guns them both down. भाई something ने हक दिया था Doesn't यार. know where the hell the spike is planted, but it doesn't matter. He's got all the time in the world. Collect yourself, take a breath. Oh, भाई वो something को देख रहा भी नहीं था. something ने शायद whiff किया उस पे. भाई something का POV देखना है मेरे को. and this looked like it might be problematic until the Odin just again, once again, another one where T1 Oh, Mindfreak baby. so nasty, Mindfreak. देख रहा था वो समथिंग को. अबे नहीं उसने लास्ट मोमेंट पे टर्न किया था. ऐसा कुछ हुआ वहां पे. फ्लैश हुआ था ना साइड पे तो वो टर्न किया था शायद. It looks like a round is about to completely slip away from PaperX, and then they just भाई मचान तो हो रहा भाई क्या खेल रहा है भाई लोग. देखो मजाक से हटके एक बात कह रहा हूँ. अगर तुम लोग में से किसी ने लाइक नहीं किया है ना तो PaperX अभी हार सकती है सही में. तो अभी तुम लोग लाइक करो. समथिंग पू गया. फ्लिक मारा हल्का सा टर्न हुआ था. वही भाई वो POV देखना था यार उसका. ठीक है get those round wins as soon as they shift off back onto that attacker side. भाई टेंस को डुअलिस्ट खेलना चाहिए. नहीं try to give them a solid game plan. T1 के साइड हूँ लाइक नहीं करूंगा सालो. Certainly. परसों बोर्ड्स का एग्जाम है भाई. शैडो तू फेल हो जाएगा अगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दे. a matter of time before the sand in the hourglass runs out for T1. साया प्लेयर वापस ऑफ निकाला है और ये बार वो बी पे ऑफ कर रहा है. एंड PaperX का जो फास्ट ए पुश हमेशा चल रहा है वो 5 मैन वो ही कर रहे हैं वो लोग. Along with Carpe up on A. So a lot of ability to again try to shut down some of these fast hits. The stars are placed. Try to keep things in place and they might try to make a play at ramps. We'll see. They allowed for a side play. I feel this is a GG chat. I feel this is a GG. क्योंकि ए पुश PRX का अच्छा चल रहा है. चूज लिया उसको. No one down on the site there to receive this aggression. मारा प्लांटर मारा. Still anticipating that एक ही नहीं करते भाई प्लांटर को ये लोग. Still going to be coming through, or Forsaken is going to be trying to rotate around, having set up a gate crash. But just now the call comes in for him to rotate. It's these screen holds Triple again. push screens. But he's watching for it, and as the smoke dissipates, more often than not, भाई ये कॉम्प में भी करना चाहिए मालूम. Right now, there's a couple players lined up. Something, however, entering up into heaven finds Rossi, taking down the enemy Viper. A lot of that flush out utility with Snake Bite's now going to be gone. Saya does get his mark. Monyet taken down. Oh my God, this guy! Forsaken. Something का game है. This round, the drop down, GG, crossfire set GG. up, something gone. Now it's GG. all on the Saya player. No And he just doesn't have time. the time. It's not going to happen. GG. Not like this. Down अरे seven, भाई Mindfreak will Mindfreak finish him टैप off. टैप करके मारा है And उसको. PaperX, 16-14 will take the opening map here in OP Wales. PaperX भाई. लेकिन एक कंपटीशन तो देखने मिला A क्या. little bit of space trying to play for कंपटीशन तो retake. देखने मिला. लेकिन मैं तुम लोग को एक है ना अंदर की बात बताऊँ क्या भाई लोग. अंदर की बात Towards heaven. क्या होने वाला है मैं बताता Really हूँ. just shuts things down and PaperX manages to get the triple duelist to go. Who else? मैं तुम लोगों को अंदर की बात बताता हूँ भाई. पहला मैप है ना इतना क्लोज क्यों गया मालूम क्या. क्योंकि वो लोग वार्म अप कर रहे थे. अभी तुम लोग अगला गेम देखोगे इतना बड़ा मार्जिन होने वाला है ना. क्योंकि भाई समथिंग फॉरसकन सब लोग 5 जन है ना. उन लोग के आंग में है ना कुछ तो आने वाला है. पिसाने वाले वो लोग. देखो बस
We're aligned. I'm with that. understanding. But good God, I mean, पिसाने no one वाले हैं, can see देखते this रहो। coming at all. And I've got to say, props to T1. 1 घंटा चला ये मैच, लेट्स गो। लेकिन भाई ऐसे मैचेस अगर रहे ना, ऐसे मैचेस रहे ना भाई, तो 2 घंटा भी चल जाए मेरे को चलेगा भाई। Over the desk though to break down all of the crazy. हेवी गेम भाई, हेवी गेम, हेवी गेम, हेवी गेम। मैं जिंक्स नहीं कर रहा भाई, फैक्ट्स बोल रहा हूँ। Pacific. अच्छा, ये समथिंग का माउस पैड बताओ अभी, नाम बताओ, जल्दी में नाम बताओ जल्दी। W था मैच भाई लोग, तुम लोग को भी मैं माउस पैड बता रहा हूँ, क्या तुम लोग भी ले सकते हो? मतलब कुची काय असतं शेमडे? अबे लेकिन ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा ना। रुक इंडिया, इंडिया का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। छोड़ो भाई, अपने आप नहीं आएगा, मार्केट में नहीं आएगा। मिलाओ क्या जर्मनी से? लाना गार्लिक भाई, लाओ ना प्लीज लाओ ना भाई। आई लव यू भाई, आई लव यू। मैं आपकी बहुत पप्पी लूंगा। मतलब आप भाई प्लीज, मतलब मैं बहुत खुश न गुजार हूंगा भाई आपका। ये क्या माउस है? अबे इनके माउस के जितना तो इनका माउस पैड है। अबे ये क्या है भाई? माउस से महंगा इनका माउस पैड है भाई। ये ऐसा कौन खेलता है? छी भाई, ये क्या माउस है भाई? इसमें हार्ड वारड बनाया है। हट, ये ऐसा माउस कौन लेगा? एसेसरीज में क्या रहता है भाई? लो हटाओ। ये तो मेरे को वैलोरेंट पॉइंट्स, अच्छा मैं देख रहा हूँ क्या ये? भाई इसका माउस पैड देखो, W माउस पैड इन द चैट गाइस, थैंक यू। W माउस पैड, ये देखो ये माउस पैड यार, ये माउस पैड चाहिए लाइफ में। तुम लोगों को मालूम क्या? ये बंदे से मैंने पूछा भाई ये माउस पैड का मतलब क्या फर्क है? मेरा 200 रुपए का माउस पैड है और इसमें क्या फर्क है? तो वो बोला भाई इस पे जो ग्लाइड होता है ना, वो और कहीं पे होता नहीं है। और वो बोला कि ये ना एंटी मॉइस्चराइजिंग कंपनी, मतलब एंटी ह्यूमिडिटी विषय होता है इसका, कि मतलब इस पे मॉइस्चर बैठता नहीं है। तो अपने माउस पे कैसा मॉइस्चर बैठता है ना, अपने को हाथ में भाई स्लीव्स व्यूज पहनना पड़ता है ये सब, तो मतलब इससे वो है ना होता नहीं है भाई। तो मार्केट में मतलब इज्जत है उसका। आई ग पानी हो गया भाई पीसी पे इसके, सब भारी है मॉनिटर। अक्टूबर तक रुकोगे तो बोलो भाई, मैं पूरा साल रुकूंगा, तुम लाओ। चलो हर्ष भाई बाय, खाना खाने जा रहा हूं। अरे शिट, मैं भी भूल गया, मेरे को भी खाना खाना है। नहीं लेकिन यार ये मैच होने देते ना भाई, बहुत अच्छा चल रहा है। टीएम चेक कर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कितना खराब हूँ यार, मैं कितना खराब हूँ भाई, मैं बहुत खराब हूँ। लास्ट टाइम देखा नहीं। अबे लाइट तो लगा फिर देखूंगा ना, तेरा वॉलपेपर देखू क्या? आशीष भाई कुछ काम धंधा कर ले, काम धंधा। मां कसम, बस क्लिप डालेगा और रैंक लिखेगा, कभी ब्रॉन्ज 2 कभी सिल्वर 1, ये देखो। अरे भाई काम धंधा कर ले भाई थोड़ा, है ना? नॉट रेड,
Guess the rank in description. Call सुनो, call सुनो, call सुनो, हाँ call सुनो. Bronze 3. Bronze 3. Bronze 3. Bronze 3. Iron नहीं, bronze. ओ भाई मारा भी अच्छा. ओ भाई something है तो. You will not kill my ally. No charges left. Okay. One enemy remaining. ऐसा कभी नहीं देखा बोलता है. भाई ऐसे दोस्त चाहिए लाइफ में. You will not kill my ally. No charges left. भाई अभी थोड़ा. ओ भाई बहुत अच्छा मार रहा है यार ये. नहीं ये ब्रॉन्ज नहीं है, 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 ब्रॉन्ज नहीं है, ब्रॉन्ज नहीं है. सिल्वर. What the? Rank in description. मैं नहीं मानता भाई. तो स्मर्फ कर रहा है क्या भाई? अपने स्कूल के बंदे लोगों के सामने क्या फ्लेक्स कर रहा है क्या? ऐसा कभी नहीं देखा बोल रहा है भाई. उसका रंग डायमंड है. ए भाई मैं नहीं मानता भाई. ऐसा स्मर्फ करेगा भाई हैं? साला ऐसा. ओ भाई यहाँ क्या हो रहा है? The GENGs and DRXs of the world. And that's the best thing about these. चालू हो रहा है. स्ट्रेच कर रहा है. ए ये अपने सर का देखो वो खोल के रखता है. ऐसा क्यों? DRX perfected and everything. भाई यार कैसा लगता रहेगा ना. सोचो ना तुम लोग ऐसा बैठे हो. हाँ क्या तुम लोग ऐसा बैठे हो? ऐसा बैठे हो हाँ क्या तुम लोग? और तुम्हारे सामने कसम भाई. हाँ ना भाई क्या त्रास होता है ना भाई. What I do like about that is if we're gonna go against a composition where Rossi and Izu will go for the double control, you want your own safety with your own smokes. Cove, I think, is a very good answer as to how to entry onto the site. So at least I'm predicting it. चालू करो भाई. If we do have मैप कौन सा है? मैप एसेंट है ना. ओ भाई ये तो डेंजर मैप है. भाई उसका है ना. वो कौन है? पांड्रा कौन दिख रहा है? वो रॉसी का स्लीपर बिल्ड है. आ गया उसके फिजिक्स से दिख रहा है भाई. ऐसा टी शर्ट खोलेगा ना ऐसे 5 नहीं भाई 10 एब्स दिखेंगे उसके. और उसका बाइसेप इतना बड़ा दिखेगा. फुल डेंजर उसका फिजिक दिख रहा है ना. घुस जा भाई. घुस जा अभी. हाँ घुस जा. अरे नहीं देख ले भाई क्या बोल रही है. घुस जा है. The Leer to kind of follow up for an out of nowhere smoke, and again the safety of your high tide plus the cascade, or not the cascade but the cove. I feel like अरे भाई लोग क्लिप्स से ना ज्यादा देखने का मन नहीं करता रे. ज्यादा देखते ना क्लिप्स तो ना सड़ने लगता है भाई. थोड़ा है ना बेबी काम डाउन करके इसलिए क्लिप्स देखने के लिए मजा आता है. really dig into that, but again it's all hypothetical up until we see the team selection. That's why we have this discussion. I mean, thinking about it, it's really दवाई fun का भी sleeper build है. Imagine how PaperX comes into this game and how T1 might have prepared for it, because they have seen PaperX play Ascent against EG before, and that was a pretty good match. Again, like you mentioned, that Harbor's always very effective. And guess what? We're not gonna have it today. Okay. Single duelist. One thing we've been seeing double initiator, double controller. Is that they're no sentinel. Entire roles. Once again here from PaperX, no sentinel. भाई क्या भी खेलती है वे PaperX? That they might go for an agent like the भाई सोवा नहीं लेते क्या इन लोग में? The what is his name? Gecko because of the Dizzy. Yeah, the cheaper ultimate, six charge ultimate, just because you can keep harassing these players out of the site.
So I guess that's what we're going to be banking on. Oh, this is gonna be a spicy one. We're gonna go into a sentence बराबर in रे। Italy and see what these two teams have to. इसने कमेंटेटर ने बराबर वो ले लाया भाई कि 7 और 6-7 और में नहीं 7 और में मिलता है ना 7 और में उसका अल्टीमेट आता है तो भाई खपची कर देंगे कॉपची कर सकते हो लोग trying out new stuff. It's the best. There is nothing else better than walking into a match. Let's go attacking You never know what you're PaperX gonna get. And this time around, really curious. So one thing I noticed. 1800 वोट्स 800 लाइक्स क्या हो रहा है चैट मेरे को लगा अब तक 3000 लाइक हो गए रहेंगे They're not generally going to be looking for भाई लोग लाइक मारो मम्मी बोली है कि अगर बंदे लोग लाइक नहीं मार रहे ना तो स्ट्रीम मत कर potential counter strat opportunity is the C's nade combo with the fade and the raise because you can really catch some players of T1 in some of these choke points on the outer edges of the sites or on the doors of the sites. Mindfreak going to be the one lurking साया on the प्लेयर Viper मचाते this हुए time मिड around. पुश कर रहा है लेकिन नहीं ए शॉट पे 3 जन पुश कर रहे Given over to T1, they didn't see him. रॉसी भाई They यहाँ didn't hear पे the shots. वाइपर मॉली डालते हुए Swap up here. The Devi is going to be going over पीछे जा रहे हैं अभी Mindfreak playing Viper. साया प्लेयर लो That है is बीमन also फॉरवर्ड interesting. आया That's भाई a ये really good point. There just has to be some form of 3 difference 2 in comfort here as Cam he's spotting out ओ Mindfreak. एक्सपेक्ट कर रहा है एक्सपेक्ट कर रहा है वो देख लिया 5 जन आ गए भाई बी पे अभी कुत्ता आएगा Within B main wants to try to कुत्ता नहीं डाल रहे somebody भाई here ट्राई पिक as the counter swing ready to go. 50 जन का पीक लेकिन साया प्लेयर ने एक को मारा Both going to be taken down. Look at this, already feeding those orbs like Aster I was just talking about, but a good shot from Khelraay! भाई मेरे घर पे B. क्या कर रहा है Suddenly Mindfreak. The 1v2. Spike is in hand. Market door. Oh, you can अबे see 4 Ross सेकंड is प्रॉलर trying वगैरह घर पे to लेके get जाएगा क्या before कि he got खत्म हो गया fully उसका shut. मैंने देखा नहीं इतना Break their way through. उसका खत्म हो गया था क्या Time, or do they feel the need to try to go for भाई time कार here? पे बहुत बिल्ला प्लेयर है ऐसा नल्ले पाव में गिनती मत करो उसका Noticing, we haven't heard a spike get planted, not even a tap on it. Jiggle out, now they know that Mindfreak's going to be out in mid. Ball comes up, he's going to rotate his way over towards A. 4 सेकंड पहले ही मर गया अरे लेकिन डाल के मरना भाई It looks like, especially with the अच्छा वो door बीमन पे ही मर गया था क्या closed there. Now they're going to try to come all the way through short A, so बीमन पे भी डाला नहीं भाई उसको तो ये पड़ा I believe that's been broken, so certainly noise is going to be made here to alert Mindfreak to where they're going to go. Paranoia at the ready. भाई फ्लैश उसके मुंह पे आ रहा है बे Flies across and Rossi. That range classic headshot coming in. रॉसी भाई ने चाप दी T1. once मैं क्लिप again, we'll इसलिए take an भेजता हूँ opening तेरा pistol round. रिएक्शन देखने के लिए Great timing क्लिप्स there पर with रैंक गेस Paranoia. के लिए नहीं Right as they're getting अच्छा through the door. Makes it where Mindfreak has to get the first one, try to hide behind Dice and kind of pray, but they don't even give him the opportunity. Rossi there, good for it. So far, on the pistol round, PaperX not able to find what they're looking for. खेल This लिया is भाई कार just पे absolutely खेल लिया भाई कार पे नशा कर दिया from Carpe. Yeah, those one taps from Carpe अरे are भाई मुंह में डालते भाई ये लोग तो माइक now Saya player with an outlaw. ये ऐसा मतलब बात ही It's a ऐसा stinger purchase along with the Spectre half. अच्छा half वो लोग armors here. नॉइज गेट बहुत One side कम of करते PaperX, रहेंगे they're ना going for the क्राउड की force वजह से This very well could get them off guard, but given that half armor, Saya player going to be in a cozy position with the outlaw. They just situated up here on a heaven. Okay, well now they're well aware of that weapon. As that first shot not going to be connecting. Monyet moving over towards Tree, finding one before Izu is able to trade it back. भाई अमेरिका में कोई आउटलो चलाता नहीं है बे पैसिफिक में ही बहुत चलाते हैं Fishing here. Blind, trying to get a straight connection. Spike planted. Meantime, Spike will get planted for PaperX. ईएमईए में चलाते क्या Still a lot to work with here, though. Yeah. Phantom in hand. 50 जन blind हुए बे Amount of value, but now Izu going to be taken down as they look to push in around the back side. Oh, Window, bhai. side player not connecting with the shots. Drop down. Force किए बे PRX Pushes out. ओ भाई जीत गए वो फोर्स एक फैंटम भी मिलेगी गिव अवे में Last one standing. Finds one. Looks for a little bit Phantom more. मिल गई भाई गिव अवे में Hold his ground. PaperX. Team that we typically did not see go for these force buys. They bring one out, and they are going to be carrying a Spectre and a Phantom forward into round 3. Yeah, it catches a lot of people off guard, including T1. Not fully prepared for it, and you're starting to think, well, okay, they've got that outlaw. They've got that दो gun, वैंडल they एक can फैंटम shut आ गए down, अभी but अभी the इकोनॉमिकल opportunity राउंड is आ गया never there. T1 का 2-1 होने वाला है Already चलो saw an attempt to combo. प्लांट हुआ तो some of the फोर्स raise इज or गुड bait डिसीजन utility at the फैक्टर्स beginning of this फैक्टर्स round in case somebody was on the left-hand side of A main as they came in towards switch. Putty there and Monyet भाई समथिंग का माउस कितना हिलता है भाई मैं नहीं ले रहा वो माउस पैड अब समझा मैं माउस पैड अपना उसका माउस इतना क्यों हिलता है Here you go. There's that C's. That C वो सीज किसके लिए था on the roof. All of this util for an empty side. Obviously just taking every precaution on the way in, but
T1 going for the gamble stack, expecting to find some माँ resistance में over मेंबर towards बन B. गया माँ. Now we're gonna have to try to push their way back into the अरे मर 5v5. जाओ जाके यार जल्दी. अरे यार ये लोग मरेंगे नहीं बे. ये लोग अपना ऑर्ब्स नहीं देंगे उनको. PaperX into a bad fight, but the angle being held if they were to come from spawn like they are. इसलिए मैंने PRX बड़ी स्टिंगर को लगाया है ना, क्योंकि तू बार-बार मरती रहती है और फिर तू इको करती है और फोर्स बाय करती है ना. Got the sheriff. Position reinforced, and it looks like the call is going to be made to just try to gather up, get collected around tree where the door should still be shut, and then sacrifice to the spike. उसका हाई सेंस ही है. Bot goes out. Well, Carpe did swing back to try to see if he could get any kind of party. क्या सेंस है? कोई एक बार गूगल करके बताओ, समथिंग का सेंस ही बताओ जरा. So, 4-man sacrifice. Spike gods are pleased. भाई ऐसे ना 5 जन ऐसा मरते हैं ना भाई, बहुत अजीब दिखता है. आ गया, बहुत बुरा लगता है भाई. Bodies for the spike god. One thing you got to be concerned about, and why समथिंग का अल्ट आ गया. so keen to make sure that it's अभी ये लोग ने ये जो लिया है एजेंट, वो लिया है इसलिए ताकि अल्ट आए. अच्छा, getting both orbs on both sides of the क्या map कर रहा भाई? really snowballing off of agents क्या like कर रहा Gekko, भाई? like Yoru to get ults continuously online. I mean, we saw the एक ही ट्रिप लगाया क्या वो? नहीं, 2 लगाया. drifts in one half Yoru. So भाई those kind of ऑफ things you निकाला है have to भाई be aware समथिंग. of that PaperX will certainly try to take advantage of if they're given the opportunity. Tap on the orb just to see. अबे क्या कर रहा भाई तू? Execute it though. Still yet to set up that trap wire. Considering. अबे उसने दोनों ट्रिप्स उठा लिए क्या अपने? For now. अच्छा, एक ही उठाया उसने. शायद एक फट गया उसका ट्रिप. They're sensing that maybe there's something amiss. They check short. Nobody home. उसका ट्रिप फट गया. Both spotting each other there in mid with that jiggle peek from Rossi. I go. Corner sends out at least a warning shot there towards Carpe, who's now going to be drifting back. भाई समथिंग काफी डाउन टू अर्थ है. उसके पास सारे ऑफ के स्किन्स है, लेकिन उसने डिफॉल्ट लगाया. T1 is giving him a lot of space and a lot of respect because of it. Yeah, you've got the toxic screen as well. अल्ट है, वो लोग पीछे से खेल रहे हैं बी छोड़ के. नहीं बे, फेड पटेल ही मार रहा है भाई. फेड साइड खेल रहा है. I mean, just massive wide swing from Onyet. मर गया साइड वाला. Downside player behind the kill, but Carpe now falling means the side is a little bit more opened अरे up. भाई वो रिकॉन में रॉसी कैसे स्पॉट नहीं हुआ? Still found off the shot, takes him down to 5. Something swaps up with the sheriff. Be able to finish him off. But efficient. Nice one, भाई. Kills. Izu and Saya full Found down. it. Man gets the spike plant. 0.7 सेंस ही है. अच्छा, तभी इतना हिलता है भाई. Cashless, holding onto the Vandal. They'll just have to back away. Thrash just on the hunt again. See if they can spot him out, but मेरा ट्यूशन है, अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाऊंगा. अच्छी बात है ना भाई, मत देख यार, नहीं तो दिमाग में यही चलते रहेगा. चैट, तुमको मालूम मैं आज है ना दोपहर का मैच खत्म करके 9 बजे सोया ना. तो सॉरी, रात का आधी रात वाला जो अमेरिकाज अपन ने देखा ना, अमेरिकाज देख के मैं रात को कितने बजे सोया? कुछ 9 साढ़े 9 बजे सोया मैं. ठीक है, और अभी मैं 12 बजे उठा. और तो मम्मी और भाई बोल रहे हैं कि तू नींद में चिल्ला रहा था. मिड 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 मिड. बैठ जा बैठ जा बैठ जा. मिड मिड मिड. मैं बोला भाई चलो अच्छा है, कुछ और तो नहीं चिल्ला. Wise switch back over to that sheriff to get that confirmation on the kill. Follow up off the paranoia as well. Really nice stuff here from Divai once again. Holding right from the switch. True hello player. I mean, PaperX. See you on the other side. See why they धोखा और परिणाम facts भाई. Really liked what they were seeing. It was the map that did fall away from T1 when they played Zeta earlier. It's close. It's 13-10, but still. चुप बैठ हिमांशु. Showing that there are some weaknesses. वो नाम मत लो यार, वो नाम मत लो. मेरे को बुरा लगा मैं वो नाम ले रहा था तो. Damage onto the feet of PaperX, but for now nothing doing. Nobody giving up right there. Position. Full B push, full B push. man trying to go for that stun. क्या util भाई, क्या util. One is Frosty, just trying to hold things over from Market. Field comes in for taking. भाई माइंडफ्री का वो स्मोक बहुत अच्छा है यार क्रॉसिंग के लिए. That on top. Site now going to be taken once more here from the side of PaperX. When it comes down. हाँ चैट, वो माइंडफ्री का स्मोक देख रहे हो, वो क्रॉसिंग के लिए. तुम्हें ना सिटी का ये करने का जरूरत नहीं है.
position where you can try to die to the He spike just here. bounces it off from B-man. Possible for the side of T1. Extra will fall. देखो यहाँ पे वो smoke Now है. it is all on यहाँ easy पे. to see if he can deal some damage here. First couple shots. Whip thing does get one, but gun has to be reloaded. यहाँ पे वो smoke है, तो तुम लोग है ना B-man से इसमें डायरेक्ट घुस सकते हो और लेन जा सकते हो. तो CT और ये मार्केट वालों का है ना कुछ चिंता ही नहीं है. Trying to accumulate very quick, as well as the ults for Paper Rex. Nightfall right there, one away from a Viper's Pit. Showstopper in hand for Monyet. भाई कल का 3:30 का मैच नहीं मिस करना है. Sen versus Loud. They like to get a little bit aggressive. हो गया ना भाई, Sen versus Loud. Sometimes Saya player Hey. will try to control that space. मेरे को नहीं लगता Loud जीतेगी वो. So seeing if they can maybe push out. कल तो फाइनल्स होगा भाई. 4-1 split all the way over on the other side of the map, and here comes that showstopper towards short. स्मर्फ थी भाई कल की वो जेट. स्मर्फ थी स्मर्फ. अपने चेक किया था ना उसका अकाउंट. Daze comes across, Dizzy out, Execute tucked away, back jet, and to fall. Oh boy, the white sweeps through like a plague upon their houses. Oh, What? come on. Continues. is They just cooking ripped them to भाई. shreds. 3 kills here for Divide. A little bit of spray through. Carpe getting a bit of that damage, but widely there's nothing else भाई that can be खेल done. लिए भाई T1 Paper again, X. heavy investment. That 5-1 हो गया भाई not लोग. cheap. They have to just back away. Well, I guess if you're a T1 fan, the one thing you can hang your hat on is... This is aggressive. Oh, this is nuts from Divide. I was like, yo, give me that ace though. He might just find it. He will! Boy! What a read! What an ult! Divide just arriving and says, no. None of you escape me. Well, never mind. I was going to say something. There were a few things that you could take away for T1 fans about this round, but Divide just wanted that ace so bad. पैसा टीपी And मारा रे. again, it's huge हाँ? because the Hacker economic साले. damage done is enormous. Just absolutely हाँ? enormous. क्या रे? क्या तू बोला था मेरे को? हाँ चेबड़े. हाँ तू बोला ना? This is not good to witness. चाला भड़क गया वो चैट में जो उसको बज रहे थे ना उसके अगेंस्ट कि भाई स्लीपर बिल्ड उसको बता रहा है वो. हाँ साले. Pace being set right now. Yeah, this is when Paper X gets देखो scary. देखो इसका आर्म्स It's देखो when they're भाई. starting to feel it, when the speed is there. मेरे जैसे When आर्म्स है. Divide starts picking up these huge multi-kills, starting to break things Danger, open. हाँ, The warning दे रहा है tripwire वो. was nice that it caught भाई the जीत रहा है Dolphin. तेरा टीम साले. Stop that, आराम that's से great, बात कर. but then the site ये देखो ये कैसा शांत बैठा है रे बेचारा. वो आईजीएल की बात सुन रहा है. आईजीएल उसको बोल रहा है ए हमको ये करने दे. क्या नहीं तो भूत मारूंगा. नहीं तो भाई वो एलेक्स निस्ता भरते रहता है भाई बेचारों को. निस्ता भरता है. ए T1 का ये कौन है जरा कंफर्म करके बता. हाँ घुस जा भाई कैमरा. Cypher. T1 का आईजीएल कौन है A lot बताओ. of utility to bail him out. It's just going to have to be on his gunplay, which is tremendous, but you know it's not comfortable by any stretch. भाई of 1 imagination. ace Divide equals to just 1k sneaks right रुपीस. चल around, ला takes फिर. him out. दे 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 दे. Still with an मैंने एस operator मारा one भाई away अभी. from the Viper's Pit. चल खेलता हूँ. Yet is Mind Freak. You see if they can make a चल, play for आजा. an orb to get that into his hands. This time around, only a Marshall, इस शॉट पे कोई तो रहेगा. मैं पिक करता Sheriff's हूँ. and a Ghost. A lot of work to be done for T1. Thrifty here would feel Looks great. clear. Looks clear. Try to turn this map around, but certainly tough task for any team when Paper X gets rolling to Can you shut smoke it a down. shot? Can you smoke a shot? I mean, they know just because the rounds have been One mid. very Playing brutal B. for them. But Cypher. that operator continues to be carried over. Can constantly be afforded right now. इको है उनका इको है. पीछे से खेलो. So not looking to give any sight lines over to something. Waiting for the Odin from Forsaken. That's what I'm waiting for. I hope that you will be waiting for a very long time. I don't think we will. वाइपर खेल रहा है बी पे. For now, Chill करो. wall orb dropping. Volleys go. Sighting Sec getting ready to come through. Has the K and the C's out onto Carpe. Wrap around the Boy, side. son! Yeah, just trying to gun him क्या loose. momentonism In है. midair, Rossi will be able to find that kill. अरे Oh, रॉसी का second ओ attack. अरे Classic. रॉसी. And Rossi comes up with a 3K. Okay. Still, though, just the stinger in hand. रॉसी का एस. Definitely made them think twice about this one as they go inching forward. रॉसी का एस है. मेरा एस He can ace himself. He's looking for it. एस यार. Will deny it. B. But he's at 29 health. That Marshall, wall bang, anything will do it. Oh my God! Pushes Something. around the backside of the box. Saya not ready for the swing. Thought he was भाई sticking it. यार क्या निकाला था भाई Rossi रॉसी ने. doing his damnedest to try to give them the round win, to try to get the 1000 thrifty. रुपए गया मेरा. Something says no. Oh, heartbreak for T1. This is so well और ये played क्या here. मोमेंटोनिज्म थे देखो Executed by मोनियट के. Paper X.
they get the tethers to connect का onto two clean different भाई players, and Monyet कुछ is भी like, मारा "Oh, रॉसी कुछ भी oh मारा yes, this should be easy for me to clean up." But Rossi's so good with that stinger. Rossi was saying his mom is staying up to watch the match tonight, so Sheesh. gave her a little bit of a show there for sure. ओ भाई समथिंग की मम्मी आई है मैच देखने के लिए लेट्स गो भाई क्या प्राउड फील हो रहा रहेगा You know, very close in the thrifty attempts here from T1. Now with the buy coming back through, Trap Wire's just intercepting नहीं these टूट रहा prowlers, भाई information not really ट्रैप being वायर नहीं guarded टूट रहा इनसे from Paper X. And I mean, this is the most Paper X thing ever. It looks like they want to push into Rossi, the guy who just nearly aced them. भाई एस Well, का he's got a स्पेलिंग Viper spin ACE होता है हगरे 1000 रुपए देने वाले You know where the Cypher setup is. You don't feel comfortable trying to push through it, so why not utilize or just run into it with shorties and try to clear अमन that भाई way, क्या हो रहा है यार but तुमको very, very far back are Rossi and Carpe, but again with this thrash there. I called it भाई फास्ट गेम होने वाला है मैंने बोला अटैकिंग में PRX इतना मार रही है भाई Going to be making his way through. Let's see if that's what they want to do, if they're just going to maybe use Wingman Dizzy or something like that. But look at all this utility. The Nightfall. Boombot one way. He saw him. As, Monyet getting detained. Oh no. Stuck into the corner. अरे something पैसा खाया साले Still up, Spike on the floor. Monyet starting to अरे push. Shuts him down. Spike does get grabbed. The Dizzy coming through. As the neural theft infested, they know where they're at. They know where they're rotating to. And for Paper X, I don't know how you dig yourself out of this one. आपके स्ट्रीम से स्ट्रेस दूर होता है अरे केस भाई थैंक यू यार वही ट्राई भाई थैंक यू फॉर द 40 लव यू भाई अरे भाई दोनों हक दिए अरे भाई एक्यूरेट मार दी 6-2 हो गया थैंक यू सो मच केस भाई फॉर द 40 रुपीस I love you guys. आप लोगों की वजह से मेरा स्ट्रेस भी दूर होता है. What happened with the friendly fire with the thrash? कौस्तुभ, thank you so much for the 40 रुपए. Love you भाई. दिल्ली कब आओगे? दिल्ली तू जब बुलाएगा कौस्तुभ भाई. मेरे को तो दिल्ली आना है भाई. ऐसी अगर कोई जगह है जहाँ पे मुझे जाना है तो वो दिल्ली है. You can see Carpe right there, kind of having to play in and out of the backside of it. 10 seconds. If Monyet was able to भाई खेल लिया यार एक्सक्यूरेट. That could have been a very different round, but just a little bit of Thank you for the 40 कौस्तुभ. miscalculation there. हाँ मुनेट मार देता बे राउंड था मालूम लेकिन समथिंग के वजह से हारे राउंड पैसा खाया साला using that Boombot, using that Gecko utility to clear that Viper's pit, it just didn't quite go the way they wanted, and credit to T1. कौस्तुभ भाई का फर्स्ट सुपर चैट है हैप्पी बर्थडे लिखिए उनको Some space on the site, hoping to Fast maybe get a push. trap wire in there as well. And or not looking to slow. Why he was blind? He got two. He got it, managing to spray down two. Molly just managed Oh to my hold it back. God, Now bhai. holds the door. Divide and Mind Freak both eliminated. And it's just Something अकेला बचा है. something completely and utterly trapped here at Wine. No more util. No nothing, just a Vandal. 3 people to try to get through in this side alone. So we'll just back away. क्या भी मार रहे हैं ये लोग क्या भी मार रहे भाई अभी क्या भी मार रहे भाई ऐसा नहीं मारना रहता है hold on to this weapon. Still doesn't have a good amount of cash. पुश कर रहा है The spike. Execute does come out hunting. Now he's going to turn his sights back over towards him. That Jiggle Peak not revealing enough. The Haunt certainly helping. डबल पिक And he can't find him. Execute with 3. जमा करीस भाई एक्यूरेट कुकिंग भाई लास्ट राउंड में 2 किल ये राउंड में 3 किल just phenomenal hold. जमा here इसका from खाता Rossi पीसता and Execute. Looked like it was maybe going to be another Paper X just sight take, but क्या बोली है दीदी hold fast. डार्क स्किन टोन किसको बोल रही है Try to break through the front of the site. The Dizzy even connected onto Rossi. ऐसा मारा भाई रॉसी 10 HP. ऐसा मारा Gets that done. फाइन Catches the teleport. फाइन फ्लिक भाई डायरेक्ट टीपी किया उसको लगा कि भाई एक ही साइड पे रहेगा लेकिन साइफुर द गेमिंग एक्यूरेट वाज आल्सो साइट अरे भाई 4 सेकंड बीमार दिख रहा है भाई उठ जा क्या हुआ तेरे को 4 सेकंड यहाँ पे बीमार दिख रहा है भाई All things considered for Paper X, I mean you gotta like इसका माउस पैड finding साले का 6 on your attacker side initially. Sure. उड़े करे आहा कैमरा मैन Paper X, and they prefer to do अबे ये the अरे majority भाई ये of सिर्फ damage मुंह on the हिलाता है attacker side in most maps. भाई इनका खुद सिर्फ मुंह हिलाता है देखा तुम लोग ने Want that 6 and 6. भाई साहब T1 के इसने कोच ने सिर्फ मुंह हिलाया भाई ऐसे ही उनको समझ के आ रहेगा भाई We're seeing the things being put on display from both teams. I'm impartial. I don't care who wins. I just want it to go to 3. Yeah, please. Because both teams have looked strong when it comes down to Sunset. Secret Seeing that language face off, हाँ
with the ऑफ निकाली साया प्लेयर ने as well going over to chamber. साया प्लेयर की ऑफ That बोले sounds तो like something खत्म that we भाई don't wanna काम miss. 25 Yeah, certainly T1 has to be wanting चलो भाई revenge on that map पढ़ने जा रहा from when हूँ they faced बाय off बाय against बाय them लव at यू the टू ABL. कस्तूर So, certainly I would like to see Sunset, no doubt about it. Mind Freak now finally maybe gonna have the कोटा opportunity. दिनेश थैंक यू फॉर द Vipers 20 रुपए hit लव यू Saya. It's going to get noted there. Has to just dash to exit. Start finding. Come on, yeah. He's है right क्या out हो रहा है there. भाई इधर As soon as Rossi tries to go नाच for रहा है the swing, garden it's में far too mid पे। late. Forsaken ओ is far भाई। too quick on the reply. What? Something going to get tagged up there to ओ the माय wall. गॉड भाई एक एक करके मर गए सब Killing everyone. Saya player turning his sights back over towards B main will be able to get the pick off there on a mind freak. No, भाई इसको मारो यार एक्यूरेट को नाइस ब्लाइंड थैंक यू Back away as the paranoia comes in from Divide. It's going to be revealed. Looking for a little bit more as they try to flush him out. He's भाई dead. एक्यूरेट He's ब्रो gotta push the smoke, but भाई something उसने will राउंड be निकाल के दे दिया है 1v2 Time है player ये now, last man standing. समथिंग 1 HP 44. है The knives out. He sends him. The updraft, the wingman going for the plan as they just lurk within the smoke. Something that Saya can do to try to interrupt it. Does he just go for a fishing shot? The swing out there. Wow, what a shot by something, dude! Cracked. I just threw my hands up a little bit there because something is just outrageous sometimes with how fast he is. I mean, Saya's expecting potentially someone to come out from the smoke, and he still gets bested. Whoa! या मैं जनता जू गया Yeah, dude. दुर्वेश थैंक यू नहीं तो दे मम्मी Shots. दे भाई 3 बज गया ना तो फिर है ना Gotta पेट दर्द play देता that है accuracy. That is what got him onto this team. दुर्वेश थैंक यू फॉर द 40 रुपए फर्स्ट टाइम डूइंग सुपर चैट फॉर यू ओनली हैप्पी बर्थडे दुर्वेश लाइव आई लव यू थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीस हैप्पी बर्थडे हो जाए दुर्वेश भाई के लिए Wants going forward, cleared on both sides. Saya player on a hard line here. In B main has the backup. It's pinged. Carpe. They spec. Creeping forward, wants to go for the Prowler. Checks right, they know that he's there. And now they're going to try to spam him Shot. out. Mind Freak put in an absolutely unwinnable position. Chalo, Larkar Meantime, dead that hai. Nightfall going to be sent over towards A, but it's not going to connect onto anyone. Just falls shy of Xshirt's position there on Heaven. He now drops down. Rossi taking a hell of a lot of damage, taking a paranoia, but he's just staying quiet. अरे blind हो गया यार Can't see a damn thing. His eyes have been taken अरे from him, रे and now his life as well. भाई Something will finally find the enemy. Viper Manya gets Xshirant. As the Thrash goes chasing, spotting them here out in mid. पकड़ा Contain onto one. Carpe locked in position. Heaven पे ऑपरेटर cover. और ए शॉट पे 2 जन So much 1-8 पे space अल्ट भी है behind इन लोग को Big सेव Bot करना here, चाहिए the मेरे को लग Thrash, रहा है the Mosh. So difficult on this retake. Door cleared. ट्राई कर रहे बे The reveal. Oh Saya भाई now क्या gets रिवील भाई stomped through floor. Going on the corner, Divide unable to take out Izu. But time dwindling. सेव करो जाओ नहीं होएगा जाओ ऑफ सेव करो चलो Consolation prize. They can try to drag that all ऑफ लो down. ऑफ सेव करो अरे But they know ऑफ that नहीं they सेव have कर to रहे भाई back away. गन सेव कर रहे सिर्फ They're not going to be able to ओ देख रहे breach the हो confines of that हैंगरी A नहीं हो रहे वो site. लोग Carpe out hit though, take it down. कार पे हगा से ओपन क्यों जा रहा है Jordy in. नहीं बे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया मालूम क्या कार पे ने और ये भाई शॉर्टी से ही मारा है कार पे ने एक्सपेक्ट नहीं किया इतना जल्दी आएंगे वो लोग I mean, they're just so well coordinated when they death ball around the map. I mean, there was one चाउस हो kind गया of भाई oopsie when the Viper's pit was up earlier, but other than that, भाई अगर वो so रॉसी well जिंदा played रहता there ना by भाई लोग Forsaken to get that haunt. रॉसी अगर जिंदा रहता ना अगर वो ब्लाइंड में फ्लैश सॉरी वो गेको फ्लैश में ब्लाइंड नहीं होता ना तो वो मार देता मतलब निकाल लेता राउंड कोई बात नहीं भाई एंटी वन एट माय अल्ट And maybe the Viper's pit will be used someday. A lot of utility being thrown. Oh, they're trying to catch somebody holding that angle. Spam through the wall. Man cleared. Saya Alt आ गया भाई judge. Showstopper. Sent कोई out. नहीं Not मरा going to be found. But Saya player now dashing forward. Still somehow comes away with two. ऐसा कौन खेलता है Tries to keep them in this one and actually does give वो them the man पीछे क्यों मारा advantage. भाई Spike still held here. Safely in the hands of something for now. Smoke dissipates and Izu ready for it. Takes out Mike. एक्सक्लेमेशन डिस्कॉर्ड वाला लिंक चलता है दोस्तों वो वाले Yeah, लिंक से so ज्वाइन करो Paper X's utility able to be dodged by T1. They're set up in places where it doesn't really connect. Something looking for Izu, but समथिंग भाई बार-बार आप बच रहे हो यार अकेले कुछ करके दिखा दो अभी ए यार क्या क्रॉस फायर्स लगाए इन लोगों ने Position to be in. Xgrit on the swing. Now he's pretty much identified everybody. उसको पता है तीनों इधर है Running the assessment here in his head. Is this winnable? Send process. 30 सेकंड्स है I think for वो लोग रोटेट नहीं this कर रहे player, भाई
absolutely. Okay, अभी एक्सक्यूरेट छोड़ा है लेकिन ये लोग का डबल पीक अच्छा है. Xcurate does get dragged off the angle, but yeah, they have the high-low here on Switch. It will be an 8-4. भाई ये हाई लो वाले एंगल्स अच्छे रहते हैं. डबल पीक अच्छे आ गया. पंपी में करना पड़ेगा. तभी जाके शायद मैं रेडिएंट पहुंच पाऊंगा. Yeah, it's a really good setup in that last round for T1. I mean, Saya. तुम लोग को मालूम भाई, इंडिया में ना मैंने 2 जन देखे एटलीस्ट एक दिन में. 2 जन वो लोग अपना अकाउंट इमॉर्टल पे लेके जाते कैसे तो, और फिर इमॉर्टल के बाद है ना, इमॉर्टल 1 के बाद वो लोग 5 स्टैक करते हैं सिल्वर्स और गोल्ड के साथ. उन लोग को मैच फटफट मिलता है. वो लोग टॉप फ्रैग करते हैं. 1000 वैलोरेंट ट्रैकर पे उन लोग का रेटिंग होता है. 1000 30-40 किल्स मार के प्लस होते 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 वो लोग वैसे ही 5 स्टैक सिल्वर्स के साथ कर करके सिल्वर्स को मार के वो लोग रेडिएंट पहुंचते हैं. क्या मिलता है भाई उनको, क्या मिलता है भाई ये करके. It is a barren wasteland as Wisconsin. Same can be said for New Jersey. Anyway, let's go into the second half. रेडिएंट मिलता है ऐसा रेडिएंट चाहिए. ये भी वही एग्जांपल हो गया भाई. डॉक्टर की एग्जाम में ये किया, चीटिंग किया और ऑपरेशन के टाइम पे खलास कर दिया किसी को. They're going to play this with something in ये middle. थोड़ा डेंजर एग्जांपल हो गया. सॉरी. That's like the Paper X sort of MO that he's just going to, even not on a duelist, kind of be in charge of that area of the map. Often, you know, you expect him to be on that jet with an operator or something like that, like we saw last year, containing that space. Early on, just with a ghost, of course, it's just the pistol, but something to kind of keep your eyes on. नहीं आते अमन भाई, नहीं आते सामने, अच्छे नहीं आते. The positioning of something, the way that he's. मैंने देखा है भाई, वैलोरेंट ट्रैकर है ना, एक बंदे का ऐसा मैंने करके देखा है पूरा. On yet, Mind Freak thinking about trying, but they're getting backed off. Yeah, I mean, their attention right now being so very split. Divine looking to just try to. अरे भाई दवाई को जमा कर दिया भाई. भाई T1 अटैक अभी अच्छा कर रही है क्या? भाई साहब 4 सेकंड ने एक मारा लेकिन मर गए. Suddenly it's just Mind Freak and now he's gone. Xcurate cleaning them up. T1 maintaining a lead in pistol rounds now 3-1 in that regard. Yeah, I mean they've. अंग्रोजा, thank you for the 40 रुपए. हेलो ब्रो, क्या हाल है? एकदम मस्त हाल है भाई. The stingers in a Thank you for the 40 रुपए. Not feeling like. आपकी क्या हाल है अंग्रोजा भाई? आपने क्या खाना खाया आज? आप आज क्या कर रहे हो? आज आपने जेवन किया? Use that against your opponent here because T1 is likely to be a little bit more cautious than maybe normal. Chat Ascent attacking map है ना? It's got to be in the back of your mind that last time there was. Ascent attacking map है ना? So let's work the map a little bit. चलो बाय राउंड है T1 का. ये भी राउंड T1 के खाते में आएगा. 5 जन ए पे गिर रहे PRX से. Off angles that maybe T1 isn't expecting. What in the world? What in the world? He wins it with a classic. What? Okay. Opening kill. Found there from Monyet. Down to 1 HP, mind you. Weapon not recovered. Double smoke देखा क्या? Being watched by somebody else on T1. They don't push forward, so that is not going to be in their hands as they look to go for this retake. But somehow, some way, Paper X do have a man भाई क्या डिफेंडर्स वॉल है? अच्छा उन लोग को बताने के लिए कि भाई बैक साइड कोई पे रह सकता है. टाइम बाय किया वो वॉल ने, देखा? प्लांट नहीं दिया उसने स्ट्रेट अप. अब भी प्लांट दे रहा है वो. भाई का ट्रिक. You never know. It's Paper X, man. Cleared. Carpe trying to fish for something there with the Guardian. As Wingman goes rushing forward. That's going to be the mark coming through. Okay, needing to expire. Push under the core. Something just wide swinging around. Saya player finds the kill. नहीं, अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा. Still unlikely to go there. 1v1? By 1 HP Xcurate. No way he clutches this. Full health. Push in and gets him. How do they do this? को राउंड निकाला PRX ने. Jinx किया मैंने. Let's go! They have no firepower coming into the round. I am the strongest Jinxer of this entire universe. It's just almost unfair. Thrifty doesn't do that justice. We need to invent a new term. Check my clip after this match. Okay, baby. Thank you for another 40 Dhruv. That's what I want to know. He's out in the open with an orb. It's unreal. Dhruvesh, bhai, sorry. And I mean, there's a ton of information given over to T1 too. The cam was checked in B main, so that had to be cleared. They know where they're coming from. They just
find ways to get there because they're not afraid. Damn, I mean, Paper चलो Rex, अब T1 का वो by 4 second ने ओडी निकाली. Look what you can do with this thing. It might just be This classic built different. Here. You too can go for Androza, outrageous thank you for another aggressive 40. grabs that should never work and get a kill. Bro, do you watch anime? Yes, I do watch anime, bro. Which is your favorite anime? I would really like to know. Hey, bhai, क्या हुआ इधर? A little bit too unpredictable there with the movement as Monyet now going to be a little bit of a rough spot. He'll be able to dome him with that Sheriff. The swing out. अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई? Two targets ends up falling, but now the Odin has arrived here in heaven. Caught with util in hand. 1v1. इसको गन नहीं मिला है क्या? Mind Freak makes his presence aware before the neural depth can go off. Plan coming in. Sheriff in hand. Mind Freak again. Versus Excurate. आवाज क्या आ रही है? दो डबल. Just dancing around. Tries to flush him out of the open. Snake bite coming. भाई डबल आवाज क्यों आ रही है? Effort from Excurate, but he. Bro, do you watch anime? Mind Freak can get the defuse, can recover the Odin, and Paper X can get up to. It almost works. I love the tempo change here from T1. The हाँ fast यहाँ short audio hit, lag है, audio lag get है. Saya in deep, cause confusion. A great snake bite for Day Main. किसी का तो POV उन लोगों ने चालू किया. भाई something का system hang हो गया था. I told you the Odin was coming. It wasn't. Odin उठाई क्या? He did something a little goofy there where he thought he had time standing out in the open to go for the Odin prowler. उठाई क्या? You know what? Whatever. It's Forsaken. क्या उसके पास पैसा था? It's his brother. He has to know that maybe his brother's Okay, more उसने likely to Odin back उठाई. off there or something, and that he might be able to get away with it. T1 now. Mountain is getting taller and taller that they need to climb. And you can see Paper X, they still really want to push the tempo here. Paranoia just completely shoves Excurate away from this B lobby. The rest of Paper X can now anticipate that this hit is going to happen here on the A side. Monyet very far forward, judge in hand, the Paranoia getting ready to crash in, and it does. Oh Prowler my. does not check right. He inches up, sees one, at range, the vulnerable, helping to take him down. It's going to be Mind Freak and Forsaken collecting the kills. Mind Freak now with 3 in the round. भाई एक नहीं मारा भाई Monyet ने. Excurate with everything to do. Paper X saw that wall on split that Excurate used. I said, we too have cheeky walls that you don't quite expect. Cheeky walls दिखा दूँ क्या मैं? Players in. Both prowlers completely missing. Monyet there. Feed the spike. He's able to do a lot of extra damage, cause some extra confusion to T1. Yeah, he doesn't get any kills, doesn't matter. It made it so unassailable. T1 and Excurate has to try to save. The only one with any cash to speak of, really, for T1. They're going to try to get rid of it. Devi's going to be good for it. Yeah, no problem. Bro, my favorite anime. 11 now here, Paper X. And what? अरे अंग्रोजा भाई, thank you for the 40 rupees. Dominant showing here. Bro, my favorite anime is Chainsaw Man, and yours? Multiple overtimes coming तुमको through. Chainsaw Man ही पसंद है भाई मेरे को भी. We were expecting this to, you know, maybe continue being Chainsaw Man में आपका favorite character कौन सा है भाई? मुझे जानना है जरूर. Right now, this is very much just out of their hands. Good defense. Thank you so much for the 40 It is Angroza good भाई. defense. You're right. One thing I find really intriguing to watch, the way that people just completely disrespect snake bites these days. Like they just walk right through them, vulnerable be damned. Just send it in, but I mean, Both are crying somewhere. We're all the fight for भाई वो देखो ना वो बस मुंह हिला रहा है भाई. वो देख. I mean, देख. at least there was a Yoru played earlier today for Lothar. True. We got that going. True. देख क्या कर रहा है ये? Co-streaming the next match, right? भाई तभी सोचो T1 इतनी डेंजर कैसे खेल रही है. मैं क्या बोला चैट तुम लोग को? Could very well be, but I mean everything मैं right क्या now. बोला? पहला मैच थोड़ा टफ जाएगा, लेकिन दूसरा मैच एकदम वन साइड डोमिनेशन इक्वली ओपड़ी चौपड़ी. On your attacking side. जीत गए भाई पेपर एक्स. Yeah. Not a good लाइक मारिए लाइक. It's not easy. भाई ने बोला इसलिए जीती है तो इसी बात पे लाइक. Against this Paper X team. Now you've got a Nightfall to back up this Odin. Make matters worse, you know, Forsaken has an extra piece of utility. अंग्रोजा भाई ने 40 रुपए दिया और लिखा है my all time favorite is माकीमा. माकीमा फेवरेट है आपका? नहीं भाई मेरा मतलब माकीमा अच्छा है. यार लेकिन नहीं मतलब क्यों मतलब आपको क्यों पसंद आया वो वैसा? क्या सीन? Paper X the ability to again cover these orbs, feed them into. Thank you for the 40 रुपए. Okay, he's okay. It's fine this time. Stays alive. Something though.
Has not spotted Saya player. He's gotten here towards stairs and mid. Orange Shafty! I think his presence very much known. Quick headshot, something gets taken down. Spam damage coming out though. Working down to 56. Dash expiring. The rest of the team getting corralled up here in A main. दिखती तो अच्छी है माँ की माँ कुछ भी बोलो. One kill, Monyet gets his showstopper. So if he gets one in here, this hit could turn really sideways really fast for T1. Call coming in as that C's connects in towards Wine. Rotations now लेकिन ये अंग्रोजा भाई. Mindfreak gonna be the only one who's really lingering back. Side player gonna be spotted by the blue bot over in tree. Prowler's chasing forward into the smoke. As the body tries to hold backside. Quick headshot comes in. Easy gonna be taken down. भाई साहब क्या गिर रहे भाई ऊपर से. खत्म. भाई क्या मार रहा है ये? And I need to see a replay of it. Because good God, I think Forsaken just outlock you with an Odin here. Yeah. That C's lineup was from forever away from Forsaken, and this is something that makes Paper Rex really special, is that players like Forsaken and the others spend a lot of time just screwing around in maps. And when I say that, I mean they go in there and they see what they can get away with the how far can you launch stuff. भाई ये ले जो तूने गांजा दिया था उसका बाकी पेमेंट गुड डीलर 10 on 10 recommended. Paper Rex is this fast, explosive team, but they spend a lot of time learning tech, practicing abilities, ऊपर के 200 and how ग्राम they का can कौन देगा? interact with the map and with themselves. So stuff like that. एडवांस भी दिया नहीं भाई तूने तो. Incredible the way that they. Thank you for the 200 बाकी by the way. Using his Viper's Pit, a little bit different. Uday, thank you so much for the 40 rupees. बाकी all the way best anime with Demon Slayer. भाई facts बोला है उदय ने. Demon Slayer मेरा भी favorite anime है भाई. Trapwire just in case. Like उदय भाई मेरे को है ना Zenitsu बहुत पसंद है यार. तुम्हारा कौन सा favorite character है? As of right now, Paper X Demon having Slayer. to absorb a little bit of the. Angroza, thank you for the 40 रुपए because her match. Weaponry is. अंग्रोजा भाई ने 40 रुपए दिया और बोला है because her face match with my crush. Not that I remember. It's always a rifle. क्या बात है यार अंग्रोजा भाई, thank you for the 40 rupees. तो मतलब अंग्रोजा भाई आपकी crush का मतलब नाम क्या था? Also has the knife to back it up. तेरे को जानना है. Spray coming down. Market something again. Thank you so much यार हृदय भाई for the 200 रुपए. Love you. That snake bite trying to creep up in towards the smoke. Prowler just spot him. जी जाओ खत्म GG to PRX guys. GG to PRX. Might have massive opportunity to upgrade his weapon if he does, but he's not going to go for it. Princess Sight's back. They know that they still need to break this open. They know that there's still going to be players from Paper X situated here on A. Showstopper, however, coming through. Oh my God! Towards heaven. He's not going to be able to find the kill. And Kieran strikes. Saya player. Not a GG I guess. Managing to find a buy. Time dwindling. 2 players. अरे रे ये थ्रो कर दिए. Will take him down. Mindfreak will hightail it. Baki all the way The the series best is not enemy over with yet. Demon Slayer. Well, this is a really nice round. T1. Potentially too little, too late. We'll see, but. भाई अबे यार दिनेश भाई बोल रहे यार One Piece the best. यार देखो दिनेश भाई यार. Because her face We've been matched seeing with my something crush. played. देखो One Piece अच्छा है. देखो One Piece अच्छा है. ऐसा नहीं है कि बुरा है. Side of him over in mid. यार ठीक है मेरे को डिबेट नहीं करना यार. अच्छा दिनेश भाई आप बताओ कि Let's see if they remember to plug आपने that और hole. कौन सा एनीमे देखा है? They didn't. That really breaks the round open. Thank you Dinesh bhai for the 40 rupees. Just not able to find that showstopper angle either. I think if he kind of could have that one back, he might turn his attention. Uday, thank you for the 40 rupees. Tengen Uzui all the way. Towards heaven, but भाई तुम danger हो, तुम danger हो. That jet's coming in. The भाई लेकिन उदय भाई, thank you for the 40 rupees. मैंने अभी कुछ तो देखा कि मूवी वगैरह आ रहा है Demon Slayer का, वो क्या सीन है जरा एक्सप्लेन करो ना. मतलब थोड़ा बड़े में एक्सप्लेन कर दो, मैं पढ़ लूंगा आराम से. Thank you for the 40 रुपए. अंग्रोजा भाई ने 40 रुपए दिया, लिखा है My crush name is श्रुति. अच्छा नाम है यार श्रुति तो. मतलब कब से मतलब कब से चल रहा है ऐसा? But now they need to do that 6 more times to give us overtime again. Easy, no problem. Open up the box, Monyet spotting. Hit. Oh, puts him low and something gets the headshot and range. One Just piece go ahead and finish the job. Paranoia as well, expended by Izu. हाँ वो थार का डाउन पेमेंट हो गया. Plays that they set up that are so well coordinated. Done. So well Thank executed. you. Yeah. Their aim so good. Monyet gets the first. all the Something's way. right there to back him up with the sheriff. Try to spam it down. Even though that, Waiting. oh, Yeah, I'm seeing him. He's more than satisfied just to go ahead and put that shot on the Rossi shoulder. As the thrash goes on a bit of a
My scouting crush mission name is in Trudy. towards B main. दुर्वेश भाई ने 40 रुपए दिया है, वो बोला है क्वेश्चंस पूछ के सुपर चैट ले रहा ब्रो, गॉट बिग ब्रेन। PaperX क्या? pulling back, getting ready for the attack. मैं तो सबसे बात करता हूँ ऐसे। मैं कभी ऐसा भाई 2 रुपए का पैसा नहीं लेता मैं। कभी नहीं। जी भाई पाप लगे उसको भाई। मैं तो अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। They're going to back away, and that's going to be them now drifting back towards this B site. That's got the thrash out again. 30 seconds left. So that's going to be. कैच ड्रिंक भाई थैंक यू फॉर द 40 रुपए। कैच ड्रिंक भाई को शायद सांस लेने में दिक्कत हो रही है। It's either A main or it's B. ओ भाई पिक आउट करता भाई 5 किल है। It's going to be A. Oh, Doesn't matter. Able to Bro, find he two got before 2 getting with down. that. A chance for the Marshall. But Stinger is No better big than shot. Phantom. Time dwindling. Any day. Spike here in the hands 2v4. of Izu. GG, Spots GG, one. GG. Shot in. Spike going to be planted. Spike T1 planted. with a hope, with a dream. Last 2v4. player But standing. now GG. it's just Izu all on his lonesome. Swings out, the spam coming through the smoke, trying to scout him out, finds one, but cannot hold the door. Forsaken, he will get the finish. The Fuse can come in, and that is going to be PaperX shutting down T1 on their map pick of Ascent and moving forward 2-0. And now PaperX find themselves once again making their way to an international event on to Madrid. They will. Questions Puchki SC Lira. Bro got big PaperX यहाँ पे on the floor laughing. लगातार दूसरी बार पैसिफिक चैंपियन बनने के और बढ़ते हुए। अरे यार बेचारे सैड है यार बहुत। बेचारों का रन खत्म हो गया यार शायद। Such a valiant effort on split. They gave it everything they had. They made that triple duelist almost not work. It was so close. बेचारे यार। A loss like that against a comp that so many other teams would stray away from. अरे and say, भाई रो "No, रहा है बे इजू। we can't make this work." A loss like that, seemingly having shattered T1, but I mean, you can see what it means to them. It's brutal. 1 year say chow raha But, I mean, all things considered, still an incredible beginning to the year here for T1. Making a very significant run अंग्रोजा back. भाई ने 40 रुपए दिया और लिखा है एक साल से चल रहा है। क्या बात करो तुम, 1 साल से चल रहा है तुम्हारा ये? In that opener तो there मतलब on 1 साल में split. तुमने मतलब क्या क्या प्रोग्रेस किया While the emotions अंग्रोजा for भाई? now, they stay. मतलब बात होती है? I hope that in the end they'll be able to hold their heads high. Follow करते हुए एक towards दूसरे को। stage one, come back even stronger. I mean, you have to look at this T1. नारुतो भाई ने 40 रुपए दिया और लिखा है इताची स्टोरी इज ग्रेटर देन वन पीस। तो आपका नाम नारुतो क्यों रखा है आपने नारुतो भाई? A lot of really good things happening on this team. A lot of good things in place. भाई रो रहा है यार बेचारा। No small task to try to take down PaperX, and many have tried, few have succeeded. It is so difficult. अरे उदय भाई थैंक यू यार फॉर द ह्यूज 100 रुपीस यार। I mean, he's just, रुको we know उदय what भाई he's पढ़ता हूँ। capable of. We saw it on GE. We're Well, seeing it basically here last against arc था, PaperX. third season It's a उसको different दिखाएंगे। style, it's a And the different next flair arc to called the PaperX Hashira this training year, arc, Kilios. We're उसके not 2 seeing एपिसोड्स sort of दिखाएंगे। एनिमेशन गॉड off टियर the है। rail, sort of blast packing in your face, just going अच्छा। crazy, but it still has a similar tone. It still has a similar flavor. बराबर। Around a भाई applause for आइजू Izu, अबे making यार his way to बेचारा get the बहुत fist रो रहा है bumps. यार। Sportsmanship भाई वो बहुत first, अच्छा खेला यार आइजू। No motion doubt. second. थैंक यू सो मच उदय भाई फॉर द ह्यूज 100। यार उदय भाई लेकिन तुमको मालूम क्या Again, another grand final, सीजन 2 में another ना international सीजन event 2 में on the वो जो horizon. फाइट होता है ना भाई लास्ट में और जब तांजीरो ऐसा रोता है भाई Another जब series to be played वो through. डीमन ऐसे बोलती रहती है भाई Some ब्रदर limited time for preparation. Brother. Don't know yet who their ऐसा opponent's going to be. बोलते रहते हैं ना वो That's true. लोग तभी तांजीरो को Really नेस्को की याद आती है भाई for वो that वाला next शॉट भाई match. DRX है ना versus तुम्हारा कौन सा GENG. फेवरेट है उदय भाई उसमें का Korean powerhouses थैंक यू फॉर द 100 squaring रुपए off in what I think will be a very, very close series. अंग्रोजा थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीस ब्रो बस दोस्त मानती है Battle with some of those rookies coming in. That's तुम an खुश हो exciting उसमें फिर storyline. अंग्रोजा भाई It's just hard to think that it'll be any potential different result in some ways than the old RX Classic. It just feels like we're just destined to have another go. But I don't know. I mean, GENG looks great. They do. Who knows what's going to happen with that one? That's for a future matchup that'll be coming up later. But for now, we have the entirety of PaperX standing by for the winners interview. स्पेंसर भाई थैंक यू सो मच फॉर 40 रुपए वेनिस हॉर्स भाई का सब्सक्राइबर टूर्नी इनकमिंग जल्द होगा स्पेंसर भाई आप ज्वाइन कर Congratulations, everyone!
I mean, it was a fast match Bro-based today. Dust Monty 3 High. duelists and then no sentinels. It was crazy to see those come. So, what were you thinking to come up with those compositions, and what makes you think it's worth the risk? 저희가 이제 PRX가 우승을 하면서 마드리드로 가는 첫 번째 티켓을 거머쥐게. पेंसर भाई थैंक यू फॉर द 40 रुपया. 그래서 또 물어볼게요. और हाँ मैं ये पूछ रहा था कि आप ज्वाइन करोगे क्या? 어떻게 3 타격대 그리고 센티넬 없이 이렇게 맵을 진행하게 됐는데 पैटविश भाई थैंक यू फॉर द 40 रुपए. 어떻게 생각하게 भाई हर्षद मेहता शर्मा जाएगा तुझे देखकर. पैटविश भाई उससे याद आया तुमने वो हर्षद मेहता वाला सीरीज देखा है क्या? I think for the I think we changed like 1 week ago, I think, or maybe 2 weeks ago. 1 week ago you decided? Yeah, I think all of my teammates just feels like Yoru is a good idea on that map because people run Cypher most of the time, right, on that map. So we use the decoy to break the trip and stuff. So yeah, we're just trying in scrims and it's working. So brave. yeah, we just roll with it, you know. So yeah. Okay. 네, 사실 1, 2주 전에 정해진 요원 조합이라고 하는데요. 요루를 써보면 어떨까라는 아이디어를 팀원에서 내고 연습하는 결과 이번 게임에서 잘 보여준 것 같다고 말했습니다. Thanks to Bye for the interview. And then let's go to something. Congrats again, something. I want to ask you, when you sense your team's win, what and who popped in your mind right away? Can you tell me about the story? 딱 이기기 전에 어떤 생각이 들었고 उसकी मम्मी देख रही है something की. something 선수에게 물어보겠습니다. Actually, after first map, I have no thoughts about the game because after first map I'm a bit nervous. I don't know why, and yeah, just no thoughts, just play our game and hope we will win, and yeah, we win. Also, you're so focused on the play, you didn't think of anything. 사실 첫 번째 맵에서 이겼을 때도 너무 집중했기 때문에 아무것도 떠오르지 않았다고 말했네요. पहली टीम है भाई जो मैड्रिड क्वालीफाई हुई है भाई इस मास्टर्स के लिए. भाई सुनने दो ना भाई, विनर्स मेंटालिटी. Yes. For Monyet, were there any barriers you needed to handle before coming into the playoffs? Any hardships you needed to handle? Sorry? Were there any difficulties you needed to handle before coming into the playoffs? 플레이오프에 들어오기 전에 어떤 어려움이 있었는지 오늘 순서에게 물어보겠습니다. On the playoff? Yes, I for think this match. It's a bit hard for me because I was struggling for both games, but I don't want to make my teammate like making a hard job, you know. So I just like cheer for them, help them together, comms for them. Yeah. Oh, nice, good job. 별다른 큰 어려움은 없었고 오히려 팀 전체를 이끌고 응원을 하는 역할을 했다고 말했습니다. Thank you, Onyet. And now to Forsaken. What would be your team's greatest strength that caused your win today? And anything to say to the fans or anyone watching, especially your family? For all of the fans and for my family, for my girlfriend, everything, thank you so much for watching us. And we're really excited to show what we can do in Madrid later. I hope you guys still keep supporting us all the time until we can bring the trophy for this specific, and I hope we can bring the trophy for Madrid as well. Thank you. Oh, nice. Let's go! 팀의 이김의 요인은 무엇이고 또 감사할 사람이 있냐고 물어봤더니요. 가족들 그리고 여자친구 그리고 함께해준 팬분들께 정말 고마움을 전했고 마드리드에 가서도 트로피를 딸 수 있도록 열심히 노력하겠다고 마음을 전했습니다. Okay, next to Mindfreak, I have a question. Being a winner of the last year's Pacific, were there any growth or change you personally experienced? Sorry, what again? Being the winner of last year's Pacific, were there any growth or experience you learned from today's? 또 작년에 퍼시픽 우승을 했으니까 이번 경기에 Mindfreak को समझाने क्या बोली वो? I think mentally we are stronger because like we pull a comeback against DRX from 2-0 to 3-2. So I think we learned a lot actually from them, and it helps like our deep run in champions in LA last year. So yeah. 네, 작년과 비교했을 때 또 DRX와의 결투와 비교했을 때 정말 더 단단해진 것 같고 또 LA 때의 기억을 되살려서 저희가 좀 더 견고한 팀이 된 것 같다고 말했습니다. And the last question goes to Coach Alex. You waited for a while, and I wanted to ask, were there any pros and cons throughout the kickoff? What do you think about your team, and any message you want to send your team?
I mean, for other teams, I think everyone has improved. You can see today that we had a really hard game, and I think we ourselves have stuff to work on. It's good that we have more games that we can see. You know, I think our split comm needs a bit of work, but I'm very happy to play it. Pros and cons of the format? Yeah, of the whole tournament, how was it? The I mean, weakness? I mean, it's not really finished yet, so maybe this review is better after the finals. Thank you. Thank you. 저희가 뭐 아직 끝나지 않았기 때문에 전체적으로 장단점은 말할 수 없지만 모두 최선을 다했습니다. 하지만 스플릿 요원 조합 같은 경우는 조금 더 손볼 때가 있다고 말했고요. 정말 좋은 게임이었다고 답해 주었습니다. And Alex, I have one little fun question for you. I mean, I heard that you stress eat a lot during the tournament. So, what are you eating so much? I'm trying not to do that anymore, but yeah, I tend to just like grab a lot of snacks. Yeah. And I think my favorite one in Korea is this biscuit with apple jam inside. Oh. Yeah, I can't find it here, so I haven't been eating, but I think. भाई लोग, रवि भाई ने अपने को 34 मंथ सपोर्ट किया है, 34 मंथ्स, और रवि भाई की अभी शादी ये हुई है, ठरी है। रवि भाई की शादी होने वाली है बहुत जल्द। एक बारी सब लोग W रवि भाई in the chat. We are going to see you again for tomorrow. And thank you again. 네, 지금까지 PRX 선수들과 함께 I support PRX, of course. Me too, Kelly. Me too. Since the start, you know, bachpan. I mean, since my birth, I said PRX. 파이널스까지 남았기 때문에 끝까지 최선을 다해 주시기 바랍니다. Although they got a ticket for the Madrid, they still need to go to the Love you, Ravi bhai. for it. So we'll see what they'll do. And best of luck for all the players. Back to the desk. All the best for your future, bhai. DRX, Paper X is like a box of chocolates. Bro waiting for my dress up darling season 2. क्या? अंग्रोजा भाई ने 40 रुपए दिया है और लिखा है ब्रो वेटिंग फॉर माई ड्रेसअप डार्लिंग सीजन 2। हाँ भाई, वो तो है, मतलब वो जो सीजन 1 है ना, वो था भाई, मतलब अच्छा था, अच्छा तो था, वो आ गया सीजन 1। लेकिन भाई मेरे को मतलब समझो वो प्लॉट समझा नहीं था, लेकिन मजा आया देखने के लिए, मजा आया। तुम्हारे को उसमें क्या पसंद आया था मतलब? Bhai, next game is going to be a crazy game, bhai. Like insane game रहने वाला है भाई. Like one of the goated games. It's DRX versus GENG. आ जाओ, चलो सेटअप गेस करते हैं, सेटअप रिव्यू करते हैं, सेटअप रिव्यू करें। आ जाओ, आ जाइए। याजू सिंह, थैंक यू सो मच फॉर द 69 रुपीज। याजू सिंह का भी फर्स्ट सुपर चैट है भाई लोग। हैप्पी बर्थडे हो जाए याजू सिंह के लिए। एक सेकेंड आप, हेलो। वो जो थार सोचा था ना मैंने, वो हटा के ना फॉर्च्यूनर डाल दो, मतलब बुक कर दो, ठीक है? हाँ, डाउन पेमेंट हो गया। अबे क्या कर रहा है ये भाई? ये एआई है? ये कौन है भाई? ये कौन है? Oh, look at his PC. This looks so clean. Fortnite gamers.
लिविंग ऑन द एज। है ये काय की सीढ़ी है चैट? मॉनिटर क्या? हाँ ना भाई, मेरे को ओसीडी होने लग गया। शिट, मैंने गलत बोल दिया यार। भाई अगर कोई एनिमे लवर का रूम ऐसा नहीं दिखता ना भाई, तो वो एनिमे लवर है ही नहीं भाई। क्या रूम बनाया भाई इसने, टू गुड, लाइक लिजिट टू गुड रूम ब्रो, टू गुड। रैंक ऑल इन वन पीसी है, नो जीपीयू, आईजीएन यूनिक टू कोल्ड। भाई लोग पढ़ाई का कर रही है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, भाई क्या कन्वर्जन? वन इसका ऑल इन वन पीसी है भाई, इसका ऑफिस माउस है। नो वे ही इज अबाउट सिल्वर, राइट? नो वे ही इज अबाउट सिल्वर। तो शिव जी के आशीर्वाद से वो गोल्ड पहुंच गया। चलो ठीक है। पढ़ाई क्या कर रही है? कंप्लीट क्लास 10th। अबे 10वीं का पढ़ाई है ये। 10वीं में ये सब होता है? गोल्ड या गोल्ड 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 100% गोल्ड। Why? But Gold 3 rank is actually a good rank on that setup, bhai. Well freaking done, bro. You got some serious skills. I hope तुम 10वीं 12वीं अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा जॉब मिले तुम्हें, तुम इतना ज्यादा पैसा कमाओ कि माँ कसम एक अच्छा पीसी बिल्ड कराओ तुम्हारे लिए, खुद के लिए इन द फ्यूचर। नेवर लीव गेमिंग ब्रो टिल देन। नेवर थिंक कि भाई मेरे पास अच्छा पीसी नहीं है तो सामने वाले मुझे आके मार जा रहे हैं, ऐसा कुछ। प्ले फॉर फन, प्ले फॉर फन, लेकिन एक दिन तू पीसी खुद का जरूर बनाएगा मेरे भाई। वो प्लेट पी के हाँ क्या? भाई लाइट मोड पे यूट्यूब चलाने वाले लड़के ना डेंजर होते हैं क्या? वो थोड़े अलग लड़के होते हैं क्या भाई? प्यारा प्यारा चेटअप। अबे लेकिन तेरी चेयर अंदर नहीं घुसती होगी ना भाई इसकी, तो वो त्रास देता रहेगा ना तेरे को। सैड, लेकिन कोई बात नहीं भाई। तेरा सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन ये क्या है? क्या बात है? मैं i5 4th Gen GT 710 एंड 8GB पे प्लेट 2 गई हूँ सोलो W। मे बी मेरा i3 3rd Gen था और GT 730 था, 4GB DDR3, उस पे मैं प्लेट 3 पीक था। क्या बात है? गंदे कर दिए भाई जूते इतने। लाइक कर टट्टी। हर्ष भाई आपकी क्लासिक मेरे ई स्टोर में क्या कर रही है?
People who comment on One Piece without watching it are just like Sakura trash, है ना? Exactly भाई. हकी नहीं है भाई उनको. भाजी मस्त बनाई है मम्मी ने. नको नको. ओवरफ्लो देखो, देखा है मैंने. भाई माउस पैड देखो इसका. शीश. मैंने दूसरा वाला देखा है. दूसरा वाला. भाई एक बार ही विश कर देते मेरे नाम से साथ तो बर्थडे बन जाएगा. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे श्लोक भाई. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे श्लोक भाई. हैप्पी बर्थडे. May God bless you with happiness and lots of love and sacrifices. Happy, happy birthday to you, Slok bhai. I love you. May all your wishes come true and you blast. वाइपर नाम है इसका और इसका चेटअप देखो. थोड़ा ये वैसलीन क्यों रखे है भाई अपने यहाँ पे. आपका सेटअप जिस हिसाब से आपका पूरा गेमिंग पीसी दिख रहा है, आपका माउस और आपका कीबोर्ड दिख रहा है ना, आपका माउस पैड जिस हिसाब से दिख रहा है, तो उस हिसाब से आपका रैंक होना चाहिए ब्रॉन्ज 3. अब आते बच्ची. लाइक क्या बात है यार. गेमर आ गया इधर. भाई मैं बहुत स्लो खाना खा रहा हूं यार, खत्म ही नहीं हो रहा है. लाइक क्या है, क्या बात है. जो लोग लाइक नहीं करते ना. ओ भाई नाइस सेटअप. ए उसने देखो माउस को उसके ग्रिप विप लगाया. भाई ये ना इमॉर्टल प्लेयर है. ये बंदा इमॉर्टल है. सेटअप देखो भी भाई इसका. जैसे ग्रिप विप लगाने वाले लड़के ना भाई इमॉर्टल होते हैं.
हर्ष भाई परसों पेपर है ओसीएम का बोर्ड्स। ए भाई साहब यार मेरे फेवरेट एनिमेज लगाए यार तूने तो यहाँ पे। वाओ ब्रो, वाओ, ये तो मेरा फेवरेट वाला एनिमे है भाई मेरे। देखो सुनो, मैं ना टिप्स दे रहा हूँ भाई ओसी के लिए, ओसी के पेपर के लिए, ठीक है। मैं ओसी है ना बहुत अच्छा लिख के आया था और मैंने यूट्यूब पे ना टिप्स देखे थे। तो भाई हर एक नया पॉइंट है ना, नए नए पेज पे या तो 2 लाइन छोड़ के चालू करो। हर क्वेश्चन के लिए नया पेपर, नया पेज लो। ओसी का पेपर है ना तुम्हारा इतना दिखना चाहिए भाई, एक डायरी की तरह। पट्टे आ गया तो कुत्ते माफिक लिखो लिखो लिखो। और वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ाई कर रहे हो ना ओसी में तो भाई तुम्हारा काम 25 हो सकता है। सिर्फ है ना हेडर्स, हेडिंग्स होते ना, हेडिंग्स वो लर्न करने के, और हेडिंग्स को है ना एक ऐसा वर्ड बनाने का, जैसे ये हेडिंग का फर्स्ट वर्ड लेने का लेटर, ये हेडिंग का फर्स्ट लेटर लेने का, ये हेडिंग का फर्स्ट लेटर लेने का, उन लोग का एक वर्ड बनाने का कंबाइंड। फिर तुम्हें याद आएगा, फिर ये क्वेश्चन का ये वर्ड, मतलब फीचर्स और ये सब होते हैं ना भाई, वैसा पढ़ाई करने का। मैंने वैसा किया था भाई और उसी में मेरे को अच्छे मार्क्स आए थे क्या। तो भाई पढ़ाई कर, लाइटली मत ले आ गया भाई। अभी स्ट्रीम देखते देखते पढ़ाई कर रहा है भाई, काम 25 हो जाएगा ना तो फिर सॉरी होएगा। ओसी में छाप भी नहीं सकते भाई तुम तो। लेकिन भाई तू तो कॉमर्स का था। अरे तो क्या ओसी के आर्ट्स में रहता है क्या? अबे टट्टी, एक सेकेंड। मम्मा, मम्मा, यार मम्मी आवाज नहीं आ रही। आर्ट्स में ओसी रहता है? आर्ट्स में ओसी नहीं रहता ना? इकोनॉमिक्स होता है, मैं भूल गया, मैं भूल गया। इकोनॉमिक्स होता है आर्ट्स वालों को, है ना, है ना, है ना। भाई मुझे ना दो सेकंड में ना मेरे को समझ गया कि अपने अपने चैट में अभी क्या एज ग्रुप चल रहा है भाई। सब लोग पूछ रहे हैं भाई ओसी क्वेश्चन मार्क, ओसी क्वेश्चन मार्क, ओसी क्वेश्चन मार्क। अरे भाई भाई प्लीज सी डीएम। अरे यार क्लीनेश्वर सेटअप, क्लीनेश्वर सेटअप, वाओ वाओ। भाई मेरे ये क्यों किया है तूने? अबे ये क्या वॉलपेपर लगा दिया है भाई? भाई साइंस वालों को ओसी क्या होता है ये पता नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। लोग भाई थैंक यू फॉर द 20। ओ भाई चटअप, नाइट चटअप, नाइट चटअप, नाइस ड्राइविंग व्हील एज वेल। डेविल आर्नो, आर्नो डेविल, क्या बात है, क्या बात है। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है?
I wish to draw your attention to the TV which I bought recently. 1 month ago. I brought a... कर दी ना? फेल हो गए भाई पेस भाई तुम. हो गया खत्म. बॉट होता है बॉट. लग गए भाई. देखो इसलिए बोल रहा हूं पढ़ाई लिखाई करो. वैलोरेंट में कुछ नहीं होता. I brought a TV from your store. In bracket Capital Electronics. The TV now is not working properly. भाई WhatsApp लैंग्वेज लिखा है आपने यहां पे. The TV now आएगा ही नहीं. The TV now is not working properly. The volume could not be adjusted. And the screen keeps getting dark. I kindly request you to send a technician and if required, replace the TV. Acha, replace the TV set since it is within warranty period. Your prompt action would certainly help me. Thank you. Yours faithfully, Rahul. ओए, ये राइट साइड में नहीं आता क्या? अच्छा नहीं चलता है. यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया. चलो इधर भी एक मार्क खत्म. क्या मार्क? क्या इधर भी फुल स्टॉप नहीं गया? मार्क गया. इधर भी फुल स्टॉप नहीं दिया. मार्क गया. चलो चलो भाई मेरे को ना पेपर में इन्विजिलेटर बनाते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज क्या उसे कहते हैं? दिस इज हिज आंसर इन हिज एग्जाम. दिस इज राइटिंग स्किल एग्जाम ऑफ इंग्लिश. Is it good for a 12-year-old? साले 12 साल का था ना मैं जब 12 साल का तब भाई मेरे पास सिर्फ बॉल होता था खेलने के लिए. पैड भी नहीं होती थी. बॉलिंग डाल के बैटिंग करके भाग जाते थे भाई हम लोग बॉल लेके. भाई इसके पास एक पीसी है, एक सीपीयू है, एक लैपटॉप है और पूछता है इज दिस गुड फॉर अ 12-year-old. अबे इतना चापटी मारूंगा ना. Oh, are you guys serious? By the way, this is one of the worst setups I've ever seen. No cap. मैं तो कंचे खेलता था. हमारे घर में कंचे खेलना अलाउड नहीं था. हमारे दादाजी ने, मेरे पापा बताते थे कि हमारे दादाजी ने ना एक बारी वो गोटियां खेल रहे थे तो उन्होंने पकड़ लिया तो उनके उंगलियों पे ना मेरे दादाजी ने छड़ी से छटाक छटाक मारे थे. तो वो खौफ में ना हमने कभी गोटियां खेली ही नहीं भाई. ओ भाई यार क्या नोस्टैल्जिया हो रहा है भाई. PV equals to NRT. अबे ये मैंने पढ़ाई की थी, इसकी मैंने पढ़ाई की थी. इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी है क्या ये? भाई कंटिन्यूटी का है ना. मैंने पढ़ाई कैसे किया था मालूम क्या? तो कंटिन्यूटी है ना. गैस इक्वेशन फिजिक्स नहीं है. मेरे को देखा देखा क्यों लग रहा है? अबे सालो मैथ से.
अबे कौन बोल रहा है ये फिजिक्स कैसे होगा ये? हाँ बे फिजिक्स है। अच्छा इधर इधर लॉग वगैरह है। ठीक है भाई। अरे मैं नहीं पढ़ाना भाई साइंस। ठीक है भाई लाइक करना फिर हगा से लाइक कर। संस्कृत है। सब्सक्राइब नहीं किया भाई खराब लोग हैं। अबे तो मैं जब कॉलेज में था ना 11th-12th में, तो हमारे कॉलेज में ना भाई दिवाली के बाद है ना कोई आता ही नहीं था, क्योंकि उनके ना ट्यूशन में ये हो गया, पढ़ाई करके हो गया था, ट्यूशन में पूरा पोर्शन सिखा के हो गया था। तो भाई कोई कॉलेज आता ही नहीं था, घर पे जाके पढ़ाई करते थे। हमारे कॉलेज में ना 120 लोग थे हमारे क्लासरूम में, और हमारे क्लास में आते थे 4 जन। वो टीचर आती थी, बुक खोलती थी, पूछती थी क्या पढ़ाऊं, क्या डाउट है। और भाई मेरे को तो कुछ पता ही नहीं कि क्या पढ़ने वाला है, क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि भाई मेरा एक हाफ के आगे का कुछ पढ़ाई हुआ ही नहीं है, मेरे को किसी ने सिखाया ही नहीं। अर्नव भाई थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्सर, क्योंकि मैं क्लासेस वगैरह नहीं लगाया था। तो मैं टीचर्स को पूछता था कि टीचर आप आगे का नहीं सिखाओगे, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो मैं फेल हो जाऊंगा ऐसा तो इजीली। तो वो बोले नहीं, अभी 4 जन के लिए हम लोग क्या ही सिखाएंगे, आपको अगर कुछ पढ़ना है तो तुम इधर आ जाओ, स्टाफ रूम में आ जाओ, हम पढ़ लेंगे। तो भाई मेरे है ना, मेरे क्लास में जो भी लड़के लोग दोस्त थे ना, वो सब वैसे थे। देख रहा है? चल भाई फुटबॉल खेलने जाते हैं। चल भाई अबे क्या बैठेगा इसका लेक्चर, अबे चल बे। ये सब थे मेरे दोस्त लोग, ठीक है। और मैं 11th-12th में ना बहुत अकेला अकेला रहता था, ठीक है। और फिर 11th-12th में कैसा मैं ऐसा एक्टिविटीज़ में पार्ट रहता था ना, डांस के लिए इंटर स्कूल गया, इंटर कॉलेज गया था मैं। फिर फुटबॉल के लिए भी इंटर कॉलेज गया था मैं, लेकिन फुटबॉल के लिए हमारे क्लास में सिर्फ एक बंदा था जो टीम में था, तो उसके साथ अच्छा जमता था। फिर डांस के लिए इंटर कॉलेज में गया हो, फिर फीफा वगैरह खेलने के लिए इंटर कॉलेज गया हो ना, तो वहाँ पे लड़कियाँ रहती थी साथ में। तो मेरे क्लास की ना 2-3 लड़कियाँ अच्छी दोस्त थी, ठीक है। और वो लोग जाती थी क्लासेस, और वो थी पढ़ाई करने वाली। तो दोस्त लोग जो थे ना, लड़के लोग, वो पढ़ाई करने वाले नहीं थे। और भाई मैं सीरियस था पढ़ाई को लेके, क्योंकि भाई मैंने तो नहीं लगाया था कोई क्लास वास, और मेरे को चाहिए था अच्छा पीसी भाई 12th के बाद, ताकि तो इसलिए मेरे को है ना एक अच्छा परसेंटेज चाहिए था। तो भाई एक लड़की थी, उसने ना उसके क्लासेस में एमटी जाते हो तुम लोग, तुम में से कोई एमटी महेश ट्यूटोरियल्स, तो महेश ट्यूटोरियल्स में ना भाई 2 लाख फीस होती है, तब जाके तुमको है ना एक सब्सक्रिप्शन देते हैं वो लोग। तो वो लड़की ने ना मेरे को उसका सब्सक्रिप्शन दे दिया। मेरे को कंटिन्यूटी पढ़ना था भाई, लेकिन मेरे को कंटिन्यूटी आता ही नहीं था, और वो बहुत बड़ा चैप्टर था और मेरे को आता ही नहीं था कुछ, और भाई एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट था आना। तो भाई मेरे ने उससे क्या उसे कहते हैं, वो उसके सब्सक्रिप्शन से मैंने पूरा ये पढ़ लिया भाई, कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ा, फिर यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा पढ़ा। क्रेजी भाई क्रेजी। रोबोमेट, हाँ शायद रोबोमेट आ गया, शायद रोबोमेट। भाई वो सब रोबोमेट के पता नहीं रोबोमेट था कि नहीं, लेकिन उसने कोई तो मेरे को दिया था भाई, वैसा पढ़ाई किया था भाई मैं कंटिन्यूटी का। गुड ओल्ड डेज बेबी, गुड ओल्ड डेज। भाई क्या सेटअप है यार। भाई तुम्हारे वॉलपेपर ऐसे कैसे होते भाई, पानी पानी हो जाते। मैच स्टार्ट होने वाला है। अबे अभी नहीं चालू होएगा, अभी तो टाइम है, अभी तो कॉइन टॉच होएगा, सब कुछ होएगा। चॉकलेट भाई, किसके घर में इतने चॉकलेट होते बे? कोई अमीर बंदा होगा भाई, अमीर बंदे भाई, अमीर बंदे। रोबोमेट भाई मेरा पेट फट रहा है भाई, अभी और नहीं खा रहा मैं भाई। ये स्टीयरिंग व्हील देखो, मैं हाथ वाथ धो के आता हूँ, तुम लोग तब तक लाइक मारो। और तुम लोग ये कितने अब तक टाइम से मेरा स्टीरिंग देख रहे हो, तो एक्सक्लेमेशन टाइम डालो, तुम लोग को दिख जाएगा। 좀 보여준 것 같고 팀의 완성도가 굉장히 높다고 생각을 해서 저희 둘 중에 한 팀이 전 우승도 할 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 네. 네.
I mean, it's good to see Solo again. It's been 2 years since I met him, and GENG having Solo, they have become a more strong, solid team. So I have thought that between us two, we will have the tickets to the Madrids. 그럼 다시 또 솔로 감독님한테 와볼게요. 털미 감독님이 되게 좋은 답변을 해주셨어요. 근데 이제 솔로 감독님이 DRX를 이제 선수로서 그리고 코치로서도 이렇게 만난 적이 있는데 오늘은 좀 어떤가요? 오늘 좀 털미 감독님에 대해서 얘기하자면 어떤가요? 잘하는 팀이다 보니까 네, 저희가 잘하는 팀일수록 그냥 저희가 강한 모습을 더 보여준다고 생각을 하고 네. 두렵지는 않습니다. 네, 저희가 네, 이길 수도 있기 때문에 네. I asked Solo, how do you feel about meeting Termi again because they dealt with DRX several times, and he said he doesn't fear meeting DRX because he has confidence and possibility to beat them. 네, 이제 다시 또 털미 감독님한테 왔습니다. 감독님, 제가 무슨 질문을 할 줄 예상이 좀 가시나요? 네, 어느 정도 좀 됩니다. 또 솔로 감독님을 만난 적이 있으시잖아요. 2021년 이제 누턴에서 이때 솔로 감독님 때문에 이제 마스터즈 레이컵에게서 진출을 못했던 경험이 있는데 이게 혹시 준비 과정에서 좀 안 좋은 기억으로 살짝 스쳐갔는지 물어보겠습니다. I mean, 2022 Solo's new turn stopped you from getting to translate मत करो, मुझे समझ गया. Did the memory ever hit you हिंदी में समझ गया. coming into this match? 그때는 굉장히 저희 अरे अंग्रोजा भाई ने पहले भी एक सुपर चैट किया था ना, मैंने मिस किया. अंग्रोजा भाई ने लिखा है कि ब्रो कैन यू सजेस्ट मी सम ऑसम एनिमेस. ब्रो यू कैन वॉच 저희한테 또 좋은 기억으로도 रिसेंट वन ब्रो, सोलो लेवलिंग. भाई क्या एनीमे भाई, आई लव इट भाई, वन ऑफ माय फेवरेट्स. आप देख सकते हो. अच्छा, दूसरा सुपर चैट आपका वही है, चैट किसे सोलो लेवलिंग देखी है? मैंने देखी है भाई. एनिमेशन थोड़ा सा ओंगड़े ओंगड़े है, लेकिन भाई तू पागल हो जाएगा भाई, पागल हो जाएगा देख के. मजाक से हटके पागल हो जाएगा तू. 솔로 감독님 잘 들으셨나요? 네, 이제 또 DRX의 전신인 비전 스트라이크에서 예전에 이제 선수로서 만난 적이 있었는데 भाई फोकस क्यों शिफ्ट कर रहा है कैमरामैन? 처음이에요. 그래서 얼마나 이번 결투에서 자신 있으실지 यार फोकस शिफ्ट कर रहा है यार. हट. I mean, you have beaten the ex-DRX Vision Strikers in the past as a player, but not as a coach. So, how confident are you today? The players are shouting for you, I think. 일단 저희 뱀픽이 저희가 예상했던 것대로 나왔기 때문에 네. 그 하루 쉬었거든요. 하루 쉬는 동안 그렇게 कर दिया भाई डिस्क्रिप्शन लिंक अपडेट. अभी ज्वाइन करो भाई, सब लोग ज्वाइन करो. मां कसम 5 करोड़ लोग ज्वाइन करेंगे अभी. 네, 경기력 보여드리겠습니다. 네. 네, 감사합니다. I mean, the map pick that we banned was what we expected, and when we वाइपर अल्टीमेट का ड्यूरेबिलिटी भाई, स्क्रोल व्हील खराब हो जाते भाई रेजर माउस के भाई. आपको आपका पहला पीसी कब मिला था? जब मेरा फर्स्ट ईयर चालू होने वाला था तभी. मतलब मेरे को 6-7 महीने हुए मेरा थर्ड ईयर खत्म हुआ, राइट? तो समझो 3 साल पहले, 3-4 साल पहले, हाँ 3-4 साल पहले मुझे अपना फर्स्ट पीसी मिला. वैसे घर पे पहले से ही पीसी था एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड से, लेकिन वो उसमें कैसे ग्राफिक कार्ड एकदम ओंगड़े ओंगड़े था, सीपीयू एकदम ओंगड़े ओंगड़े था, वैसा वाला. तो गेमिंग तो भाई बचपन से ही चल रही है भाई. कोई अच्छा सेटअप दिखा दो भाई. अच्छा, क्या बात है, ये भी अच्छा ही है वे, काफी अच्छा है ये तो. भाई ये वो वाला बंदा है जो बिल्डिंग में रहता है ना, जिसके घर पे सब बच्चे जाते हैं. ये भाई इसके पास बहुत गेम्स है. ये वो है भाई, ये वो है भाई. क्रेजी भाई क्रेजी. वो आता है तो सबसे पहले बैटिंग उसको दे देते भाई. अंग्रोजा भाई थैंक यू फॉर द 60 रुपए.
अच्छे से तो दिखा भाई, पूरी अच्छी लग रही है वे। Damn. Damn. Damn, baby. Wow. So good, so good. So good, so good. अभी इसने देखो ना क्या मस्त है भाई, इसको है ना स्टैंड की जरूरत भी नहीं है, इसने अपने कैबिनेट पे रख दिया ये कैमरा तो भाई। लेकिन इसका हाइट का इतना रहेगा बे, बच्ची तो वो खपची तो खमाए। मान लिया भाई ये तुम्हारा है, मान लिया, मान लिया भाई। नॉट आराध्य गेमर वाइट, ये देखो गेमर अंडरस्कोर आराध्य। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, ये सबसे घर नहीं चलने वाला हगा से। ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको मेरी प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो हम लोग एक डिस्कॉर्ड में बैठ के आराम से मैं तुमको समझा पाऊंगा। ऐसे मैं अपना वक्त जाया नहीं करता। ऑल इन वन पीसी है, i5 7 Gen, नो जीपीयू, नो गेमिंग माउस। गेस द रैंक पीक। आपका पीक है प्लैट, लेकिन अभी आप हो सिल्वर। गोल्ड है यार, गोल्ड है भाई, क्या कोल्ड मूवमेंट होता बच्ची। श्री हरि हेलो हर्ष भाई, तवम बहु उत्तम, ऐसा बोलता है। भाई वैलोरेंट का एक मैच हो जाता भाई, इतना टाइम लग रहा है इन लोग को चालू करने। हट ब्रो, दे थिंक DRX गonna win। भाई जेंजी को कम समझे हुए क्या? जेंजी फॉर द विन बेबी। ओ भाई साहब, चेटअप देखो भाई का चेटअप। टोपी चेटअप क्यों लग रहा है चाटिए? टोपी चेटअप है क्या? वाह भाई वाह, लोग कल पैदा हुए ना भाई। हाँ भाई, यस रैंक अमोक भाई, हम लोग कल पैदा हुआ है क्या रे? एमी 009 30। ओ भाई 13-year-old स्पीसी। भाई 13-14 साल के लोग बच्चों के हाथ, बच्चों के इसमें है ना रूम में एक सिर्फ ऑल इन वन रखना चाहिए, मैं तो बोलता हूं, जिसपे ना सारी गेम सिर्फ 60 FPS पे चले, उसके आगे कुछ होना ही नहीं चाहिए। अबे यहाँ पे मेरे स्टोर में ना, बाजू वाले एक स्टोर है मेरे यहाँ पे, ब्लू कलर का प्राइम का बॉटल देखा बे मैंने, 1500 रुपए का। माँ कसम, कौन लेगा उसको? मैं नहीं ले रहा भाई। ओ भाई क्या मस्त है डीजे बंदा। लेट्स गो। हगा से स्ट्रीम देखते देखते बीके करेगा। अबे ये देखा था भाई, फुल झगमग, फुल झगमग, आई शपथ निस्ता दिवाई। बीस का हूं पर मेरे पे लैपटॉप है। वही भाई, अरे भाई मेरे लाइट लगा दे यार, लाइट लगा दे, मेरे को टेबल देखने दे यार। अच्छा इतना अच्छा तेरा क्लीन है भाई सेटअप, थोड़ा लाइट लगा देता। गेस द रैंक, रैंक पीक। तेरा पीक रैंक है फ्लैट और अभी तू है सिल्वर।
go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी। मैंने जी ब्रश है ना चालू किया था भाई, सीखना, ठीक है। जी ब्रश कर रहा था मैं, जी ब्रश कर रहा हूँ और फिर मैंने ना एक दिन, पूरा दिन मैंने ना 4 घंटा लगा के एक पांडा बनाया था भाई, पांडा। और फिर उसके बाद में मैंने ना वो सेव ही नहीं किया, तो भाई उसके दूसरे दिन से मैं जी ब्रश खोला ही नहीं। और फिर एक दिन मैंने जी ब्रश अनइंस्टॉल कर दिया, खत्म। क्या बनाया है भाई इसने, बिग रिस्पेक्ट भाई, बिग रिस्पेक्ट टू ऑल द जी ब्रश यूजर्स। बहुत बीटी का काम है भाई ये जी ब्रश का। The Kings of Korea DRX to thwart yet another challenger to their throne. Make some noise for DRX. अबे ये लोग ने ये क्या ड्रेसिंग क्या किया है, ये क्या किया है इन लोग ने, पेटी वेटी क्यों लेके आए ये लोग, ये क्या वर्कआउट है इनका। शीश, hey, they're cooking. Let's go, baby! बच्ची lemon. Showing tremendous grit and The Goody Gamers! GENG! Oh boy! Counterparts. This is GENG! Sheesh! Texture the goat! भाई जेनजी का ये प्लेयर कार्ड ब्रो, वन ऑफ द बेस्ट। नर्वस हो गया वो, हाँ था भाई कितना ऑकवर्ड था बेचारे के लिए, वो खुला ही नहीं। अबे तुम कुछ लेके आओ बे। I'm a kitchen way your nest. I'm a kitchen way on your nest. I'm a kitchen way on your nest. I'm a kitchen way on your nest. जेनजी के लोफाई से बाहर आ रहे, मतलब DRX का कोच हमेशा यही आउटफिट में देखता है, एकदम प्रोफेशनल, जस्ट लाइक मी बेबी।
I love those walkouts. I love it. GENG wins for me. I'm sorry. Really? No, I love DRX's weird briefcase opening. Buzz couldn't open this. What? Until they had teamwork, and that is how you win. It was. Oh, बराबर बोल दिया, ताई बराबर बोली, teamwork को भी. If they marched out in sync, that could have been cool. Okay, you know quack. what? You should be the next choreographer. Okay, choreographer. Okay. I was about to say. Oh, thank you, Squad. but I don't. Arey, thank you, Aditya. But anyway, Yeah. I mean, to the map picks, okay. I feel like this is interesting that DRX did not straight up ban out Sunset because they tend to ban the newest maps often. ए भाई नया Discord link डाला हुआ description में बहुत मारूंगा. Let's go Bind! If GENG's not prepared for it, this could be a 2-0. Confused लग रहा है भाई GENG वाला. History at least for the last matches that DRX have played on Bind. भाई GENG वाला कितना confused है भाई कि कौन सा map ban करे. Back and forth, they had some success during the AVL, but they lost the Sentinels. It's been the same comp. Are they going to mix it up? भाई 2 साल लगा रहा भाई वो ban This करने. is still kind of up in the air for me, but I think they're just trying to play safe and maybe get this out of the board very early, and then hope that GENG picks up a map that DRX. वो अच्छा defense, अच्छा side pick करने के लिए confused थी वो लोग. This second map has to be a very important pick. भाई GENG already nervous लग रही है भाई. DRX's Lotus maybe sometimes a bit shaky, but they have tightened things up since then. GENG though, they did look GENG a का lot better, coach introvert है, ऐसा है क्या? like PaperX and लोग, मैंने तुम लोगों को बताया ना, कल मैं मतलब कल रात में मैंने घर में अगरबत्ती लगाई थी और हवा में बहुत सारे मच्छर चल रहे थे और फिर वो मच्छर वो अगरबत्ती की वजह से मर गए एक एक करके. तो मैंने बताया ना कि मेरे बालों में 10 मच्छर गिर के मर गए हैं. तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है वो 10 मच्छर है ना अंडा डाल रहे. I feel like they want to again put a map out that doesn't utilize Meteor as well. So him being stuck on a site can be a benefit for DRX, which is what you kind of normally do as a Sentinel when you're playing Bind. So just throwing it out there. That's clearly DRX's game plan. But then, you know, coming to a map like Lotus, coming to Ascent, if GENG goes in with the same strategy. Ew, and you didn't even shower today? What do you mean today? This means that DRX might have a great game. Buzz ने भाई योरू लिया. Let's go Buzz. तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे. People are really loving the Gecko, and I am all for it. Foxy9 on Viper too. भाई सिंगल डुअलिस्ट लिए और सिंगल डुअलिस्ट यहाँ पे योरू है. ठीक है. So this is a little bit interesting. Meanwhile for GENG, Texture, Meteor, लाकिया ने स्काई लिया है क्लासिक एंड स्टैक्स ने गेको लिया है. Okay. I'm just a big fan of seeing Buzz on the Yoru as well. He's shown how good he was on the Breeze, and I feel like he does the same type of control. Woo! Let's get into this game. रुको. Poll change करते. Poll. Continue the Sky meta on Bind, so I'm curious to see if that's really gonna pay off. It looks like we're going to a game. We're gonna go to our casters, Achilleos and Paperthin. Woo! Thank you very much. We've got a riled up crowd here in front of us. 2 Korean squads getting ready to make battle to see who is going to be joining PaperX, not only in Madrid but also in the grand क्या हजाई टटे कर रहे हो बे? Fight for those ever valuable championship points. That's right. If you By 50-50 है, 50-50 है. I want GENG to win. 3 championship points. देखा यार मैं तो जिंक्स करता हूँ लेकिन. A lot to play for here for both of these squads, and like you and I were talking about. Let's go GENG. This is the first time ever. Let's go GENG. Okay, sorry. Yes, we have never really seen them pick this up at all. Stacks his first time. Attack करिए DRX. अकेला. यहाँ पे मंचकिन B पे खेलते हुए. Munchkin, my baby. Munchkin is the goated gamer. Which has had its ups and downs, certainly. See how he fares now, though, going into Bind. DRX certainly going to be feeling confident about this setup. It's flash. इसमें underrated कौन है? Underrated इसमें GENG है. Underrated नहीं बोलूँगा, लेकिन उनका रन काफी अच्छा था. Attention being paid at all. DRX तो क्या? DRX तो सबको पता है कि जीतने वाली है. There's a lot of free space for DRX to potentially work with. Yes, they're going to have to maneuver their way through a couple smokes, but Dizzy going to be able to grab a little bit more info. Let them know that at least at the entry it's clear. There's the cam above the door. ये पिक DRX का है. 4 जन बिलोंग के बाहर है वे. Back of the side is Munchkin. Flashback as well, though, in a position where if these teleporters end up coming into play, he might be able to be ready on the jump here. Spam coming down, Foxy9. Let's wait for that decay to come back in. As Dizzy is retrievable at backside. For now, it looks like DRX is going to be getting a relatively free plan. Teleporter not going to be the pathing here for GENG. Everybody rotating back through that defender spawn, and DRX maybe scratching their head a little bit, saying,
Where the hell is everyone? It'll be a tough retake. Flash to try to open things up, but no purchase just yet with the Molly blocking things off for GENG's entry. Okay, from the orb into the Molly. For a tough retake here, but now it's just going to be a full, basically 5-minute push. Mako finds two. Texture able to find 2 quick kills in response. दो मारे टेक्सचर ने तू भी अरे यार कोई नहीं भाई क्या मारा है यार सिटी पे What is more tiring, streaming ranked or streaming watch This party? is something that can be tricky for opponents of DRX. Like, obviously, one of the calling cards of DRX. For me, both are equally tiring. They're so good at executes. They're so good at making sure that But all अगर their utility is perfectly timed and in the right places. Yeah. That you Because maybe are comfortable मैं giving ranked them है a ना, little bit of space. मैं There's 5 more घंटे के on ऊपर setup. ranked नहीं खेल पाता, Space on ठीक है? B, and you're playing up close and personal on A to try to cut off और the execute at the point of attack. But this round, you give up that watch space, party and है then ना, the problem with वो DRX लंबी is that चलती है they are so good in post. 8 घंटे They're so good at setting up crossfires. They're so good with the और 8 discipline, घंटे भाई making sure everyone's on रहना पड़ता है holding the correct angles. That trying to get through there is so difficult. Of course, with the timing of the poison cloud Basically, and the Molly as well to make sure that मतलब दोनों इक्वली ही लगता है भाई क्योंकि मैं तो जब भी गेम खेलता हूँ उतना एफर्ट डालता हूँ तभी सेम वॉच पार्टी देखते टाइम भी डालता हूँ ट्राई करता हूँ एटलीस्ट Nice shot, Wadley is bro. going to be able to get out of there. DRX flashback क्या नाम है भी उसका Set up as well. It's working its way over towards 2. हाँ वत्सल उनका मास्टर्स में होएगा टूर्नामेंट मास्टर्स करके टूर्नामेंट होएगा तो हर रीजन के टॉप 2 वहाँ पे आएंगे Holding over towards A site. And as the util starts to fly in. भाई उसका फ्लैश जाते हुए दिखाई नहीं ना Moving forward there on to. बस भाई डायरेक्ट मॉली में लैंड किया आगे जाके मंचकिन अकेला एल्बो की तरफ खेल रहा है ये बाय नहीं है वैसे ब्रो दैट स्मोक आई थॉट कि वो वन वे डाल रहा है Might be on the ground in front of actually that backside access. Find out. जेंजी का इकोनॉमिकल राउंड है भाई ए भाई हार जाओ ना फटफट फिर हार जाओ Work his way forward, Buzz ready to swing. स्विंग करने नहीं है बे अच्छा कांटेक्ट पे स्विंग करेगा अभी स्विंग करेगा वो सब जमा फ्लॉलेस वन वे फेल हुआ ऐसा क्या I think इस साल एनर्जी टॉप 4 तो होगी फैक्ट्स In a good enough spot for sure. And again, these crossfires on the post plant. अरे नंबर से खत्म अरे DRX, of course, any opportunities they're going to get to exploit incredible advantage that you have post plant as attackers on the B site. It's so difficult to retake the B site on bind. One of the hardest. अभी DRX का यहाँ पे बोनस राउंड है छंजी come on show something. That is going to be something that DRX can really prod into. Now, for a bit of an explorer on the other side of the bind attacking map है ना Trapwire just over cyber cage, and yeah, Stax is going to clear it, grab the orb. You're going to see Meteor the goated gamer bundled into Stax if possible, of course, to get that thrash up and बस available. अंधा लग रहे हो A lot कुछ of भी firepower to back up this DRX hit after a flawless in the previous round. Flashback with that Vandal. We're going to do some damage. Oh boy, they're getting aggressive. The double face. He's भाई bro he has what finds the भाई ये क्या हैक थे It was like he saw them through. Somebody else playing forward. Now the Dizzy connecting. On the 2. Texture trying to swing out. Can't stop. The player nor that Nice Texture. Fine flashback, however. Oh my god Texture. Falling to the wayside. Texture. भाई Texture ने smoke के through मारा उसको Boombot in towards lamps. 2 players on the opposite side there. Stacks only holds on to 4v2 his come on Spectre, but rotates back through short. Grabs himself a bulldog. वो एक फ्लैंक आ रहा है Let's go Lakia The post plant set up. Lakia baby Approaching come in on from come on behind. easy round for Rock yeah good round जेंजी सिर्फ एक बंदा मरा है क्या बात है good round अल्ट आ गया टेक्सचर का भाई टेक्सचर ने क्या मारा भाई Given just enough time to reset, allow the plant to go down. That's okay. भाई रोस्सी भाई कब आएंगे जी में वापस उनको पूछना पड़ेगा ना यार वो तो There's a really good combo here between the fake out and the Dizzy that catches ये देखो भाई ये था kill W टेक्सचर भाई Texture and company there to bail him out, and then he's able to find a kill of his own. एक नंबर Really टेक्सचर good भाई stuff there. From Texture, who's now got a showstopper टेक्सचर पे as अल्टेट well. और Stax स्टैक्स के defines पास his भी thrash. अल्ट है भाई एग्जीक्यूट के लिए वो भाई ये नहीं मान रहा ये अल्ट कर रहा है लेकिन अल्ट के लिए कोई है ही नहीं पास में पीछे से किल रेडी Not DRX take a ton of damage, able to bank up a decent amount of money
On the वो backside. लाइन अप कर रहा है मंचकिन वहाँ पे मंचकिन नहीं क्या है वो फॉक्स 9 Aside from that, Take sure, those. off the rim, spotting them, pounds them down. Fox 9 just completely गेमर है बे blown गेमर है apart. Rush now, checking forward. It's way up here towards Garden. Nothing spotted though. Calls it back to get the recovery on it. Lakia starting to rotate now over towards this B site to reinforce. बस को एक किल मिला तो अल्ट आ जाएगा. For Buzz, if you can get that, really would be a nice feather in the cap to try to make these executes go. भाई अगर अल्ट रहता ना इसका As well, Thrash chasing in towards the site, gets slowed up by that trap wire. Can't dive भाई far enough कुछ into the इन्फो ही back नहीं line. मिला तो भाई ये साइड बैक साइड आ गया ये व्हाट बैक साइड स्मोक में टीपी किया इसने Sets up the gate crash on the exit spot. Texture as well, tries to go for the challenge. भाई Texture बस able to क्या get out खेल the रहा fight. है Plant is in. 3v2 with DRX in the lead. It's coming down. Worry about somebody potentially being in the corner there. Paint shells not finding much value there. Flashback jumping अरे यार भाई बस कैसा मारा already arrived in the site, says, well, I guess I'm going to try to play this one out and hope that I can find some तेरा hits. पास मुझे जीने ना दे Always sent, tap onto the spike, लग not गए ready for Stacks to be pushed up right alongside him. It would seem, and okay. अरे माँ कसम We'll shake you there स्टिक for a कर रहा था वो moment, but still able to find the round win. DRX maintaining the lead. And Stacks क्या मालूम वत्सल भाई Karon's own smoke against him there to sneak into the side of him with a good timing. Nice गुदराम भाई लोग लाइक मारिए सब From the side of Buzz. ये देख भाई क्या किया ये This time. ये टीपी किया ना सीटी में सीधा Teleport to the back of the site. When things are a little chaotic at the front, he's in the back. And this is something that makes DRX so fearsome with their Yoru on this map. You saw it against Fnatic at Champs last year. और भाई आप कैसी हो मस्त हो That Yoru so tricky to keep track of, and they're so ये good VCT at timing चैंपियंस on the मास्टर्स gate लॉक इन crash in अलग-अलग है particular. हां वो स्टेजेस है अलग-अलग उसके You have been able to handle it. And that's where that series ended. There was nothing Yeah, after VCT that. सब सेम है VCT का फुल फॉर्म है Valorant Champions I thought Tour it was a best of one, right? Yeah. लास्ट में चैंपियंस होता है ना Get absolutely blown to pieces. Smoke dissipating here over at B-Long. Check on the corner. हाँ मॉनिटर अभी फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है जल्द आने वाले स्टॉक Damage you can in fact deal with a classic. True भाई हेलो भाई इको राउंड है भाई ये जेंजी का भाई लोग Buzz now चैट up the pace. Just क्या ये मैप जेंजी हारेगी There's going to be one within the tube as well. Can report that it's going to be this guy. Where does he decide to pop out though? Flash being sent to Dizzy. अरे भाई कितना ब्लाइंड किया उसको ओ नाइस ट्रेड्स भाई 1v1 1v2 जेंजी के दो बचे गन उठा ले भाई गन उठा ले गन उठा ले नाइस दोनों के पास गन है नहीं एक के पास ही गन है नहीं इस पे गन नहीं है नहीं गन है नाइस टेक्सचर द गॉड GENG not letting DRX streak ahead. They keep it close. हाँ चैट ये वाला मैप कौन जीत रहा है बताओ Really solid hold against all this utility. ये वाला मैप कौन जीत रहा है जल्दी बताओ Buzz gets so deep, gets so जरूर much देखूंगा ज़ेरा भाई and you start to think that this Toti round could gamer just be whitey DRX texture. in the bag, but somehow, some way, Meteor ए भाई क्या लैग हो रहा है just going absolutely bonkers with these sheriffs. Him and Munchkin and Karon all getting involved. This is something that. What are you doing, guys? Well. Yes. That's it's a good question. That's Korean for I'm having fun. How about you? Back out of the shower and narrow. अभी बराबर है क्या देख On sightlines on Buzz. तेरा दीदी सॉरी Texture, you can see he's देखता हूँ इसके बाद देखता हूँ if he can just लेकिन ये गेम के बाद देखूंगा ज़ेरा दीदी he destroys it in the end. Love to get a neural theft I would love to watch for sure. But it's Meteor stepping in and he finds one. Karon अगर आज नहीं देखा तो हमारा फोटोशॉप स्ट्रीम होता है ना रात में उसमें देख सकते हैं भाई साहब बस कुकिंग Spike now on the ground. At least Karon is going to be here. That Texture should be rotating back over. So now the plant going to be coming through. 1v2 भाई लोग बस भाई ने दो मारे अल्ट नहीं यूज किया यहाँ पे कैरन ने प्लांट करके वो टीपी आउट कर दिया ओके Sets up another gate crash. अरे भाई Buzz now on for the ace. I believe the third that we've seen today in total, and he also has a dimensional drift. He's just going to pop it.
भाई सामने वाला ऊपर है. Drift he goes, but Texture, he's got more than enough time to try to peel off of this one. Sends out the flash. He's got the off in hand. Buzz will be able to get it. An ace in round 6. DRX move up Texture ने 4-2. dodge क्यों नहीं किया यार no, flash? Buzz is letting him know it on stage. He just भाई stood इस up, कर दी इस भाई इसने. flexed his arms, pointed him out. छी यार. Unbelievable Buzz. I'm sure we'll see it in the सबसे replay. grand tournament कौन सा होता है? Man, what a start Champions. to this map already for Buzz. 11-4. Ridiculous. Jeez, Buzz. And the way he's utilizing his utility here, I mean, he has everything in the kitchen sink to throw at him, and he uses it to perfection. The gate अभी बोल भाई अभी बोलता है. बस बोलता है अभी बोल साले. क्या बोल रहा था? Brilliant from Buzz. भाई यार जेंजी का एक बाय आ रहा है एक सेव हो रहा है एक बाय आ रहा है एक सेव हो रहा है. That I was having qualms about coming into this series. As far as डॉज किया तो भी हाथ ऑपी हाथ में आने से टाइम लगता है. नहीं उसके हाथ में ऑप थी. so incredible. वो क्विक स्कोप मार सकता था अगर डॉज करता था. But this core of DRX and Buzz in particular is it's just always been good at stepping to hyper aggressive. भाई टेक्सचर का शेरिफ अच्छा. Crazy duelist players on the opposite side. ए पे जा रहे. Back to so many of the matches that DRX has played, that Buzz always goes out, goes down fighting if DRX falls. He is constantly rising to the level of his opponents, and he is just tremendous in so many rotate regards. करो ना please rotate करो ना. अरे भाई क्या मारते हैं भाई. But he's showcasing a lot of variability in his agent pool. बेचारे ने पीक कर दी भाई. गलती हो गई भाई. सॉरी बोल रहा रहेगा वो. हील कर दे भाई लाकिया भाई उसको. He's dropped down into the site proper, perhaps make it happen, but now Lakia himself. कैसा मरा लाकिया? Picture here. ये भी मरेगा बेचारा. Towards lamps. Force him forward, and Khelraay will be able to take advantage of that scenario. Khelraay baby. Oh my Texture OP. The sheriff finding flashback. Mako. Nice and big ult. Big ult. Oh shit. Nice. अरे दो मरे. It's a Barnum. Khelraay comes up with. Oh my God, Khelraay. Finish it. And oh man, how? Major mistakes here as well. Some great shots coming through to get GENG this round. कैसे मारा? GENG is just now Munchkin's getting involved. They are really jawing on stage. Yeah, they are talking some smack up there. Thrifty. Start turning this into some like wrestling. अबे उसने अल्ट में दो कैसे मारे भाई? मुझे वो नहीं पता. Showmanship we got going on here. That ain't right. Judge gamer भाई. Unreal. Texture OP भाई. Texture का क्या important frag था वो. I mean, we've seen it, but today already, two of their round wins. Sheesh भाई on the Khelraay. backs of just ridiculous sheriff shots. I mean, helps that the orbital strike happened there. That was a little bit of a. तीन नहीं अल्ट में दो मारा वो. DRX, but अभी माको पे अल्ट है. it all started with Texture. अभी DRX का बाय नहीं है. Heads. Now Mako's got an orbital strike of his own. I mean, you have so many. भाई अगर DRX decide की तो ये राउंड में निकाल सकते हो लोग मालूम. With GENG, I mean, you have the Seekers. You have decent utility to potentially. You all push करेगा योरू क्योंकि उसके पास short ही है. Gate crash, Thrash to clear sight. Gate crash goes into U-Haul, Buzz in alongside. A spot there gives Meteor a kill to Foxy. ट्रिप तोड़ी. ट्रिप अब तक तोड़ा भी नहीं है. Oh what a shot भाई Meteor. थोड़ा ओवरकुक हो गया. अभी उसके ट्रिप्स डाउन हो गए यार. भाई बस का पोजीशन बहुत क्रेजी है यार. ओ दिख गया? नहीं दिखा शायद. टेक्सचर. Munchkin ने मारा. Shot. Last shotgun. Killed off is just a bucky in hand for Buzz. Round it. Much of anything. We are tied up at 4-4. 4-4 हो गया. Hold here from GENG. Meteor getting a lot of value out of that camera. एक बार चिगमा फेस कर दो if you are radiant. GENG and setting himself up nicely for a couple kills. Texture so solid, so sturdy with the operator throughout his long tenure as a professional Valorant player. So for Texture and Lakia here, back in those DK days, I mean, getting just brutalized by DRX. Time and time again, that's revenge has got to be on their mind. Of course, Solo and Lakia were able to best DRX back in 2021 to get themselves to Reykjavik. Munchkin भाई को दिखा क्या वो? मतलब भाई कैमरा. अरे भाई क्या मारा है फ्लैशबैक गेमर ने. साइड से कैमरा तोड़ा भाई उसका. फिर भी एक्सपेक्ट किया यार. कैसे भाई गेमर लोग होते भाई ये लोग. अरे यार भाई मारो भाई. एक बंदा मार रहा है सबको. तुम क्या फायदा.
Last one left here on the site. Here within 2. Oh my god, भाई क्या entry लिया है? Their own mosh pit, but comes up with a kill. भाई crazy, Still with an operator. crazy round by DRX भाई. No casualties. No casualties. 2v5. Seems like this is just going to likely result in a save in the end here from GENG. Especially with that orbital strike in play. Chewing gum face लग रहा है. चुप बैठो सालो. इतना अच्छा तो भाई चिगमा face है. Absolutely the right call. You just have. Buzz will push this. Okay, never mind. Just बस भाई flash करके peek out करो ना. एक बार please. अरे यार पीछे आ रहे. Maybe take a step back. But if he gets a kill, that's one. और नहीं देने भाई सामने वालों को. True. You're not wrong. 2.5 so far. We'll try to keep track of those. Trying to pull a Forsaken there. So the end spike will go off. And DRX narrowly keeping themselves in a lead here. 5-4. I know. In play. There's another neural theft available here for Meteor as well. यार मेरे को वाटर पार्क जाना है बे दोस्तों के साथ. मैं लास्ट वाटर पार्क है ना कब गया था मालूम क्या? 9वीं या 10वीं में. 4-5 साल पहले गया था मैं वाटर पार्क मालूम. Genuinely 4-5 साल पहले. उसके बाद वाटर पार्क गया ही नहीं हूँ. मेरे को वाटर पार्क जाना है. Be all over. Never know where those gate crashes are going to end up. Stacking a few members here. The op, along with Lakia, trying to set up for a pick. Potentially. He goes. Oh, the Dizzy though. Really nice check. Being watched for, but quick eggs hit. It's flashback actually taking a little bit of spam damage back over here towards. है ना apps बनाएंगे और फिर जाएंगे भाई. Pushes up, clears out the cam. Does get a snake bite out of Munchkin. इंडिया के वाटर पार्क में कभी मत जाना. Oh bro, sorry bro. अच्छा तुम सिर्फ USA के जाते हो क्या? तू जाना आगा से. क्या इला? इधर भी अच्छे रहते टट्टी. They're content to. नहीं bro, मैं सिर्फ है ना USA के वाटर पार्क्स में जाता हूँ bro. कैसा ना वहाँ पे slides. Oh my god, these slides are so aesthetic. क्या बे? Thwarted by DRX. Still Lakia hanging out here. Poison cloud up for DRX. Bit of spam. Smoke's coming down now as well from Mako. Clear Gaming, welcome back to the power. Really trying to attacking smoke find any room to maneuver here, but you do have a Viper's Pit. You do have that orbital strike. Smoke देखिए क्या भाई लोगों? The wingman to get the plant down. वो smoke से ऐसा walkie करेंगे और flash out करेंगे वो लोग. Launch the nades as well. Angel trying to slow them up. Flush out of the tube here. The orbital strike does come down, but the first one to fall. Lock in with the kill now. Karen going to be taken out. Nice side. Oh my god, flashback. अरे यार 1v2. Eliminated, and that's just the Viper who needs to rotate over. Welcome Clutch Gaming. Clutch भाई stream करेगी नहीं बताओ chat. 10 seconds left. Stream करेगी नहीं आज Clutch भाई जल्दी बताओ chat. There's still 2 more rounds to be played out. Surely he doesn't invest the pit here to try to get himself over to this defuse. Cam is set up and all. Doesn't get the dart in though. As shot भाई यार ये flashback बहुत अच्छा खेल रहा है भाई. I'm gonna flush you into the open and कर रहा 10 मिनट में. Let's go W Clutch भाई, I love you. What a shot from him. Let's go. Let's go. We've seen some filthy shots these last couple rounds with flashback. Foxy9 fully blinded up. Oh भाई क्या मारा है. Ready for the second. The peek out the smoke. Aqua Magic आ जाओ गया हूँ. One of the best trips भाई. हम लोग 9th में थे और हम लोग गए थे Aqua Magica. Bro, that was one of my best times of my life, you know. Aqua Magica जाना. Like genuinely one of the best times of my life. मैंने उतना enjoy किया ना अपने दोस्तों के साथ भाई. इतना ज़्यादा. क्या राइड्स थे भाई, क्या राइड्स थे वहाँ पे. Bro, there was like insane भाई. मैंने कभी वेटा एंजॉय नहीं किया हूँ बट एक्वा मैजिका गया हूँ भाई और वहाँ पे जो मजा आया था that was insane. सूरज वाटर पार्क और शांग्रीला तो भाई दूसरा घर था, वो हमेशा उधर ही जाते थे हम लोग. और टिकू चिनीवाड़ी मुंबई में हो बीच जाओ ना सीधा. अरे वाटर पार्क की बातें हो रही भाई. स्ट्रीम करो क्लच भाई, ये सब में क्या रखा है. That's the first thing I thought of when they had those white gloves on. I'm like, are they going to do some मेरा भाई तेरे मौत. I wish they just put a golden light in one of the briefcases. वाटर क्या होता है? I live in Rajasthan. Please explain. भाई ये जो कभी outdated हो गया भाई. मैं राजस्थान जाके आया भाई. उधर मैं वाटर स्विमिंग पूल में डुबकी मार के आया हूँ. More rounds we played in the half.
Gen G can bring this back to parity. Stax just checking again. Trapwire has been in that place before. Foxy not gonna win that. Nice one, Munchkin! Getting the better of him and actually not even taking any damage for his efforts. Fake teleport. I mean, Foxy was pretty well aware that that could be a possibility, just could not find the aim. Munchkin swung just a little bit wider than he expected maybe, and Spray eluded him. Flashback does have a neural theft, so does Meteor. एक नंबर क्लच भाई, एक नंबर. Find a kill either side in a place where you can get to it. Trailblazer sent through the teleport. भाई अपना और एक फोटो है देखो, वो ऐसा अपन दोनों बैठे डिस्कस कर रहे. वो वाला फोटो अपन ने डाला नहीं अब तक, वो डालेंगे अभी. Roll with this execute. Boombot going to be backed off of. No information given over in that regard, but nobody really moving for the side of Gen G. Still in this 3-2 split. Oh, the Hawk. बस का अल्ट आएगा एक किल में. बस और लिया है क्या? He's noting that there's somebody lingering there. His paint shells ready to go here from Texture. Sends it out, Wingman. Nice fight. fight. Yeah, able to find him. Buzz taken down. Not getting much there from Meteor as the plant is going to be interrupted. 20 seconds remaining. भाई क्या पोजीशन है Meteor का? Meteor! Nice! Meteor pushing up out of the smoke, managing to find Stax. No! Nice! Nice! There, but Lakia Good round, good round, good round, good round. This round very much gets away from DRX from Well the outset. played Meteor. भाई मेरे को लगा Meteor मरेगा, अभी उसका बैरल दिख रहा था. Lucky there, his gun was sticking out of that smoke. Stax had an opportunity to potentially punish him. कभी but pool didn't में फाट notice it, किया है? didn't नहीं बे. recognize it in time. Didn't see that something was amiss. The gun blocked it just enough, but Hi Harsh भाई, उम्मा. kind of a what if for DRX, but dimensional drift. मेरे साइड वाले वाटर पार्क, मेरे साइड वाले पार्क में भी पानी भरा है. All right. Is it eligible to be called a water So park? there's a Viper's Pit thrown down by Munchkin. You have one of the best ults available to deal with it. ऐसे तो बारिश के मौसम में पूरा मुंबई वाटर पार्क होता है. Mask is on. The fake out. Spots him. For a little bit more. Looks like he's going to be happy to try to just go for spot there onto the Viper in the back, but चार जन स्पॉट हुए भाई. it's over towards short. Curious to see. Is Foxy9 getting tagged? Nice one, Texture! Texture coming up with the kill. Stax away. Stax as well. कैरॉन के पास क्या जज वज है क्या नहीं? He's not eating any damage here as the double push up from Lambs comes in. They're looking for the crunch, but a little bit of a delayed reaction. Nice. On the shot, on the aim there to the backside. It's going to be Mako. अरे यार! कैरॉन! Re-reveal going off. So they spot out Meteor and Lakia. Spike planted. Plant in low HP bars here for Mako and Stax. Flashback at full HP. Trying to spot with the cam, see if he can find anything. भाई लाकिया एक मार दे अल्ट आ जाएगा. Yeah, ओ ग्रीन बॉक्स. Trying to find a straight connection here onto him. भाई विनेबल है यार, बहुत विनेबल. Mako swinging the corner, looking for a little bit more. Now sends out Oh, this Molly is full flash here. nice. Into space, but Meteor just running across the flames, ends up getting taken lower and lower. नहीं यार. We'll be able to find the last two kills. 7-5 at the half. DRX out in front. How in the world does Mako get away with some of those kills from U-Haul? I mean, just absolutely finding three back there. What looked like it was going to be a really challenging round. You could see DRX was struggling to find comfort to get this plant down. Like you said, Stax had taken a bunch of damage. Things were looking गेम really खेलना tricky. ज्यादा I फन mean, है कि I like देखना. the way that अगर Buzz is मैच able to एकदम create some बैक एंड space फोर्थ using अच्छा his चल रहा है तो ultimate and देखना the ज्यादा flashes फन है. and then bails out. You know, it लेकिन diverts a वो lot काफी of रेयर Gen होता G's है attention तो खेलना ज्यादा toward that फन है. link, but after that they were still stuck. They still didn't feel like they had the opportunity. And all भाई of a sudden, सपोर्ट Mako Gen just G starts mowing people क्योंकि down on the back of भाई the site, and it's like, पता oh, नहीं यार, मतलब ऐसा DRX ऑब्वियसली जीतेगी ऐसा मालूम है सबको, ठीक है. तो भाई मेरे को ऐसा नीचे के कुत्तों को मतलब अंडरडॉग्स को ये सपोर्ट करना अच्छा लगता है. What kind of setups they have as they get ready to shift over towards this attack with a buzz on the Yoru. A very hot start for him. A little bit of a fizzle out with the rest of the team there to kind of pick up what slack was had. That ace was otherworldly from Buzz. Just phenomenal stuff. चलो गाइस, नाइस हाफ. अभी अटैक करके दिखाओ भाई Gen G. टेक्सचर भाई अपने टेक्सचर्स दिखा दो. टेक्सचर घुसने वाला है हुक्का में. मेरे को ऐसा क्यों स्मेल आ रहा है. डायरेक्ट Foxy9 के ना टकले में फ्रेंजी घुसा देगा. Kind of left him somewhere towards the end of that half. Let's see if he can find it again.
That ghost. He's going to have to be Johnny on the spot because Texture's got 2 blast packs and a frenzy. So I think we know what he's going to look to do here as the barriers get ready to drop. And shields to back it up. So funneling in resources to Texture here to try to open this poison cloud. Oh, they're going to pause. Okay, so not the full-blown rush here. Oh, Meteor भाई long पे मचा दो. Meteor भाई long पे मचा दो. अरे मर गया यार. Push it all from Texture. He's right behind him. Nice. Going to push in. Texture able to gun him down. As the Viper now gone, Stacks to that forward push out towards Fountain. Does come away with a अभी kill long on जा a रहे बे meteor. तीर चारों. Now GENG just going to cut noise and start drifting away from the site. They're worried that maybe Stacks had pushed into their spawn area or towards that area. Did not. So now they're going to identify that. Rethink how they're going to attack this round. You do have a camera waiting right around that corner. Catch a glimpse and maybe follow up off the trap wire as well. Things are down short, so it seems like overall DRX fairly cognizant of this, but can't afford to try to send any rotations quite yet. Entori है भाई, Entori अच्छी है. Ends up going down. My eyes are down. The rotations starting to come through here, especially with the spike now getting planted. Spike planted. दो जन U-Haul खेल रहे, एक default, एक shower. Happy to sit back, wait for all 4 players to get over here towards A. Flashes नहीं है बस के पास अच्छी बात है. Stacks के पास फ्लैश है भाई. माको के चारों smokes बाकी है. हैं? Try to make this happen. या एक ही बाकी है. अच्छा एक ही बाकी है, एक ही बाकी है. Khelraay's got the molly. Nice molly. Send it out. Got the approach here as Munchkin push in on the back of the dizzy. Timing looking great. Managing to find the 1 position. kill. The fuse getting started. Buzz stabilizing. Nice one, Munchkin. Takes down Texture. Snake bite now. 1v2. Invested here from Munchkin. Has that ball so अरे very यार low. ये कुत्ता यार ये बच्चा भाई. Will be able to go ahead and take him out. टट्टी बच्चा साला. With that wingman still in play there. That frees up an extra gun to keep track of Munchkin. Really nice timing here off the back of the Dizzy. The Dizzy goes up and immediately Buzz is pushing the corner to follow up on it. Getting huge impact right on sight. And able to keep Munchkin doing any more damage. And a judge now for Foxy. But he's not over at Hookah this time. He's भाई shifted बच्चे को over भाई towards the front of गेम short बजाना है A. किसी दिन भाई. पिंगमैन मिला ना मैं उसको खाने वाला हूँ भाई. To deal with some of this. Orb going to be an easy claim. मजाक से हटके. 4 stacks. No contestion. Good night, Defender Vassal. in hand. Just doing a little bit of checking, but slow push up. Mako somewhat aware. बस बोल रहा बहुत हंस रहे थे ना जब सूटकेस नहीं खुल रहा था. Certainly spotted it now. Texture trying to flip it back onto him there. Couple sheriff shots through the wall. He's got that potential smoke. I was going to say, you can cut this off. Make things difficult for GENG to get any info. Not seeing anyone on the back of sight yet. घुस गया भाई ये पे. Judge awaits. They love to funnel people over into this. मंचकिन यार मत पीक कर वो करेगा फ्री में पीक करेगा. नहीं यार लेकिन क्यों ही करेगा वो पीक. You're gonna be aware. Munchkin has some snake bites. Oh, flash in the turn. Nice! That's gonna be the kill. Munchkin able to collect the weapon. Now Hey, he's against Buzz. Buzz just a little bit faster. Puts him down with that bulldog. Backs away, I believe, a cancel there on that Trailblazer. And as Nice one, Texture. Mako goes down, that's the gate crash across the opposite side of the map, but GENG are actually funneling over here as well. 2 players try to slow them up. Flash goes in, but Buzz is just so damn low. 28 HP remaining. What a flash. भाई क्या flashes है भाई बस के. Finding 1, low HP there on Meteor. Nice one! Still in play, Lakia able to take him down, and now it's all on flashback. Spike planted. Have 50-50. Good round. He had gotten that swing. W round, W round, W round. Let's No chance go. whatsoever. So they managed to answer back very nicely. Dropping the pistol. Double round, double round, Just such a great timing on that flash. Catches Foxy completely in the face. भाई Cannot टेक्सचर react to it. सॉरी वो U-Haul वाला पिक बहुत इंपॉर्टेंट था. मेरे को लगा GG हो गया भाई उधर ही. That he could have tucked into potentially to hide himself, but he was in the middle of swinging wide, and it cost him. And maybe cost DRX. ए भाई लोग मुझे बताओ तुम में से कौन नहीं छोड़ो बाद में. Orb looking to be taken. Buzz just trying to get that gate crash online, or that dimensional drift, I should say, online. Does take some damage though. Thrash for stacks, so. तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे. Go a little bit sideways for GENG. If there's a gun or 2 gain, who knows? Might be able to find a way to use it, but
Right now, kind of a cypher अब duel बताई दो, over in नहीं, showers, trying to out-info each other here, but you can see वो कुछ Meteor well aware of his दूसरी opponent's बात चल रही tricks. थी. Gonna clear it. Nothing a flashback can really do with just a ए classic. चलो इको राउंड है भाई इनका. भाई स्टैक्स के पास एक साल से अल्ट नहीं है वो. So far just cam for cam as the creep up comes through now. Up short, texture. Nice backing up here. नहीं यार मत. Please यार, please ऐसा मत करो यार. Classic. Texture finding another one, pushes in from behind. Oy, Finds the nice on to Foxy babies. as well as Buzz. Maybe an opportunity here for another ace to come through, depending on how much he wants to push for this one. Smoke dissipating, not going to spot much of anything. Trailblazer. Sure how much it saw, if anything at all. घुसके मारो 2 ही जन बचे. He's hungry for it, that's for sure. Textures. Know that he's उसकले कले उसकले कले कामे कामे denying him that ult going to the next round is paramount here for DRX. उसकले कले कामे कामे उसकले कले Still pushing though. उसकले कले उसकले कले कामे कामे उसकले कले. ओ भाई साहब एस नहीं हुआ यार टेक्सचर. अरे 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 Trying to टेक्सचर. rotate back into the site and go down to the spike. भाई टेक्सचर क्या गम मना रहा है भाई. From short will be able to take him out. GENG. रोने लग गया टेक्सचर. Very nice केस rally नहीं back हुआ thus उसका. far here in the second half. Themselves within touching distance, tying us up. Yeah. ये इन्वेंट It's किसने really किया good गाना? awareness here मैंने. from Texture. After Foxy gets that kill, he's just pre-firing the corner with his Bulldog. Even though Buzz is there, not much Buzz can do. He gets taken down pretty quick. एस था यार टेक्सचर भाई क्या कर रहे हो आप? भाई साहब क्या नाच नाच के एस लिया है. I mean एस हारा है. वो कैसा नाचने लग गया था भाई ये. Well, he is not happy. That's my ace. He wanted that ace. कब आ रहा आपका ऑफिशियल सॉन्ग सुन सुन. This has been a सुन good सुना day for अतिक्या player खंडाला. camps. Yeah. I'm having the best day. Gift makers are going to have a whale of a time. It's going to be so fun. Well, now, like 50 साल बाद गेम खेलोगे क्या? हाँ. He's rolling. 50 years later. 50. 50. क्या आज खेलेंगे आज? ये गेम्स होने के बाद. 4 assault rifles for GENG, so a lot of damage to be done. Foxy taking a scrape as he tries to go for the jiggle peek, jump peek, and pays the price. टेक्सचर भाई अल्ट करके बता दो एक. प्यारा ऐसा अल्ट करोगे ऐसा सिस्टम है. Back towards the car, probably afraid. Play that hookah right now. आ रहा He's been bullied in there. अरे अटक गई. Didn't know what the hell he was doing. He gets taken out. Foxy 9. Let's get some revenge for that little scrape coming in. Now he's Nice blind, nice flash. one. Nice. Nice. अरे यार माको. Be there for the finisher. So still bloody, not clean at all here for the side of DRX, but they do manage to stop GENG from chaining together 3 rounds in a row here in this second half. That trap wire once again worth its weight in gold. We saw it. Yet on the scent earlier. Now this time around, Texture falls victim to it. Oh, भाई साहब क्या ट्रिप थी यार वो. feels so good, and then they line up nicely for Mako. Good timing. भाई आज से ना मैं हर क्लच के बाद ये करूंगा भाई. On DRX to bail each other out there. He's setting it up a little bit further forward. Now, thinking about भाई रिकॉन फैंटम आई है स्टोर में. सिंगुलैरिटी के लिए वेट करूं या ले लूं रिकॉन? सिंगुलैरिटी के लिए वेट कर. able to get a bit of an economy going. The other side, DRX is a few players pretty low. रिकॉन से पक जाएगा सिंगुलैरिटी से नहीं. Trying to play off the one way there. That's such a narrow little bit of space. Trying to work off of here as the wall comes in and he saw the gun barrel. Just new. Yeah. Foxy getting the kill, the snake bite stop. Nice one, Lakia. On the B side, however, Lakia and Texture one apiece. Nice. Now Karen as well getting involved, takes out Stacks, and that breaks open the site. अरे भाई ये ट्रिप बहुत है यार इसके. Rotating around. Neural Tap comes in and chases immediately on the back end, taking down Meteor. अरे यार 1v2. भाई टेक्सचर निकाल दे यार टेक्सचर. Nice. 1 HP है टेक्सचर please. Has to reveal. Spike stuck at backside. He's so low. He's got a pit. But that would be so damn bold, but he's got the headshot as well. 2 HP, no problem. Foxy gets it done. Unbelievable from Foxy there. That is so difficult. Texture had read that initial setup so well, but he's just so ready for that angle. Is Foxy just anticipating it the whole way. Flashback, saying, "Nuh-uh, cannot teleport there."
Oh boy. भाई क्या है भाई ये Foxy? Now things starting to get a little bit dire for Gen G. It's one of those rounds that does not feel good to lose at all. No, that's a painful one. Really Texture feel like टॉटी you should गेमर have that चुपे one, no doubt about it. कुछ भी एक क्या उसने मिस किया तो टॉटी गेमर हो गया हाँ साले Dimensional Drift, Viper's Pit, Thrash. Makia does have Seekers. Doesn't want to commit him just yet. अबे स्टैक्स अल्ट नहीं कर रहा अभी उसका फिर भी जीते जा रहे माँ कसम स्टैक्स पहले ही मर जाता है मालूम क्या एक्चुअली Because the smoke goes down though. Double flash भाई लोग लाइक मारिए जो लाइक नहीं कर रहा है ना वो सबसे बड़ा टट्टी है इस दुनिया का because you can gate crash. Fake out, and he's just gate crashed right back up into heaven. Clear on the dizzy, recovered however. Texture makes his way forward. Molly at the ready here in the hands of Blanco. Spray just. भाई लाकिया को लगा वो So very low, 36 HP remaining here on Gen G Sky. Buzz has arrived to reinforce. Now you can dimensional drift. This is so scary now. You have a lot of utility you can combo off this. Let's see, it's 1, 2, 3. भाई वो मार सकता है अगर ये डॉक किया तो ओ अच्छा he's faking he's faking लाकिया smarty baby Exit right around here and then jumps right back out. 4 जन स्पॉट हुए बी पे 4 जन Rush forward now, getting ready to come through. Seekers. ओ अल्ट किया वो लाकिया नहीं ये Dex connecting on the multiple players so far. Somehow nobody dying, but as I say, that's Dax. Bro, what? Nice. Will be able to take him down. अकेला साइड है thank God nice as well. 2v1 Foxy Knight now arriving as the pit expands. नहीं Dax turn, he gets tucked into the corner. Nice. For him, but he can't get the kills in. माँ कसम ये चश्मों में ओमनी वाले गुंडे लग रहे हो 2 rounds still separating them from tying us up. Yeah, I mean, a lot of flash is going ऐसा both भी ways. एनिलेटर भाई But because Gen G is able to get up ऐसा to ना that tube, they've got so many players able to cover so many angles from up there. Stacks. ऐसा बोलने का ना अभी भाई को Some of his aim, but it's just not enough. There's just too many players. And Mako swings wide on his left-hand side. There's just so many players out there. W annihilator भाई for the 23 months support. टाइम आउट आ गया भाई लोग टाइम आउट आ गया स्कोर क्या है 11 है क्या 11 है या 10 है 10 है ना 10 है हाँ 10 है भाई 10 है कम ऑन भाई जंजी कम ऑन गेट दिस प्लीज गेट दिस जंजी प्लीज जंजी जंजी प्लीज Expecting maybe some mollies, some other stuff, but I don't. Thank you, Gyomi. Genji disrespected it and walked it anyway. गुंडा होना बुरी बात थोड़ी है मैं तो अच्छे लग रहे हो कह रहा था ऐसा बोल रहा है It's tough to hold behind that tube without an extra angle, you know, from elbow or something like that. And Genji's able to bulldoze their way through. गाना क्यों हटा दिया स्पॉन्सर वाला चालू तो है ओह अच्छा मैंने मेंबर्स वाला बंद किया था रुको 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 अभी चालू करता हूँ अभी चालू करता हूँ तो स्ट्रीमलैब्स में मैंने बंद करके रखा था बे DRX seeking some stability, but likely not going to be found here in this वो round. मैंने चालू ही नहीं किया क्योंकि 50-50 गिफ्टेड कर रहा था ना एक दिन बंदा वो We've had tons of them here today. Yeah. Well, and I mean, this is just another map in this kickoff story for Gen G. It's hard fought. It's so difficult all the way through. You know, they've been fighting tooth and nail. Every single match has been a best of 3 that's gone the distance, right? And so they have played max maps for the most part, except against Zeta. But they have been just fighting tooth and nail to get here. And their aim is, you can see it's so good. And against an opponent like DRX that is well known for their setups, just भाई मैं राउंड नहीं देख रहा हूँ रुको मारो मत एक दूसरे को रुको मारो मत राउंड नहीं देख रहा मैं Cover that Sheriff was one of 3 that they brought into the round. He's able to find it. His texture goes up on top of the box here. Flash is coming through. Not कर दिया update. Buzz will be able to get Meteor. The texture 2v3 भाई नहीं है भाई जिताओ यार ये राउंड प्लीज जिताओ Last 2 alive for DRX. 2v3. भाई कैरॉन तेरे पास 50 साल से अल्ट है मेरे भाई Both of their hands. कैरॉन मरने वाला है स्मेल आ रहा है नहीं कोई पीक नहीं किया अच्छी बात है नाइस भाई ये लेकिन ये तो लो है अरे शिट नहीं यार कैरॉन अल्ट है तेरे पास वो दोनों बने चुकी है अरे यार Flashback with 3 on the Sheriff. Will get the defuse. They will get the round win. They move up to 11. As I'd like to issue a formal apology to Gen G, I think I
might have spoken this one into existence. What have you done? I mean, one of the other really interesting storylines coming into today's match, right, is the rookies. It's Flashback versus Khelraay. And Flashback is really good. And you can see it in the player cam down in the bottom after that round. He was pointing at it, pointing to himself like, that's right. क्या मारा है यार उसने, क्या मारा है भाई, कैसा भी मार रहा है भाई, कैसा भी. अरे भाई क्या हाथ में क्या लगा के आया है बच्ची, कुत्ते माफिक मारे जा रहे भाई वो लोग. Obviously subjects of much scrutiny coming into the season here were DRX. Yeah. ये मैं किधर विफ किया भाई, ये क्या लिख रहा है भाई, नाइटबॉट हगरे. To just re-inspire hope for the squad. It has a lot of that similar feel to the old DRX squad. It's just, it feels like it has a little bit more explosiveness. It feels like they're willing to go for Stacks भाई इस राउंड में उनका अल्ट बनाने वाले देखो. Reward plays. I remember that Rolling Thunder with Stacks and Flashback on Split. That really made me think, okay, these guys are pretty confident, not just in their ability to read the game and do the things that they normally do, but also अच्छा लग रहा है, पर हमारे घर के पास कोई ऐसे ही चश्मा पहन के आता था और चप्पल जूते चोरी करके जाता था. Stacks never over-aggresses the angle. Flashback is right there to punish Stacks' initial damage onto Lakia. So comms are good. Everything seems to be pretty solid for DRX, but Gen G, don't count them out just yet, folks. They can pop, and especially with these sheriffs in hands, we've seen it a lot here already on this map. It's been a lot of time spent here. Spike for a while was just 30 seconds dropped left. back a connector, brought forward in towards Hookah, but not liking the amount of util that they're seeing dumped here on this B site, so it's going to be a full pivot from Gen G. Camera taken out. Flashback spots Munchkin. Gate crash actually expiring as well here for Buzz, who cannot have a fast join in. Here. Low time remaining. Spraying through, Flashback able to find one. Meteor with a headshot, taking him down. Nice! Zero down, and Khelraay gets a piece as well. Orbital strike to try and delay. And it has. The plant did not come through. The round could not be theirs. DRX will move up to 12. But my God, what another insane effort from Gen G. Plant नहीं हुआ. Yeah, they're cracked with the sheriffs. But that is absolutely a fact. Seen it so many times. If it just wasn't for time, I mean, Stacks getting that initial kill to drop the spike, and then Mako quick to rotate over to get that orbital strike into play to make sure that they guarantee themselves around. But God, if there's who is the IGL of DRX and Gen G? Gen G का maybe Gen G can get there, but it just took them so long to finally feel comfortable enough to try for a plant. But now Caron IGL है Gen G का, क्या मालूम? Got the showstopper, you've got the orbital strike, and you've got to get this round. Chat बताएगी मेरे को नहीं पता. The Dust kind of featured Mako earlier coming into this series was अबे Meteor है ना शायद? Just the thrifty win नहीं पता नहीं भाई, पता नहीं. Significant has been from them thus far. Continues the trend in that direction, but now big entry, but there it is into the spider's web. They managed to clear this out. Gets released from his prison. Showstopper couldn't find value. Night side! Flashback still hovering nearby, just on the other side of that smoke screen. Ends up getting taken down. HL's at the ready as well. Could find significant value. Cutting it down for the entry. The swing onto the corner. Buzz just swinging out behind his clone. Able to find one kill before getting critted out by Meteor. Lakia holding from guard for one. Stacks a little bit snappy. Takes down Meteor over at elbow. Nice blind. Ski and Foxy 9 now. Nice! I say that. The kills will come in. Gen G. DRX का stacks है. Okay. Not being dissuaded after having the clock run down the previous round. They keep themselves alive, and in this one, they continue to do damage to DRX's economy as they look to claw this back now and take us into overtime. This is a fantastic recovery here from what looked like it might be. आज भाई मैं लाइक कर दिया हूँ. अब बोर्ड्स का पेपर अच्छा जाएगा क्या? हाँ. इतने टाइम से अगर लाइक नहीं किया था तो भाई तू फेल हो जाता. अच्छी बात है तूने अभी लाइक किया. Flashback there probably wishes he could kind of rethink that. 50 बार मैंने विफ कर दिया भाई. Congrats. Hello. Caught by that rocket. Got a little too aggressive with his positioning and paid the price. The great news here for Gen G is you did not have to invest that orbital अच्छा बाय नहीं है भाई DRX का. और जब भी अच्छा बाय नहीं रहता यार तभी क्लोज आता है गेम. पता नहीं क्यों. किसी को खेलने ही नहीं आता भाई. खेलने ही नहीं आता किसी को. Now DRX, yes, they've got ultimates, but the guns aren't so good. Guardian for Flashback, Stingers, a Sheriff, a Frenzy, and a Ghost. I mean, it's a little bit of everything. Gate crash ready at backside, but just dead quiet. Until the walls come up. Cage is popped.
Was jumping back through his texture, gets himself Tax का ulti retake के लिए. on the high ground. Flash in the back, nothing noted. No positions given away whatsoever. Oh, the spot. Not punishable though. No, it is not, but the plant does come down. 5 men set up here in the back end. This trap wire Ult आ गया. dealt with. Seekers now being sent free. Munchkin creeping forward. Oh, And there's the nice tank. texture. Does go out on a watch. Is he connecting? And Shit, Mako Mako with that दो goes to मारा. hand, managing to Okay. find 2 kills. दो बचे हैं. Damage Nice. stacks. Last बचा है. Nice. Munchkin will be able to collect. GENG now joining their counterparts at double digits. 2 rounds to go until we hit overtime. Come on, bhai. That is a Come on, nice come on, job come on. by GENG. They're slipping the net this time of DRX. Able to utilize their smokes to gain control of U-Haul. Feel a lot more comfortable getting that plant down with control of the front half of that site. Then just utilizing that great weaponry. Munchkin pushing forward through his own smoke. Try to gain some space, gain some ground on GENG, make things a lot more complicated. And yet again, you're still holding on to that orbital strike. It hasn't had to be used. You do have the dimensional drift from Buzz. So gate crash out. Let's see if he wants to invest it early, or it's going to be more of a wait and see. They're really, DRX, going with their strong side over towards the B side this time. A side is going to be the weak side with just the 2 players. Tiger Swirtle का है, hello. Given GENG have been, widely running down the clocks here. Yeah. I think holding that dimensional drift for बस का अल्ट आ रहा है क्या? अबे बस के पास अल्ट है. कौन से दिख रहा नहीं था मेरे को. tough round है ये. Out of the showers here. Yeah, he's never Moxie, been full season. crossfire. भर दो यार इसको. Nice. Goes with the cyber cage. He readjusts the aim. And Texture is able to get him. He'll come through. Engine spot हो गए यहाँ पे. Lockya can get over here towards this raise. They will be able to clear it up as Foxy now tries to retake that former position. Ends up getting spotted by the boom bot. Buzz just taking the TP. Snaps back over towards that defender spawn. That was an attempted sort of crunch play there from DRX. They had a couple angles holding outside the showers. Buzz trying to get in there just a little bit too late. They lost flashback just a little bit boring earlier. match बनते. They would have liked. Foxy 9, oh what a shot. The Dragon across finds the headshot now. He's trying to escape the orbital strike. Does so, but he's out into the open. Buzz able to come up with 2, however. Before Karen trades भाई क्या blind डाला रे बस ने वो. Here backside goes for the jump peek. Have noted him. Here's the cleanup though. Blind. Dizzy going in. Karen trying to hold it. What? Karen! One by one they swing into him, and one by one they fall. Karen stands tall and gets GENG up to 11. He got hit by that Dizzy. Not sure how much it worn off there, but man, oh man. It looked like he was dead to rights. It looks like it was going to be map over, and now we're 1 away from overtime. W's in the chat! Get on the goat! Insane. The economy's not great here for DRX. There might be a timeout coming. भाई साहब, अबे यार ये क्या टाइम आउट किसने लिया है भाई? ये साले DRX वाले यार. हट यार. अबे खेलो ना भाई ऐसे ही. अरे यार मोमेंटोनिज्म ब्रेक कर रहे भाई. इच्छा गावत है इच्छा. अबे यार क्या मैच चल रहा भाई? क्या मैच चल रहा है? तो मोमेंटोनिज्म ब्रेक कर रहे भाई अभी. भाई मजा आ रहा है. चट मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? भाई मजा आ रहा है फट्टे मजा आ रहा है. अभी विषय ऐसा है कि DRX के पास थोड़ा सा है ना हल्का सा कम बाय है, और जब भी DRX के पास कम बाय रहता है ना वो लोग जीतते हैं भाई. Just disgusting. The way that these players, DRX rookies, have stepped in this. भाई ये बस पेन घुमाता है भाई, बस पेन घुमाता है, बस पेन घुमाता है. क्या लिखा है भाई इसने? ये देखो कुछ तो लिखा है इसने. There's been very little. I mean, yeah, flashback. Okay, you think back अभी to the उसने ड्राइंग बनाया है. ये लोग early ड्राइंग events looked a बनाते little हैं. shaky. Since then, he's been very good. ये लोग ड्राइंग बनाते हैं भाई अपने एनालिटिक्स में. It was because of some of those shakier performances that we I like saw Curious in Wings. the off season that it तो was भाई a अभी little देखते bit क्या होएगा. more difficult for people to buy into, this major change-up from DRX to whether or not it was going to end up holding water for the team. But since Pacific started, it's been looking better, but GENG right there alongside him. And GENG spamming here because they know there are 2 big ultimates that are 1 away. And Foxy does grab the other one on the other side of the map. Mako. Timing there. Oh, Mako. Stacks backs off the angle to Mako, getting punished for it. He needs to try to stay alive, try to find a kill. That would be that orbital strike coming into play. Texture clearing out the Dizzy, but now it's going to be full flash stacks. Nice trade. Nice! Takes out Mako's Karen again, looking to do it once more. 2 quick kills, 2 more players remaining.
spam shots coming through. I know exactly. Poison Orb gets lobbed in, and that's going to be a neural theft infested here from the side of Meteor. Flashback holding onto his own. Oh. Bro, वो क्या tripwire है यार? Still standing in position. Flashback able to find that elimination. Foxy worried about the approach there from main. Spots one. One enemy remaining. Nice. But now it is all on Foxy. Mama, मेरी पटरी है मम्मी. Time running low, swings out the pit, has it in his hands, draws back down to the rifle. Get a little bit scattered here. Nice! Even though they line up for him, he's not going to be able to find the shot. 12-12, we once again go to overtime. Oh, Switching sides. amazing stuff. Overtime. Amazing stuff. You just gotta love what you're seeing today. These opening maps, both have been just absolutely insane. Khelraay, great turn there. Khelraay, I love you, bhai. I love you, Khelraay. The shorty to Bhai, soften Khelraay, up. yaar. And the finish from Meteor. I mean, just crazy how back and Khelraay, forth bhai. these were. But Foxy could just Khelraay, never bhai. get in a position where he felt comfortable to throw that pit down. Was just never allowed to do so by GENG. Can DRX coach talk to And team they if rattled GENG off takes time out? Yes, he can. 4 in a row, 12-8, and you thought, well, all right, GG go next. Nope. So much of that has, in these last several rounds especially, been Khelraay. Yes. Insane clutch potential from him. As flashback. Obe, ye kya bacha hai flashback? He's going to be lucky to only take the amount of damage that he received there. Fake out, lock it as well. Spraying wildly, getting some damage across. Dizzy not going to be finding too much of anything there. But Mako down. Ek so very number low. bhai Lakia. 2 HP for him. Tax को भी damage दिया उसने. That's a huge win for Lakia there. Did a ton of damage. Oh. Khelraay taking a smidge. Nothing too serious. Flashback though. He's trying. It's be. भाई flashback बहुत अच्छे से हुका लेता है मालूम. Break things open for the team. Open up hookah. But Munchkin is just watching it like a hawk. Sees the gun barrel. Takes the shot. It's the first one, but the follow-up is going to be good. Now the ball is going to be thrown Nice! down. Khelraay spamming in towards Garden. Foxy9 eliminated, and things starting to very much spiral out of control. सब लो है भाई overheat मत करो बस. Looking out for blood, shifting position, gets himself right up in front of the entryway as another smoke comes down. Just keeping things obfuscated, just keeping things damn near impossible for the side of DRX. And yep, full send TP, but now you're being ushered over towards Meteor, towards Texture, who have Good been round, good lying round, in good round. wait. The push starting, Cage coming down, the wingman. His head right on the entry. The spray through, Buzz taken out. Meteor looking for 3. He will have them as GENG get a flawless start to overtime. Get themselves up to map point. It's just tremendous cagey play from Lakia, who's just so good about making sure that he's able to get out of his potentially tricky situation, takes no damage, does a ton of damage. भाई लाकिया ने निकाला है भाई round. भाई ये लोग गेको का flash कैसे तोड़ते हैं यार? Attempted attacks, and then Meteor with the great सब कुछ करते हैं भाई ये लोग सब कुछ करते हैं. shower door has a phenomenal angle. Doesn't even give the wingman a chance. Doesn't give anyone a chance. That's the Meteor we've come to know and love so far. Oh my Wow, sub nice one texture. Have a healthy start to any of these rounds. Down to 10 HP now. Trailblazer instantly cleared here from Stacks. माको की सब लोग वाटी लगा रहे भाई. Let's see if anything budges. Nice भाई अच्छा patiently खेल रहे. No healing anymore with DRX's comp since they switched to the Gecko. Snake bite lob. भाई क्या मॉली आया है वहाँ पे यार अच्छा. Trying to get some shots in, trying to get some damage. भाई कहाँ से मॉली डाला है वो? Crash and take it back over towards Haven. Munchkin. Nice one, Munchkin. Foxy9. Nice lurk, nice lurk. Blind on a 1, but Buzz had already been. 5v4 है और माको 1 HP है. Can't swing to try to find a punish. For now, just. Oh, they are going to a say. Very much help reinforce this A site where GENG are making their way over. अबे यार ये लोग healthy है. Over towards flashback. They are pushing a shot as well. So oh my god. They are. That's going to be the contact Nice. coming through, and they are not ready. Flashback now trying to tuck into the Nice. He swings ahead of his crosshair, takes him down, and it seems like Yes. that's just about be it. Come back, baby! Sax and Mako need an absolute miracle to keep them in this and try to find a reset. The Dizzy moving forward, not going to find much of anything. Sax has been taken down. Mako would have to ace clutch with 10 HP, and it is not going to happen whatsoever. It's in the name, GG. GENG take map 1, 14-12. 6 rounds in a row at the end to take it down.
when it looked like all hope was lost, this squad came together and once again bounced back. What a We saw against game! Team Secret on Icebacks that just What a the game! willingness, the perseverance of this Gen G squad has been outrageous so far in kickoff, and it is happening once again. Well, that's Bind out of the way. We, of course, have Lotus coming up next, but first we'll have the Analyst Desk break down the action from Map 1. Oh, and I think there is a lot to break उसका down. कले That was कले an game था भाई unreal ये तो. performance from Gen G, closing it out on Bind, उसका कले 14-12 against भाई DRX. साहब. And this was DRX's map pick. ये दीदी ने गुरदान में क्या पहना है? Jaws, like, pick up your jaws from the floor. अबे ये क्या पहना है? खतरनाक लग रहा है जो भी है, जो भी है. अच्छा है, ई स्टाइल अच्छा है, ई स्टाइल अच्छा है. भाई मजा तो आ गया लेकिन हाँ, मजा तो आ गया. अभी अगला मैप कौन सा है चैट? अगला मैप कौन सा है? अगला मैप कौन सा है जल्दी बताओ. अगला मैप कौन सा है जल्दी बताओ. हाँ ना भाई, जेंजी डीआरएक्स की पिक पे जीती है. हैंडराइटिंग सुधारो दोनों भी. मैं नहीं मानता भाई, ये क्या सेटअप है भाई. दो कैमरा इस पे. मैं नहीं मानता. चल साले, हाँ चल चल रे चल टोपी बाज. ए बस करो यार. क्लच के साथ एक मैच खेलो. आ रहे अभी चालू होएगा दूसरा मैच. भाई ये मेरा सेटअप है. नहीं मैं मानूंगा ही नहीं भाई, मैं मानूंगा ही नहीं. हट हट, इतना टट्टी सेटअप डाल रहे तू. शीश ओसा कले Ryzen 7 5900X with MSI 4060 Ti 600 FPS. भाई लोग इसका क्या रैंक रहेगा? 600 FPS आता है इसको. 600. ऐसे लोग है ना, ऐसे लोग इमॉर्टल जा नहीं पाते भाई. ये डायमंड में अटका हुआ है. चैट अगर तुम लोगों को 600 FPS आने लग गए तो तुम लोग का रैंक क्या होएगा बताओ. वाह 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 वाह, ऐसी पढ़ाई तुम्हारे. Radiant like you, facts. Radiant for sure. Ascendant, Immortal, Ascendant. 200 FPS बढ़िया है मेरे लिए. Radiant नो क्या. ए चैट एक है ना, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी. ये देखो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है. इधर देख रहे हो तुम लोग? इधर देखो. आ गया? इधर देखो. 17.9 के फॉलोअर्स है, ठीक है. और ऐसा भी नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ डालता नहीं हूँ. बहुत क्रेजी कंटेंट रहता है. ये देखो 7 लाख व्यूज रील्स पे भाई, मजाक है. हाँ देखो इस पे 50,000 व्यूज भाई, क्या मजाक है. ये देखो 50. ये देखो भाई, अच्छा कंटेंट है क्या भाई का प्लीज एक बार मतलब चेक करो. मतलब अगर पसंद आया तो मतलब फॉलो वगैरह हो जाता तो कैसा है, 18,000 हो जाएंगे भाई. 18,000 प्लीज. देखो काउंट दिखता है यहाँ पे. अबे यार 100 चाहिए बे. 100 तो मुश्किल है शायद. 100 मुश्किल है ना. 100 नहीं होएगा ना. 100 शायद मुश्किल है भाई. 100 मुश्किल लग रहा है. क्या बोलते हो? एक बड़ा है. एक बड़ा भाई, क्या बात है. किसी एक ने किया. वाह, 3 बड़े भाई, 3. छोड़ो भाई, छोड़ो. मेरे को लगा मेरी चैट तो मेरी फट से फॉलो करेगी. ये देखो ये लोग प्यारे हैं भाई. तेजा भाई, मुकुंद, क्रॉनिक्स, निक्स, रोल, फेक कॉस्मो, आशीष, ये लोग ही मेरे लोग हैं भाई. भाई इससे अच्छा तो फिर रील्स बना के रील वाले ही फॉलो. ओ भाई साहब, नहीं भी बहुत जन फॉलो कर रहे. बहुत जन फॉलो कर रहे भाई. ये तो
भाई फरहान भाई का मेरे को डीपी देखने का है, बहुत अच्छा डीपी है। ओ भाई ये कौन सी जर्सी है अय्या और मेरे को भी बिल्ली चाहिए यार। अबे क्या करिए? अरे माँ कसम बच्चे पे चढ़ जाएगी। कैसा खेल रहा है वो भाई, उसकी पटिया आधी तो कितना प्यारा है भाई। लव यू गाइस, लव यू लव यू लव यू। हो रहे 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 और 50 चाहिए, सिर्फ 50 हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? कंपनी अपनी हार्ड है भाई, कंपनी अपनी हार्ड है, कुछ भी हो। फॉलोस तो हो रहे। ओ भाई 50 बढ़ गए भाई, तुम लोग हार्ड हो यार। मेरे को लगा चमन लोग हो। सॉरी सॉरी, मजाक मजाक मजाक। ओ भाई क्या फोटो है यार, भाई क्या फोटो है। चुम्मी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कीप रैगिंग है। ये पुराना सेटअप है, अभी वाले में बस लाइट चेंज किया है। वाओ यार, ओ भाई ये क्या मस्त लग रहा है ना भाई। आप पे तो कटाना है। अबे ये क्या है बे, रुको। ओ भाई डम्बलेडोर की ये उसके पास, वो सकले कले मां वो इसके पास भाई। लेट्स गो भाई, भाई कलेक्टर है ये। शीश भाई, क्रेजी वे क्रेजी, खतरनाक। भारी सेटअप है भाई, भारी सेटअप है, मजा आ गया देख के। भाई कोई हेडफोन सजेस्ट करो ना, बढ़िया से हेडफोन सजेस्ट करो भाई, लोग सजेस्ट करो उसको कोई हेडफोन अच्छा। ये 50 बाकी है सिर्फ। और तुम लोग को लगता है मेरे को सिर्फ लड़के देखते हैं? We got ladies followers as well. तन्मय कुमार स्वेन, एक आइडिया, कुछ भी सालो। तुम जल रहे हो भाई, तुम जल रहे हो, तुम जल रहे हो भाई, देखो जल रहे हो तुम लोग, जल रहे हो, ठीक है, जल रहे हो सालो। जलो मत, ऐसे जलो मत, बराबरी करो। आ शेमड़ी, शेमड़ी का शेमड़ी चालू हो गया। Probably a bit gobsmacked after dropping their map pick of Bind, Action showing us some on newer looks, Raze, newer players, let's go. but ultimately fizzling out at the end. Gen Buzz G on Raze, let's। अबे persevering भाई लोटा in लगा that है बे। win. जेंजी का Now in a अटैक है position भाइयों। where they get a 2-0. And just incredible what we're seeing from both rookies. You know, Khelraay really stepping up at the end. A lot of exciting stuff for both of these teams in terms of their potentials and their futures. But right now, Gen G has so much firepower. Their coordination is really starting to pick up as they have played so many maps. It just seems like they're getting more and more confident. Oh boy. Oh boy. Immediate contact. Prowler coming out. They swing in. Flashback able to come away with one, but they're not out of danger No. yet. And Shelton trying to peel back that pressure, and it works a treat. 2 kills come in. Tagged up members here on the side of DRX, but
still are alive. Mako now moving forward here in front of Mound. Swinging out, just trying to catch Munchkin, but eventually giving him a bit of respect, will back away. That's a huge start for DRX. They don't lose a player. Take a smattering of damage across the board, but still coming out with that a huge win. Still trying to work their way into the B site. Munchkin's really trying to keep him interested, and that leaves Buzz for the moment by himself with अबे 10 कोई HP bot here लगा on the दिया site. भाई कोई bot लगा दिया भाई By joining. Still that Viper utility covers that front door, so gonna be a little bit tricky. Ooh, shoulder spotted. And it's gonna be Mako. ए भाई taking the bot fight, मत लगाओ winning ना it. please As the one goes into the back, pushing forward here into B. मत करो यार ये सब मत करो भाई bot वोट मत लगाओ यार please हाथ जोड़ता हूँ यार 49 that hasn't taken any damage. Zach's about to make contact here versus Lakia. He's able to win out the fight. Shot goes through, but a Please, boy, caterpillar bot mat smoking lagao here yaar. from Karan. Manages to slink his way down in towards stairs. Unpunished, paranoia still in hand. This is gonna be monstrous. Last player standing. Let's go though. Foxy One enemy here, remaining. dead. Lakia picking up his third. The Prowler goes checking over towards stairs. Nothing spotted. The drop down. Mako finds himself on side and Lakia. भाई 4K निकाला है लाकिया ने लाकिया love you bro love you keep fighting G fighting for a nightfall already. GENG, they take the pistol on Lotus. It's just brilliant heady play from GENG. Knowing that Stax was going to swing wide into spawn, it was pinged out, and Lakia was just waiting for भाई him लोग to come around that वो corner. सही में Had फेक him just अकाउंट है dialed in. वो एक लड़का And then है he's able to swing हमें back to the लेडीज side. I लोग mean, नहीं just देखते what an शायद entry they भाई had ये onto the B side as well. Finding those crucial kills, using that C's to clear Stax's angle so they could isolate the battles on the other side. Now DRX is going to try to push in towards Rubble. He's got control, but GENG isn't going to bite on any of that bait. They're just clear enough to be able to rush Buzz forward, have him grab that orb. Now he's hightailing it over towards C. Nothing but classics for DRX. An outlaw for Meteor. He's, as we kind of expected, leaning into that gun quite a bit this year. Locking with a Vandal, 2 Guardians. I mean, there's so much firepower here for GENG to work भाई with. बस अगर एक मारा ना तो मेरा हो गया Spotting one. nice blind Foxy, what however, oh my almost god gets two. भाई why Mako does get the finisher there. okay thank god Mako finding a second before भाई getting dropped. 2v1 है ये स्टैक्स निकाल सकता है राउंड मालूम क्लासिक से नहीं निकाल सकता Meteor, that नहीं outlaw. भाई मीटियोर पे आउटलॉ है भाई क्या मजाक है क्या हाँ आउटलॉ है भाई आवाज से डर जाएगा भाई कांपने लग जाएगा but imagine Does he want to send out the haunt? Does he want to reveal it? Jump up, swing out of the corner. Meteor. Vandal निकालिए भाई ने जेब Will be से able to put it to use. 2-0 start for GENG, but a hell of a lot closer to the anti-eco than we might have anticipated. Yeah, I mean, this is pretty good damage here for DRX to do. Made the economic advantage that you can get off of that round much less impactful. Yeah, you're getting some good kills, but waiting right around that corner was Buzz. Waited for the first to go by. चिल्ला मत बे भाई लोग कितना चिल्लाते हैं यार ये लोग Hitting a ton of heads. Tremendous damage. Now, just Guardian. ओ भाई क्या रिकॉन डाल रहा है Couple sheriffs though as well. And क्या वो रिकॉन फेल हुआ those slouches when it comes to those, they have turned a lot of rounds around. Probably saved भाई that उसके bind, हाथ को but- लगा देगा Oh boy. Oh, yeah, the jump forward. Nice Up to trade. the corner there. Was Karan. Nice Help find I mean Stats. अच्छा DRX मार रही है क्या Quick little jump peek. Getting the भाई spot 1v2 है dodge is Meteor. Love to recover a weapon that isn't just एक the फ्लैंक आ रहा है sheriff. यार What? Around. राइट में गन है क्या Corpses scattered on the वैंडल floor मिल गई 1v2 6 bullets in it. अरे Stats भाई a little bit snappier in this one. 3K for him, trying to catch up. Last game कौन जीता? GENG. DRX will be able to close out the bonus. अबे यार देखो ना अभी फाइनल में है ना भाई लोग Good to see him picking up. फाइनल में वही PRX DRX भाई वही PRX DRX हैं वही फाइनल में जाने के बाद PRX जीतेगी बस वही होने वाला है भाई यार क्या है यार कंपटीशन देखना था यार PRX कुछ ज्यादा ही अच्छी है भाई Now Lakia though, with that early 4K, able to find himself with an early night. Early 3-0 होएगा भाई फाइनल कोई भी आन दे GENG भी आन दे DRX भी आन दे 3-0 भाई 3-0 भाई लेकिन GENG में है ना वो दिखता है क्या वो जो कैलिबर है ना Buzz, but right now GENG trying to take their time,
camera right on the outside of that door. Genji में वो दिखता है, मैंने देखा है. Trapwire right in the front. Let's see if they're going to be able to clear this. दोनों का बाय राउंड है भाई. देखते कौन जीतता है ये. See it right now. Yeah. Okay. Flashback just popped a shot right off the contact. Tag killer, Shimdala. Immense amount of information here. Stacks, man, sticking around to clear that turret. turret. तोड़ दे. Turret तोड़ दे. Stacks. Additional damage there. Fortunate to be still alive as Munchkin sending some shots. Still sitting on the paranoia as Mako. So Viper peek कर रहा है उनका. Were to reaggress towards A. Could be a little bit tricky, but GENG happy to take their time and make a little bit of a fake. C पे ये लोग फेक कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, A पे फेक कर रहे हैं. Spike C जा रहा है. Shifting in that direction. Smokes are down though. I mean, with Foxy and Flashback there, could be really, really tricky. Getting up on top of that box as well, setting up the crossfire. Smoke now in front of. अरे sound दे दिया इसने. Munchkin. Bit of a walkabout. Looks like maybe some shots between he and Buzz getting exchanged, and Munchkin now going to be backing off. Nightfall going in, Texture up and over the top, and somehow still alive. The kill not going to be found. अरे वाह, Meteor! That outlaw in hand still comes away with the kill and Stacks. 10 seconds left. Grab one and dip out. Texture right up in front of him here. 1 HP. The swing, it doesn't matter. He's going to be faster on the pull. Buzz 1v3. on the paint shell swings in. Round met with death. GENG. Not allowing for DRX to pick Round up it, round it. Right back into the driver's seat, 3-1. Sentinels ने हराया था ना PaperX को, but VCT में खेलते ही नहीं है ना Sentinels. That entry had to be dealt with by Foxy9 from Texture, landing right next to him. We saw shots earlier. वो भी finals ही था ना कोई? Texture just able to get deep enough and Sentinels versus PRX कोई तो finals ही था ना शायद? Foxy. भाई लेकिन तुम्हें मालूम two different gun barrels. अभी भी Sentinels versus PaperX होएगा ना? To win it, no doubt. Sentinels ही जीतेगी. Fired up, very animated this season. भाई क्योंकि वो John क्यूटी है ना, बहुत अच्छा है. अच्छा ऑफ सीजन की बात कर रहे हो क्या? Everybody from DRX not really in a position for any kind of punish at the moment. Your rifle here in the hands of Flashback is Meteor looking to watch from behind. There it is. Meteor मचा रहा है बच्ची, Meteor मचा रहा है. Picked up swiftly by Foxy9. But now looking for the repeat, trying to see if anyone comes in, and there's Mako. One shot set. भाई! Catch him off guard. अबे Vandal वाले को right click करेगा भाई ये! Now covering fire from Locky as well. हाँ मार कर रहा bro. Grabs the gun. अरे मूली कर दे भाई. भाई इसको मूली वेस्ट ही नहीं करना अपना. It's so much attention now from the side of GENG. भाई यार GENG cooking hard भाई. Barely able to just grab this gun. अरे वाह Meteor BT दे दिस भाई. The flawless. There's a Meteor. और गन भी चेंज नहीं किया. You might need an early timeout here. ए ऑफ निकाला है बस ने अभी. Stop this. तेरा बस मुझे जीने ना दे. GENG. सी पे ऑफ लगा रहा है. लेकिन ए जाएंगे भाई GENG. उनका ए अच्छा चल रहा है. Absolutely scary for any opponent when he gets sniper rifles in his hands. I mean, we knew when we saw this weapon. Yep. First thought was Meteor. This is going to be one of the guys. First thought was not Meteor. the guy. Yep. So far it's looking good, but they'll go A. Scoped rifles. We do have an operator in the hands here, Buzz, but still such a. यहाँ पे हल्ला करेंगे सिर्फ ऐसा लग रहा है मेरे को. Situated over वे here. बस पे अल्ट भी है वे. देखा हल्ला कर रहे हैं पीछे जा रहे हैं. Drift away from GENG. Well, you got to be concerned with that one way because the showstopper is also in hand. Come flying around that corner. है. वो लोग और साउंड देने वाले हैं सी पे and then they'll go there I guess. TP over to the opposite side. Prowler going to be cleared. Paranoia goes out. Bro leg shot किया. माँ को दो मारा. Before getting dropped. Oh wow. Okay. In the meantime, pushing forward here towards B. Comes up with one. Spike already grabbed. बी वाला पुश कर रहा है. भाई ये नाइफ काफी अच्छा है बे. और उसके कैम में शायद स्पॉट नहीं हुआ गया ये. देखा. Trying to creep his way up. He's been spotted. Takes an immense amount of damage there. Munchkin 1 HP baby. Still continue to push their way forward. Is the lockdown going to be invested here on this A side? 3v3. Shot sent. Connection not found. Flashback just. Oh भाई क्या कैम है वो? Out of this one. Cage triggered. Don't pull Mako. Placing swarm grenade. Doesn't. Double stack on these nano swarms. Been spotted. बस भाई पे अल्टीमेट है. ऐसा खोलेंगे ना भरदीस डायरेक्ट रीटेक है. ओपी खोल दो बस भाई खोल दो. खोल दिया. He's going for it. Sees him. Sends it. Meteor going to be taken out. 2 more players to go through though. Come on Karon bhai. It's your high time to shine baby.
Munchkin trying to apply some Nice! pressure. Buzz scoped in, pushing over towards Nice! the falling is Khelraay. Nice! And he's got it! Goat! A monstrous 4K. GENG are just not allowing for DRX to get themselves into this game at all. Oh, this rookie has just been lights out for GENG. A little bit of a slow start, and it has just been full throttle. Just like me, Karon, just like me. What looked like Just like me, baby. win here for DRX after only getting their win in the bonus. Since then, it has been tough, and Munchkin is just screaming, trying to get into the heads of DRX. Speaking of, we should say that there's a headset warning for all viewers for the remainder of this broadcast. That's a little bit loud. But I mean, can you blame them? Nope, not at all. They've been just destructive. And they're winning so many of their 1v1s as well. I mean, Meteor winning his battle against, I believe it was Foxy9 in mid, FE. All of those things going GENG's way right now. वो बोला DRX खोल is दिया. struggling to recover. हाँ? Uh-oh. Double swing coming through. Munchkin does. Munchkin भाई इसलिए इतना चिल्लाने का नहीं, हाथ हिल जाता है. Taken out by Mako, so weapon can be recovered. Texture getting tagged up, sends to the showstopper. What? Not gonna मरा नहीं find the वो. kill there on his stacks, but the fans up. Well, around Nice, the vandal in the hands nice. of Lakia certainly will. Texture gets another man there. भाई Meteor ने outlaw निकाली, मैंने देखा नहीं. Give it the deaths of his पागल है भाई comrades. Meteor. Mako gonna take that vandal recovered and swing back around towards the spawn. Has some money. Let's see if he wants to go hunting. तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे. तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीना ना दे. तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे. तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे. Texture here as well. And मर गया Snap here with Texor. it. 40 HP doesn't matter. Gets the headshot. Takes away all of that weaponry. And the onslaught continues. Chat, तुम लोगों के recommendation में मेरा third channel आता रहेगा ना अभी? हर्ष खेलराय clips. जरा सब्सक्राइब कर दोगे तो मजा आ जाएगा, मतलब कैसा है? Difficult right now. करके रखो उधर भी. For the side of DRX, GENG is beating them at almost every twist and turn. Coordination has been really, really good. A lot of time to practice for GENG. Yeah, one of the things that आता है ना. GENG was concerned about coming बहुत into जनों के today's आता है, match. मुझे दिख रहा है भाई वीडियोस के व्यूज के हिसाब से. तो भाई जरा उस पे सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दीजिए यार. हाँ? The other day when they were playing and he's like, we've already played so रिपोर्ट many कर दिया, maps. बोलता है कितना खराब है We're like साले. strategies. We feel like we're just digging, but that's kind of working because now that they're जिसके इस पे नहीं आता, जिसके प्रोफाइल पे नहीं आता ना, तुम लोग एक्सक्लेमेशन क्लिप्स नहीं, or in Lakia. एक्सक्लेमेशन क्लिप चैनल डालो. नहीं क्या है? देखो ऋषभ ने डाला, देखो ऋषभ ने लिंक डाला. 1.3 के लाइक्स, लेट्स गो. 1.5 के लाइक्स बेबी. The start was the firepower is crazy. It is just insane how good top to bottom this team is. And you know, you saw them. They've already taken a map off of PaperX. Something that T1 could not do earlier today. They're that good. And that gauntlet they had to run with RRQ and PaperX, Zeta and Team Secret. Oh boy. Oh, here we go. Odin go Burr. अच्छा भाई ट्विच पे स्ट्रीम नहीं करते क्या? नहीं, हम लोग 2 स्ट्रीम करते रहे अपने चैनल पे. एक 4 से 9 करते और एक 11:30 से 1-2 बजे तक करते हैं, अगर तुझे नहीं पता तो. एक्सक्लेमेशन न्यू चैनल डाल चैट में, वो वाले चैनल पे रोज रात को स्ट्रीम होती है. तो मैं ये मेरे 3 चैनल्स हैं, उन पे मैं फोकस करता हूँ, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं करता कहीं पे. The perseverance here from DRX. Impressive to say the least that they don't walk away from that. And the spacing so good Scathed here. at all. Yeah, no, I know. But the spacing so good from Buzz, dodging a lot of that fade utility. To be able to find that kill, setting up the trade-off with Mako at Baby Door. Very, very nicely done. And the pit over on the other side of the map, set up by Foxy9. Trapwire in there as well to give him a little bit of extra भाई टेक्सचर GENG wants none of it. टेक्सचर अगर मर गया ना तो ये राउंड गया. Forward, swinging the corner. Jeez. Isolate both of them. सॉरी भाई. Stacks and Mako both taken भाई down. सॉरी Now यार. the A site. Open for business. टेक्सचर भाई सॉरी यार. Was gonna try to swing in upstairs, मैं आप but पे the force orb तकल्लुफ setup कर still रहा there. हूँ. Now the pit going to be invested right here on the edge. Because he needs the no-scope, but he can't. 30 seconds left. Munchkin dodging the shot. Texture's heroics. Planted. Just keeping them so firmly in control. Gonna
3v5 potentially here. Absolutely incredible from the side. GENG Neural Theft will get another reping. Foxy just clear out on the util, trying to just make sure they can even get themselves over towards this spike. Texture going to be noted. Flashback swinging around here out of tree, but time is dwindling. Headshot found on the one. 2v2 चल रहा है भाइयों. The call comes in. शेव कर रहे शेव. शेव कर रहे शेव. He'll be able to find flashbacks, so it's just going to be Foxy 7-1 हो गया. 7-1. Trying to hold on to it as best he possibly can. GENG not allowing for that timeout to take hold, to have effect. DRX का mental down हो गया है अब. भाई मेरे को ऐसा लगता है ये attacking map है तो अभी DRX अगर एक भी round निकाली ना तो वो लोग का momentum आ सकता है. With the setup outside of A. भैया फ्यूचर में e-sport जाने का प्लान है क्या? Gosh, Texture. क्या मालूम ब्रो? मेरा फ्यूचर मैंने ही खुद ने नहीं देखा. Absolutely crazy. He knows it. Oh boy. He knows it. Kill them. Having a whale of a time up there. Yeah, I would be too. What a round too. It's widely, it's been a lot quieter for Texture. He hasn't really had to be that tip of the spear so far on the map. Buzz swings Oh भाई देखा बज़ ने निकाल लिया देखा. मंचकिन द लर्कर को निकाल लिया. अभी वो लोग सी को ही पुश करेंगे क्या? Never allowed to get there. Caught off guard there, Lakia. रोटेशन भी आ रहा है भाई. और भाई बज़ मचाने लग गया. अभी बज़ मचाने लग गया. खत्म है. Finding one Texture going for the entry. Comes in up over the top, vulnerable out on everybody. Just a little bit of damage taken. They get themselves onto the site. The plant now starts coming through. Let's just take some pot shots into the smoke. There's a swing out. Huge kill. Come on, come on, come on. Moving forward, trying to reinforce this position, but Texture, I mean, this is such a hard angle to clear. नहीं ये तो. Wide Texture finds another 2K, and flashback going to be taken down. Now it's all on stacks. The 1v2. The approach swings in, finds Lakia, but 20 HP. He would have to one-shot Texture here. Works him a little bit lower. Boombot has to be cleared. Swing back in. Oh my god! Why, what a clutch! What a clutch! To get themselves a second round win. Oh, dude. Can the operator be held? You can't kill a nightmare. Gonna try to run for it. And should just about miss it. नहीं मिला. So close. Again, good start here for Buzz. क्लिप चैनल और न्यू चैनल करके दो क्लिप्स है, दो कमांड्स है अपने. Executes these hits onto the C site. There is nothing Flashback and Foxy have been able to do about it. And I love the way that GENG gets aggressive towards Waterfall because they know the Nightfall is somewhere and potentially coming, likely to crash across that C site. So they want to try to get ahead of it. Now they have no idea that Stax is wrapping all the way around the back of the map. But still, I like what they did there, and that's why Texture can pick up those big kills and almost take another round away from DRX. This hot lineup again, sent out of B, continuing to. भाई बस कितना फॉरवर्ड ऑफ लगाया है. भाई बस का ऑफ चल रहा है आगे अच्छा. Translated budget ए पे इतना हल्ला कर रहे हैं. इन लोगों को अभी समझ गया है ए पे ऑफ नहीं है. Now, a little bit of presence noted. Another smoke going to be sent in. देखना पड़ेगा अभी क्या करेंगे GENG. टेक्सचर पे अल्ट है क्या? टेक्सचर पे अल्ट है. वो लोग बी भी हल्ला कर सकते हैं, मतलब फुल अल्ट खोल के आ गया. प्लान तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कुछ. ओ भाई फॉक्सी ने पिक करके मारा. स्पैम किया उसने. And there's no utility on the backside here for GENG to watch for this other than the eyes of Meteor himself. He just finally put down the alarm bot. Open the cover from behind. Mako about to encounter it. Does so. Clears it. घुस रहे बे पे घुस रहे ये लोग. For now, GENG, the call is going to be to try to just keep eyes focused forward as Showstopper at the ready. Wrap around the back. Foxy not ready for it. The punish not found yet. Wow. Able to take down Texture, but Good trades भाई. Immediately getting the follow-up punish. Showstopper. Wow, get on! Oh my god! Huge kill भाई. Oh jeez. भाई साहब. मेरे को लगा मार देगा भाई वो कॉर्नर में. The economy in such a dire position. TRX are going to have to call to save this once more. It's just amazing the way that GENG can find the timings and the weaknesses in sort of the pauses that DRX is taking to set up for their retakes. And it's so good because you know that DRX is such an execute-heavy team, and don't give them the opportunity to go for those coordinated hits. And you catch them sleeping a little bit towards spawn with that Showstopper.
they don't seem to be able to recover quickly enough, and that's something that GENG can do. They seem to recover very, very nicely. It's that individual skill on Showcase and the decision making and the play calling from Munchkin and company. Munchkin and company क्या बोलते हैं company कमा ले बहुत money. It keeps changing on me every time I ask. It's somebody different. But I think it's Munchkin right now with some side calling from Lakia's. The last I heard, that was my. ये Chinese नहीं है sugar Sagar भाई. That's the most important thing here. I mean, Texture going untraded for so long there, really costing them. And I misspeak earlier, you know, not the op, but the showstopper finding no value for Buzz. Just ये उसका screen blink कैसे हुआ रे? here for DRX. क्या बोलती चगुली? Nightfall. The channel to work with. ओ बस पिक कर रहा है, बस पिक कर रहा है. तेरा बस मुझे चिन्ह ना दे. On cleared. Continues to inch. Shot, baby. अरे भाई साहब. Come up with one, but now Munchkin. 2 for him. Locky as well, getting away with a kill. 5 round हाथ मिला दिए, 2v2 कर दिए. Start to a round where we find ourselves here in a 2v2. Flashback. T1 versus DRX में कौन जीता? T1 versus ये था बच्ची. DRX था. DRX जीती. 2-0. One side. Oh भाई लाकिया. Absolutely do. As the dart comes in. Flank आ रहा है, flank आ रहा है, flank आ रहा है. बस का. दोनों लो है. No shield on them. देख लिया क्या उसको? चैट देख लिया क्या? जल्दी बताओ मुझे देख लिया. अरे भाई नाइफ होल्ड कर रहा है. अबे लेकिन लो कर दिया अबे इसको बस को. Where does he go from here? Sees available from Lakia. He works his way up the rope. Lakia is playing this well. Around over to stairs. Was now pushing forward. First on C9 Oxy, very good player, bhai. Blast pack's gone, the paint shell's gone. Tap onto the spike, expecting him from coming out wide on the left. Swings in close on the right. Lakia, another 3K, another clutch, and another round for GENG. Now 9-2. Just brilliant. Brilliant from GENG. In full control over this map, almost since the get-go. Munchkin is so good. Been winning so many of these battles. 1v1s. Now yes, some भाई उसने बाय बाय कर दिया उनको. For DRX in that लाकिया ने उठ के बाय बाय कर दिया. हक दिया. कमबैक चालू भाई. कमबैक चालू. उधर हार गए गेम. उधर उठ के बाय बाय कर दिया भाई उसने. Not only to return to international हार गए. GG. DRX and force them to miss their first international since the first international. Yep. They've been at every single tournament, aside from the one that Lakia went to on new turn. Buzz taken down. Quick reply though. Mako able to find Munchkin here. And just what a story it is for Lakia. What a journey he's taken. It's been a rough couple years. Nightfall available. लाकिया DRX में था क्या पहले? If you could find that neural theft utilization, could really make this round a lot easier. समझा नहीं वी भाई मेरे को क्या बोल रहे हो? Khelraay goes looking. Mako hearing the cancel. Just jump up. Finds one. Knows that there has to be more. There are. Cleans up the kill. Snappy little Crazy भाई, clean Mako भाई, clean. Now going to be thrown into the paint shells. Get lobbed in his direction. The blast back. Oh, nice one by Texture भाई, clean. भाई Texture is too good भाई. Holding on to the advantage for now as the Nightfall crashes across, catching on to both players. Quick tap on the spike. Nothing spotted, but now the neural theft coming through. With a lack of audio, the paranoia certainly starting to set in. There's the reveal, there's the adjustment, flashback, onto the shot. Oh, hi. The follow-up. Texture ends up falling. DRX, very spaced out. Their round wins, but they get a third one as we go into halftime. I was starting to think it might be 10-2 again for DRX on Lotus. GENG would rather deal with a 9-3 curse. Yeah, I believe that is the truth. Ulele, usale kalam malolo. Usekene makurkure mole palasa molo. Ule kalamu sakuni le mole mokolo. Wow, GENG. Mole mokolo. 4 round wins away from punching their ticket to Madrid as well. Mole mokolo. Le makolo. Usakale kam ko pote kam kom.
चिकले पम चिकले चम चम चिकले चम 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 चिकले पम चिकले चम। भाई कल कौन-कौन मूवीज देखने के लिए गया था? कल 99 रुपीस में मूवीज देखने मिल रहा था। कौन-कौन देखने गया कल मूवीज देखने? But some Lakia fans as well. Bowing as well. Yeah, bowing to GENG there. There, they got the Champions Trophy drawn on that poster. That's a little ambitious, but I'm about it. I'm fine with it. Hey, you know what? I'll take it. They keep looking like this. You हाँ hold ना on यार to भी that भाई वो poster. कमेंटेटर्स भी वही बोल रहे थे ना अभी। You end up going to Champions. We can see it again. Yeah. Please. So right now, this has been so dominant. Get that laminated. 9-3. बट ठीक है। DRX. देखो ये टूर्नामेंट तो भाई किक ऑफ है। Pistol so far. एंड इसके बाद में भी मास्टर्स होएगा। ऐसा नहीं है कि भाई दिस इज द एंड फॉर एवरी टीम। Trying to run this one back, but GENG been looking so damn clean here on Lotus. Yeah, this just looks like a potential quick beat. लेमन शिमान उसका लेकर कम But only the alarm bot really to give any info over. And then Lakia playing position towards waterfall. Look at the spot. Not a lot he can do about this. Prowler sent, there's a jump in. Buzz taking some shots on the अच्छा way स्विच हो गया नहीं क्या? ओ अभी DRX का कमबैक आ सकता है भाई। A little bit more, but Sax अटैकिंग मैप। Khelraay turning back. Nearly gets the elimination there. His texture. 1v3 भाई टेक्सचर अगर ये निकाल लिया ना भाई मैं अपना इन गेम नेम टेक्सचर रख दूंगा। Going on the chase. He's just dropping down behind them. That was looking dangerous for a moment. दो मास्टर्स होंगे हाँ। HP bars gives him another little shot, another little kill coming through. DRX will be able to close out the pistol. Yeah, just trying to pick up the pace, trying to get heated up. If there's any team 8 मार्च से लाइन है ऐसे का। 8 मार्च से multiple times Achilleos. भाई Looks like they're पुणे down. में यार तुम लोग लकी हो सालो जो पुणे में रहते हैं। Say we ain't out yet. भाई मेरे को देखना है यार लैन। Think back to not only that Billy game at Champions. भाई यार पुणे जाना है भाई। You know the W. किधर डाला उन्होंने? WGS. तुमको देखने दो नॉट विन गेम। That Han was on? Yeah. I got it. I was gonna let you just let me search around. I'm like, no, मजे W करो something. सालो मजे करो। W key gaming, no, that's DRX. Aggressively pushing forward here outside of A. The suspect though, I mean, it's got कौन बोला 8 मार्च से? every single time they do knock the economy down from GENG. It's just how good they have been. अब तक बताए थोड़ी ना भाई। अब तक बताए नहीं उन लोगों ने कब से। Texture trying to hold the corner, and I mean that's part of the reason why. Shots fly through. Mako down low on HP. अबे अच्छा बाय नहीं किए बे DRX। Paint shell as well. Lob forward. Munchkin. Wow, Munchkin. Ability to get the kill on a Buzz. Real, however, now coming down as they flooding around the backside of the site. Flashback. Take out Khelraay. Picks up that sheriff, and now it is all on Meteor. प्लेयर ने बताया, bruh. Great aim on display. नॉटविन ने ऑफिशियली तो अब तक बता दी, प्लेयर ने बता दिया भाई। Will be the finisher as DRX. IPL देखने जाओगे क्या बता? The anti-eco. We've just seen so many great भाई लोग 30s. जोर से लगी है, जाके आओ क्या? Both just insanely talented. कमबैक आ रहा है भाई, कमबैक आ रहा है। अटैकिंग मैप है, DRX जीत रही है ये मैप। वेलकम साइक्लोनीज बेबी। I'm just gonna eat paint shell damage, push this poison orb. Bonus round on DRX. DRX ये राउंड स्लो खेलेगी भाई। Right click. Why not? It's that new GENG capsule skin, baby. Yes, Lion King. You too can do that at home. There's a rush forward, but Mark did come through from the Haunt. Swift back away from Foxy9 as everybody. हाँ यार आदित्य भाई, मजा आया मैच देखने दो। Turret, singular nano swarm, with Munchkin waiting in the wings. He's got the 2 snake bites, and that could very much come with the works on this entry. All the util goes flooding through now. Munchkin able to find one. Buzz taken out. Catches Mako, TPing up on top of the box. भाई Munchkin क्या प्लेयर है भाई। अबे 2 मारा उन्होंने। Just drifting back. इधर मारे बे 2। Oh nice. Oops. 2v2. Keeps himself standing. भाई फ्लैशबैक कलर। भाई अगर इसने एक मार दिया ना। नाइस। 2v1। ओ मर गया। भाई उसको आइडिया ही नहीं था। ओ अभी आइडिया दे दिया। ओ भाई ये स्टैक्स निकालता है भाई। नाइस डबल डिजिट, लेट्स गो। डबल डिजिट आ गया कोसे मोर। जी वेट, साउथ एशिया का नेक्स्ट स्प्लिट है क्या पुणे में? अरे शेमड़े, अभी जो स्प्लिट हुआ ना तो उसमें जो क्वालिफाई हुए ना इसके लिए प्लेऑफ्स के लिए,
उनका लैंड टूर्नामेंट होने वाला I like what Flashback is doing here, though. Taking a page out of Meteor's book. Like when I watch back this map in the VODs, Meteor's always hanging around the front of B there, getting kills, finding people unaware. भाई उठ के नाचने लग रहे भाई. Learning and finding some serious value, giving his team a really good chance. And Stacks Revenant almost again comes up with the clutch, but a lot of damage done. True Reapers The economy here poor. Just Texture able to carry over his gun, so it's Sheriffs and a Marshal. मैं किसका नाम भूल रहा हूँ? Jumps forward, Texture on the hunt. Real comes in. Buzz able to find two before getting taken down by Lakia. अरे भाई सब भर दिया यार. DRX ने. Pressure. Here he goes again. Drifting around the front. Footsteps likely. Maybe not heard actually. Grey Fox. No movement from him. The rest of DRX though making their way forward here onto the side. Meteor with that Marshal still. जा बघायला जा. जेवण खाऊन जा. चांगली मॅच बघायला जा नाही तर बोर होशील. All of DRX back themselves off and get situated here in tree. Tap on the door for Stacks to rotate out. lemon. नहीं एक्चुअली बोर तो नहीं होगा भाई क्योंकि है ना माहौल होता है भाई माहौल. एक्चुअली माहौल होता है भाई लैन इवेंट्स पे ना. क्रेजी माहौल होता है. ऐसे चीयर करते हैं ना भाई. क्राउड आना चाहिए मजबूत लेकिन. Shot from Munchkin. Can't quite line it up. 4 members still alive here from the side of DRX. पब्लिक आती है भाई. मैंने ना वैलोरेंट का पीक जब था ना तब भी लैन इवेंट गया था भाई और तब भी पूरा गांव आया था भाई मुंबई में. One away from the showstopper is Texture. कितने जन देखे ना मैंने. Away from some of the other big ults. और वो तो भाई प्राइम VLT वर्सेस G का मैच था वो. Keep your eyes on that. Those days भाई. Great haunt by Stacks. I never knew कि वो इतने rare days थे भाई. That GENG has had a bit of a problem dealing with. Doesn't seem like they really have the protocols in place to necessarily always be consistent in clearing it. But that's certainly something that should be pretty easily correctable for Solo. Here with a quick peek. He's fine. He's fine. Okay, he's fine. He's fine. Spotted a lot of players and Munchkin quickly joins in. हाँ उसमें मैच देखने के लिए कोई आया नहीं था ना. Last pack is sent. Prowler goes in. भाई मैं मैच नहीं देख रहा हूँ ढंग से अभी देखते हैं. Maybe the orb picked up there by Buzz. Now just one away from his own showstopper. Texture, I mean, joined in by Locky बहुत आगे का पोजीशन भाई सब लोग ए पे ही आ रहे वो लोग. Prowler to chase. There's the showstopper. Looking to send it, but it's just a bit short. Foxy9, 22 HP, somehow gets away. They're reading A. Stacks is going to take a go at this now. They get the rest of the squad. नेट खाया ना अगर फॉक्सी ने जमा हो जाएगा. Their way forward. Some utility being thrown both ways from the fades. Try to clear a little space. Still sitting on that nightfall is Stacks. भाई पीछे आ रहे. For that opportunity, I think they really want to use this on B or C potentially, but they want to find. Oh, they are going C. One of those closed space sites, get value, but. Okay. Good call of going back A. Yeah, a lot of back and forth here, with not a lot of time. Any value the Texture finds here could be the undoing of DRX in this round, but he's going to get dropped. Oh, भाई Texture को मार दिया यार. Lakia still hovering around Baby Tor, but Stacks. भाई उसका लर्क क्या है भाई B से? Oh my God. उसको लर्क मिल गया यार अच्छा. Breaking open the side spike, gets planted. Paranoia goes across. They get ready to go for maybe the double drop. Oh, nice. Managing to snap on the Buzz. What a reaction. Nice one, Meteor मार दी इसको. Stacks continuing to swing out. Nice. Have they overstepped? Mako going to be noted. Foxy9. दो ही जन बचे DRX के. Oh, nice. Pushing into the smoke. Taken down. Foxy9 now spotted. Meteor just toying with him. Nice. The wall. 6-11 baby. 2 more rounds. The fuse comes in. And GENG भाई लोग क्या अभी सेफ है? क्या अभी सेफ है जीजी लिखना? हाँ भाई DRX हार रही है तुम लोग समझ रहे हो? क्या अभी सेफ है जीजी लिखना? जल्दी बताओ. Stacks winning 2 crucial fights on the way into A, and then they're able to just kind of set up post plans and rarely do you see. Huge kill on the lurker. वो double flank हो गया मालूम? Drop down from Khelraay. Buzz just cannot quite react. Jinx नहीं कर रहा भाई 6-11 score. Then all of a sudden everybody starts winning their battles. And everything starts falling apart. भाई सॉरी भाई मैं दे देता हूँ. भाई मेरे को जोरदार मुती लगी है. फनाटिक ने 3-11 कमबैक किया था भाई. उसको है ना 50 साल हो गए अभी. उसके बाद कोई किया ही नहीं. होती है तू जान बेटो सालो. भाई पर आपसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता. आपका पहला प्यार है वो. आपका ही सुनती है. जाना फिर जल्दी आ. रुक अरे टाइम आउट होने ना मैच राउंड चालू होने.
भाई ये माउस पैड्स देखो यार, भाई सबके माउस पैड्स देखो यार, भाई अभी माउस पैड अपग्रेड करूंगा। मेरे को बताओ वो सबसे सस्ता कब होता है? वो जो माउस पैड में देख रहा हूँ ना, वो माउस पैड सबसे सस्ता कितने का मिलता है मेरे को? मतलब कितना मेरे को रुकना चाहिए तो कितने टाइम तक रुकूं मैं? हेलो अननोन, अभी 3.5 का है, ठीक है, अभी 3.5 का है, तो वो सबसे सस्ता कितने का मिलता है? GSRSC squad can frag out that they are capable of insane amounts of multi-kills. Just so many of their matches, you look at all their players and they're just putting up huge 2K, 3K rounds constantly throughout this kickoff in VCT Pacific. Showstopper for Buzz. क्या पनौती है तू कर रहे हो रे चैट में सालो, भूत मारूंगा। GENG respecting the hell out of it. अबे बस पे अल्ट है भाई, ये राउंड तो DRX का ही है। The problem for DRX is they need to try to get these भाई भाई rounds जोर से लगिए, जाके आता हूँ, जाके आता हूँ। the ults, but just given how things पता have नहीं gone, भाई, मैं that तो seems न्यूज़पेपर पे माउस चलाता हूँ। Okay guys, your professional analyst will be back in a second. Exactly. I mean, you just have to throw everything in the kitchen sink at it for DRX and hope it works. That's where you're at. You're in a situation where you can't give any extra rounds over to GENG. Showstopper and the Nightfall both going across. Texture spotted, Rockets going, Buzz able to find the kill with his, swings back around, takes down Lakia. 2 HP remaining for him, Khelraay still noted. Stuck here at tree, ends up falling. 2 ults for the round win, it would seem here, as Munchkin left scattering back over towards the C site. That can now come in, that's going to be a pit available here for the side of Foxy 9. 30 seconds left. Seems like DRX holding on for at least a bit longer. Shouldn't be a lot that Munch can say about this because his credit situation is not great, to say the least. So he is just going to have to wait this one out on the other side of the map, which is the Vandal left. Save it over for another round, scrape together. Should be most of a buy for GENG. DRX, finally, a little bit of breathing room. Nobody going down just yet, unless somebody goes hunting towards the C site. अरे यार हार गई राउंड, Flashback. हार गई। Considering angles, but हट यार, मैं नहीं था इसलिए GENG हार गई ये राउंड। Shit. मेरे तो जीत जाती भाई। With the financial viability to really try to go for the hunt, but they also know if he gets a kill, that's बाद में देखता हूँ ऐश भाई। for the defenders to use. Ultimately, it is just not worth it for them. So they won't over pursue. DRX in the gap now to just 4 rounds separating, but again, हाथ कौन धोता है भाई? GENG have, even if that retake comes in, lockdown Nightfall, great combo. मीटियोर के पास अल्ट है, चलो रीटेक खेलो भाई, रीटेक खेलो, राउंड इंपॉर्टेंट है यार, मैच पॉइंट पे तुम पे आना है जल्दी। तो भाई ये भी ओटी, भाई ये ओटी गया ना अगर, ये ओटी गया ना अगर। हेलो गॉड वैम्पायर, वेलकम टू द चैनल शेमड़ी। Cycling crisscross with the toxic हाँ ना यार आदित्य, Foxy been under pressure a few times in this spot. दिन थे भाई वो दिन थे। Much success to speak of. He's been bullied a bit in these 1v1s. He's still at the corner, but there's no one here to try to pill for him. As the swing comes in, gonna have to try to just back away. He's about going for the snake भाई उसको bite, लग रहा है decides एक not अकेला to. आया है, He's क्योंकि gonna है ना trap one, यूजुअली try to play टेक्सचर off of. अकेला पुश करता है, अभी 3 जन पुश किए हैं, इसलिए उसने मॉली नहीं किया। बट वो लोग आराम से ही खेल रहे, वो लोग इतना एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दे रहे, ये लोग सी प्रेशर करके वापस ए जाने का ट्राई करेंगे DRX। They're fishing for that Killjoy utility, but they couldn't find it. Both the Nano Swarm and the Alarm Bot are still on the floor, still active for GENG, so nice placement here by me. टेक्सचर और Keep it away इसने from some of the normal spots. लाकिया ने बहुत अच्छा पोजीशनिंग किया है, मतलब इतना फॉरवर्ड पोजीशनिंग लिया है। Makes it much more difficult for DRX. ये लोग बी पे फेक करने गए क्या? In this execute to avoid ताकि सी का गर्दी कम हो। really cause a lot of pain. Oh, this flash, bro. Smokes down here on B. Paranoia at the ready. As the door gets लोग tapped. बी जा रहे हैं। This is going to be the full set here on the pivot. Paranoia goes across. Karen just getting a bit of damage as that snake bite goes down. Nightfall now crashing across in from behind. भाई लेकिन अभी अल्ट करना इजी हो जाएगा वे काफी। As the pit is going to be invested, the spike gets planted without much time to spare. नाइस अल्ट, क्योंकि फ्लैंक वाले 2 जन अभी है ना हैंग हो जाएंगे।
Jumps back across. डिफेंसिव अल्ट भी आ गया, डिफेंसिव वाइप इसका भी अल्ट आ गया है Bites invested. वाइपर का. So they start inching their way forward here on towards the site. भाई क्रेजी खेल रही है जेंजी. Top, wary about the push it from behind, but he looked away at the wrong time. राउंड भाई, क्लीन राउंड, क्लीन राउंड, क्लीन राउंड, क्लीन राउंड. GENG. There was मतलब कुछ था ही नहीं. DRX को खेलने के लिए कुछ था ही नहीं लिंक के सिवा. और वो लोग लिंक में जाने के पहले भाई फोड़ दिया इन्होंने अंदर घुस के. It all comes crumbling down. That lockdown makes it so darn tricky. Unbelievable. It's just incredible. The decision making, the timing from Khelraay is just so perfect. Yeah. Doesn't look like a rookie, does he? Not at all. Doesn't look like a guy who's literally never played outside of ranked until this year, until he joined GENG. Oh. Stay focused. Well, DRX need to be strapped in for 5 consecutive rounds to take us into overtime yet again. There. Otherwise, GENG looking so poised, so dialed in right now. This texture will end up falling. Decent spray check. Mako finding the headshot. Takes him down. They look for a little bit more. Very suspicious about Lakia being just on the opposite side of that wall, and they would be correct, but they're not able to apply too much damage. Munchkin now also getting picked off. Munchkin, munching, nom nom nom. Still coming through, and it seems like भाइयों लाइक मारिए अगर आप नहीं हो तो. तेरा 16,000 का माउस नहीं है, 7,000 का. वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए वैसा दिखा. Towards B, that has been fully claimed by Flashback. So over they go. That has been given over to them for a little bit of extra work from Flashback. Once again, is winning some of his individual battles. I mean, there have been some times where it feels like GENG is just so good in their 1v1s, yeah. But Flashback has the shot. 8-12 स्कोर हो चुका है. नया एजेंट का टीजर आया, देखा नहीं रे? You can do anything here. Was making plenty of noise. Swinging in. Shot. Able to take him down. Shot, nice shot. Lakia is so privy to all of this though, but just doesn't check drop. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये अभी टाइम आउट आएगा. टाइम आउट लो. नहीं, उन लोग को एक और राउंड के बाद टाइम आउट आएगा. अभी बाय नहीं है ना शायद. अच्छा, अगला राउंड टाइम आउट आएगा अगर हारे तो. लेकिन मेरे को तो भाई ऐसा लग रहा है कि ये राउंड में ही खत्म कर देना चाहिए बच्ची. खत्म कर दो यार ये राउंड में प्लीज यार. प्लीज भाई यार. Not out of the realm of possibility. All business for DRX now. Trying to see if they can figure this out, see if they can keep their hopes alive for going to Madrid. Go around the corner. Some sheriffs, Buckies, judges. Again, another variety pack for GENG and their weaponry. Munchkin. Skirting with this one. भाई ये हैक कर रहा है बे फ्लैशबैक. Crosshair a little bit high here. अरे नहीं बेचारा उसको फ्लैशबैक हो गया है. That's the neural theft gone. Out of this round, Bucky held first shot, only getting a little bit of damage there on his nice back. meteor. Sheriff able to find his head. Considering dropping down, but no texture. Oh, no way! No way, Danger! The punt no! 6 feet under. GENG, a 2-0 victory over DRX. The punch they're taking into the grand final to Madrid. They are going the distance. And finally, we get to see the black and gold at the international stage. Wow! Masters Madrid welcomes GENG. Unreal performance here today. Bro! An unreal performance throughout this entire kickoff. So many tough matches, so many close calls, so many overtimes, and yet still, they fought back and they got here. Unreal. And what a road here. Wow, भाई मुझे खुशी हो रही है भाई. As the players, I mean, you can't even fathom how they're feeling right now on stage. भाई मीटियोर सबका पप्पा दिखता है भाई. Solo as well. Welcome back to the international stage. To you, to Lakia. It has been so damn long. And for DRX, their first absence since the first ever international Masters tournament. DRX के लिए बुरा लग रहा है, but how fast this team came together. It is. यार, it is just a kick off, भाई. Truly impressive. I
I mean, so much credit to these players and the GENG staff for getting themselves in this spot, for never giving up, Some hugs there. Friends, players who played on teams together before. A lot of respect between both of these Korean squads, but now we have another one. Last year it was T1 and DRX. Now GENG get their turn. What an unbelievable LCQ तो बहुत बाद में है. for this team. अभी तो और 2 लीग्स, इसके बाद और एक लीग है. Head-scratching moments of last season to a rebuild where Meteor is the only holdover. मास्टर्स के लिए भी LCQ होता है. To this squad that is now going into a grand final to try to take on PaperX once more. भाई RB प्लेयर था भाई DRX का. Goated प्लेयर था भाई. And for Khelraay, I mean, in a position to pull off a royal road. His rookie season, come into a team after having never competed before. Oh भाई क्या मस्त खेले ये लोग. Champions of kickoff. Can you imagine? I think they certainly can right now. Yeah, no doubt. जी के मैच अप्रैल में. अरे तो भाई दूसरा लीग चालू होएगा ना. It just seems like with Monyet coming in for GENG, it felt like shouldn't be too different. GGWB. अभी है ना भाई लोग, अभी है ना सुनो ना, मेरे को है ना क्या बोल रहा हूँ मैं मालूम क्या, मेरे को है ना अभी मन कर रहा है मालूम क्या, मेरे को है ना थोड़ा डी रैंक करने का मन कर रहा है, मेरे को ना थोड़ा खेलने का मन कर रहा है, थोड़ा बच्चे लोग को मारने का मन कर रहा है, तुम लोग को भी मन कर रहा है क्या बोलते कंपनी कमा ले बहुत बनी खेलेगा अपन. उसकले मन कर रहा है थोड़ा 1-2 गेम्स खेल के थोड़ा सा उसकले करे. क्या बोलते हाँ हाइड्रा भाई का और क्लच भाई का गेम देखो कब तक क्या चल रहा है. भाई मैंने अपना पासवर्ड रिवील किया और मुझे लगा कि अपना कैमरा अभी इस पे डिस्प्ले कैप्चर पे उसका कले हो जाता. आंख बंद करिए. DRX have chance to come again in Champions? Yes. They have chance to come again in Champions. Champions! Hello everyone. Welcome back to another Valorant live stream India. भाई मैं क्या टाइमिंग पे आती हूँ यार. रुको ये लोग से आने से ये लोग को आने से पहले ना अपन थोड़ा सा हाथ गरम करते हैं. गरम. टाइटल चेंज मत करो चलेगा. उसकले उनके चैट में डालो क्या, मैं आ गया हूँ खेलते साथ में जरा. तो वो लोग चालू कर देंगे दूसरा मैच. एम है कि नहीं है बेबी? एम है कि नहीं है जल्दी बताए चैट में. एम है कि नहीं है? अबे कल है ना, कल मैंने देखा डीमन वन का एम इतना अच्छा कैसे मालूम क्या? क्योंकि वो है ना उसका ग्रिप देखो ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा. ठीक है ऐसा ग्रिप होता है उसका. ऐसा करूं, ऐसा मार के बताओ अभी मैं देखो आ गया.
अभी एम देखो मेरा। अबे नए एजेंट का टीजर देखना है। Valorant new agent teaser. Brimstone, I found him. Omen is in Edinburgh. Seems he was after a journal of some kind, one that belonged to our dear friends at Hourglass. I have confirmation that there was a disturbance near the library, but we know who won. Wait, hold on. Omen's checking in now. He's met someone he says you'll want to meet. I did always want to go to Scotland. Brimstone, the nightmare brings more visions. I see someone I've never seen before. Bright lights starting around a dim room, silenced gunfire, and hundreds of butterflies. This person, they're in danger. Ladies, kya? The danger means nothing to them. Ladies, kya chat? Still, I worry. Cypher mentioned Edinburgh. No? I anticipate a connection. We should hurry. लेडीज लग रही है। Demon 1 का एम रूटीन उसको पूछा नहीं तुमने? भाई ये एम रूटीन जो तू करता है वो मतलब किससे इंस्पायर्ड है वगैरह? अबे किसी ने अरे शिट वॉशिंग पाउडर लग गया। They are so dead. ये अपडेट देखा किसी ने? देख रहे हो फास्ट कर दिया भाई अल्टीमेट। रुको अभी देखो अभी देखो। यही तो होता है हाइड्रा भाई, फिर एक वाइपर आ जाता है फिर हारने लग जाते हैं। अच्छा वाइपर नहीं खेल कोई। अरे हर्ष भाई आ गया पार्टी में। शेट हर्ष भाई कैसे हो? क्या बोल रहे हो रे? हर्ष भाई जिंदा कैसे हो? मतलब हर्ष भाई, हाँ हर्ष भाई जिंदा कैसे हो? मतलब आवाज आ रहा है जिंदा कैसे हो मतलब? आ रहा है। ऐसा इतना जाग रहे हो? अरे भाई की झलक सबसे अलग। क्या मालूम भाई अभी को बुला लो फटाक। अभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। हाँ लेकिन खेल देगा भाई अभी। क्या मुंडे खर्च हाई खर्च लगाओ एक बुलाओ भाई कल है ना। रुको कोई तो पूछ रहा है मुझे। डायमंड 2 है पता नहीं लेकिन कौन है? ए बतुरा भाई को बुलाओ क्या? बतुरा को बुला। भाई कल मैं पहली बार घर पे जिमिंग्स किया मालूम क्या? ऐसा पंप आया मालूम। किस चीज से किए? डंबल है ना? डंबल है मेरे पास ऐसा 7.5 वाले डंबल्स है। अरे यार है ना पाशा है। अरे ये तो हग्गा सा 200 पिंग में खेलेंगे। हाँ ये पाशा भाई 200 पिंग में आप थ्रो करने आए हम लोग का गेम। किक करो हाइड्रा पार्टी से किक करो। हम देशद्रोही को नहीं खिलाते। हाइड्रा भाई ये देखो क्या उसे कहते हैं अपना व्हाट्सएप देखो। क्लच भाई तुमको भी भेज रहा हूँ। हाँ भेजो। क्या है ये? घर पे शोल्डर मारा भाई। नंगी पिच में हर्ष भाई थैंक्स फॉर द मटेरियल फॉर टुनाइट ब्रो। यो मोटिवेशन मटेरियल। हाँ मोटिवेशन यार मेरा भी मैं भी इसके बाद इसको देख के मारूंगा भाई। मस्त लेट्स गो। क्या
क्या बातें चल रही है भाई? अरे नहीं कुछ नहीं। तुम लोग को दिखाऊं? गो करो हाइड्रा भाई गो। अरे बट फिर ये देशद्रोही आ गया भाई। मैं तो स्ट्रिक्स को बुला रहा था यार, ये छोटा चेतन कहाँ से आ गया? नहीं किक 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 भाई, देशद्रोहियों को नहीं खिलाते भाई जो इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं। ये देखो फिर से देशद्रोही आ गए। इन योर डिफेंस। चला भाई वो अकेले क्यों करने चला गया? भाई एक दिन का पंप हो या आधे मिनट का, पंप तो पंप हो है, समझ रहा है? पंप तो पंप हो है। बराबर की नहीं चैट? हाँ बराबर की नहीं? अच्छा भाई आप ऐसे बुरा मानने लग गए। आप हगोगे, हकते सब है भाई, बिना हगे तो जिंदगी कैसे चलती है? कुछ नया बता अच्छा। ओह माय गॉड, माय फेवरेट का नाइफ। हर्ष भाई हाँ बोलो। तो तेरे पास अभी लाइट है ना नई वाली? हाँ मतलब कैसी है? क्रियो वाला? हाँ क्रियो वाला। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। कौन सा लाइट भाई मेरे को भी बताओ। मैं अभी मंगाया, मतलब अभी जस्ट आया डिलीवरी। अच्छा तो आपके पास दो कौन से अभी कौन से? अभी मेरे पास गॉडॉक्स का है वो बड़ा वाला। तो बेटर है, गॉडॉक्स बेटर है। आई नो बट मेरे को मिनी लाइट चाहिए, मेरे को इतना बड़ा छतरी नहीं लगाना अपने। बट वो पैनल है ना हर्ष भाई आपका भी? हाँ पैनल है। तो हाइड्रा भाई एक बार ये मतलब मैं क्या सोचा मालूम क्या, मेरे घर पे तुमने देखा ना बड़ा वाला रिंग लाइट? हाँ तो वो बड़ा वाला भी स्विच करके ना मैं सोच रहा हूँ 2 क्रियो का ही लगा दूं तो मिनिमल और अच्छा रहेगा। सेटअप मस्त लगता है। लेकिन इसका लिमिटेशन यही है कि इसका जो ट्राइपॉड है ना वो बहुत चिंटुकला है। ट्राइपॉड चाहिए मेंबर गेम्स नो मेरे पास आर्म है ना वो लगाने को। वो फिट होएगा कि नहीं पता नहीं। अबे छोटा मतलब क्या है लाइट में वो है 3.5 mm थ्रेड है क्या? 3.5 नहीं वो इतना आइडिया नहीं है मेरे को। नॉर्मल जैसे ट्राइपॉड का थ्रेड रहता है वैसा है क्या? ये लाइट वाला है बड़ा। आ गया ना आपका? नहीं आया नहीं है। अच्छा आ रहा है क्या? अभी मैसेज आया कि सोसाइटी में चेक इन किया। अच्छा नहीं मेरे को वैसा मतलब समझ रहा नहीं है कैसा एक्सप्लेन करूं। कैमरा का जो थ्रेड रहता है नहीं वैसा नहीं है वो ये नहीं है, मोटा वाला है वो अलग है, थोड़ा सा अलग सिस्टम है। आने दे भाई अभी अनबॉक्स। हाँ कौन सा लाइट? क्रियो का लाइट है। क्रियो लाइट। हर्ष भाई तुम्हारा टाइपिंग स्पीड कितना है? रुको अभी करके बता दो। 85 वर्ड्स पर मिनट है मेरा। Damn. किस पे देखने का? मेरा भी कल 86 आया था भाई। मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना। मंकी करके कुछ है भाई। हाँ मंकी नहीं तो की बीआर दोनों यूज कर सकते हो। Yo, me back. Hello, let's run Hedra भाई, हर्ष भाई। मंकी टाइप और मोटाटो। ओके ऐसा है क्या? ओके गॉट इट। वैसे क्लर्ज भाई रेडी चैट रेडी? नो डिनर टुनाइट। रेडी? क्यों? अरे यार रेडी क्या चैट? करूँ क्या? क्यों भाई गाड़ी क्यों करनी है आपको? नहीं पर हो गया मेरा। नो मोर। मैं आपके साथ बैठ के बताता हूँ आपको हाइड्रा भाई, तभी आता है, समझ रहे हो? आज बैठो रात को बैठो वापस, फिर आज चिकन बिरयानी खाएंगे। Okay, बाकी लोग को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो we'll shut this topic right away. या तुम्हारा कितना आया? 86। मेरा 70 आया। वाओ। रुको वार्म अप था ये तो वार्म अप था। हाँ ठीक है अभी करता हूँ ना। अभी बहुत स्लो किया मैंने। अभी करता हूँ ये देखो।
ये तो ज्यादा हक दिया मैंने, ये तो बहुत ज्यादा हक दिया। रुको, अगेन 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 अगेन। हक दिया, हक दिया, ये भी हक दिया, ये भी हक दिया, ये भी हक दिया। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। एक्यूरेसी जरूरी है। अबे यार मैं जानना चाहता हूँ पाशा भाई, तुम इमोर्टल 2 कैसे हो भाई? क्या ऑस्ट्रेलिया में इतना आसान होता है? पाशा भाई 200 पिंग पे पाशा भाई वहाँ के है ना ब्रो, बाहर के। तो पता है मुझे, वो तो पता है। भाई 73 है भाई, मैं नहीं कर रहा। Match found. क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा ये करके? हट, क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा भाई? मेरे को नहीं चाहिए ये सब। हर्षित भाई थैंक यू फॉर द 5 रुपीज ऑन जीपे। हेलो हर्ष भाई, हेलो बोल दो। हर्षित भाई हाय, कैसे हो? थैंक यू फॉर द 5 रुपीज ऑन जीपे। छी भाई, क्या हो गया भाई? चैट में दरवाजा खुल गया। रुको, मैं दरवाजा खुल गया। आ गया। पाशा भाई स्मोक्स खेलो, 2 स्मोक्स, 2 डुएलिस्ट, 1 इनिशिएटर खेलो। भाई मेरा 115 WPM है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे हमारा कंपोजिशन यही है, आपको पता नहीं है क्या? हाइड्रा में बताओ क्या बात है, लेकिन तेरा रैंक क्या है भाई? तेरा रैंक क्या है बता वैलोरेंट में? हां वैलोरेंट में रैंक बता तेरा। जो भी 5th आता है उसको ये करना पड़ता है। बस भाई आपने VCT कैप्सूल लिया? नहीं 5th में नहीं था, मैं पहले से आता था। नहीं गाइस अब तक 2K लाइक्स नहीं किए। लाइक करिए दोस्तों, लाइक करिए। नहीं 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 नहीं, तेरे को जीतना है कि हारना है? मैं हग्गू कर दूंगा उसमें। हाँ क्या? सिंगल लोगों की कम होती है चैटिंग स्पीड। भाई भाई मेरे चैट में बंदे ने बता दिया ना डिफ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बंदा बोलता है भाई सिंगल लोगों की कम होती है चैटिंग स्पीड। हाँ टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड। क्यों भाई? सिंगल लोग को जो सिंगल नहीं है वो कंप्यूटर में टाइप करता है पूरे टाइम। नहीं उसका कहने का मतलब छी भाई, छी नहीं, अरे नहीं मतलब अरे हाँ ना ये कुछ अलग ही मतलब निकाल रहे भाई तुम लोग का। यार दिमाग सीधा लगाओ ना। आप सीधा दिमाग लगा के बताओ क्या मतलब है। अरे मतलब टाइपिंग भाई, तो कैसा सिंगल लोग की टाइपिंग स्पीड कम क्यों होती है? हाँ क्यों होती है? क्योंकि वो ऑल टाइम बात नहीं करते। बट वो तो फोन से बात, कंप्यूटर में कौन बात करता है? तो एक ही कीबोर्ड होता है। हाँ कीबोर्ड तो एक ही होता है ना भाई। रुक, बोले मैं कीबोर्ड लेके आ रहा, रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ मोबाइल से। अरे मोबाइल का कीबोर्ड और इसका वो एक ही होता है ना। बराबर की नहीं चैट, बराबर की नहीं, बराबर बोला भाई। मैं सेंस बना रहा हूँ, ये लोग कुछ भी मतलब निकाल रहे भाई साहब। विघ्नेश भाई ने यहाँ पे पूरे 1 रुपए दिया है जीपे पे और लिखा है रेडिएंट गेम प्ले इज बैक, लव यू हॉट भाई। यार ये लोड क्यों नहीं हो रहा? हाइड्रा भाई आप चले गए? हाइड्रा भाई F4 करके बैठा है क्या ये? अल्ट F4 करके, सॉरी अल्ट टैप करके बैठा है। मोबाइल के कीवर्ड से वैलोरेंट खेलो। बराबर बराबर बराबर। हर्ष भाई सोचा था एग्जाम्स के बाद वैलो खेलूंगा, नपटून बंडाल भी खरीदा बट एम भी बेकार हो गया एंड गेम भी लूज कर रहा हूँ भाई। एटलीस्ट है ना 2 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते एटलीस्ट 2 हफ्ते लगेंगे वापिस एम आने के लिए। अरे भाई कौन ही अब के गया है भाई? कौन ही अब के गया? क्यों आ रहा है मेरा? मैं क्यों सिंगापुर चला गया? ए क्या बोलते हैं छकुली तमाइले बहुत मनी। नाइस वॉल बेबी, नाइस वॉल, W वॉल्स। ये मैप में मोटा नहीं खेला कभी मैं। क्या बोल रहे हो भाई? ये सब अच्छे से बोलो भाई। मेरा स्पीड 38 है। छी 38 मतलब एकदम भाई अंकल स्पीड है। आओ पाशा भाई दिखा दो अपने प्रीमियर के दिन जब आप वैसे ही हकते थे, वैसे ही हगो। Go, go, go. अरे जी फाइटिंग किधर है? अच्छा उधर है। ये शॉट डॉग एंड ये शॉट।
और कोई नहीं है ये रुक शायद 45 Portal closed. फ्लैश में बस रुक जा not planting बोट टीपी राइट बोट टीपी नहीं एक राइट साइड क्लियर इज स्टैंड राइट आजा राइट से पुश कर आजा राइट से Spike planted. Last player standing. One enemy remaining. A shot. Up and away. डिंकेश्वर दोनों डिंक 1 HP दोनों अरे कोई नहीं भाई वो मैं ई दबाने की जगह F दबा दी ये R दबा दी Who let that old man out of the nursing home? और तुम्हारा RIP हो गया और स्टैक करे भाई स्टैक करते एकदम शांति से भाई मैं वॉलीबॉल किया रे भाई अरे वो शॉटगन लेके कूद गया इधर और क्या पता नहीं कॉल देते हो डबल टीपी हट भाई इधर आ वही अरे सॉरी वो डबल बार साउंड आ गया था इसके पूरा वन वे दो ए शॉट साले भी जा रहे मैं बॉल दे रहा हूँ अच्छी नहीं वो ये रीटेक बॉल दे रहा हूँ मैं आ जाओ निकालेंगे अपन तुम लोग को फ्लैश दे रहा हूँ फिर close Spike planted. फ्लैश डाल दो मैं बॉल दे रहा मेरे पास कोई यूटिल नहीं है भाई वो लोग स्पैम करेंगे क्लोज स्मोक कर सकते क्या ये मैं फ्लैश कर रहा हूं रुको करो नहीं हो गया Last player standing. कूद गया भाई वो Flawless. Please stay at go. Nice try guys Go. ठीक है ना नाइस ट्राई लिख दो यार नाइस ट्राई लिख दो एंटी हैं Cutting through. हर्ष भाई क्या आप प्ले करने वाले हो नहीं करने वाले तो डॉग मेरे को और दिलाओ चेक कर रहे क्या स्मोक देता हूं जस्ट रुको आइड्रा भाई पहला इसका डॉग तोड़ने दो मेरे को Launching smoke. डॉगिंग रेज लाइक सुसा चले अरे मॉलीज नहीं लिए ले लिया क्या भाई हां ले लिया Here. मॉली डाला शॉट one Spike down A. One enemy remaining. Go. शार्क वाचिंग guys let me get the kill so I can get ult ओके अच्छा तरीका है खेलने का क्लियर ult आ जाएगा ना भाई नेक्स्ट राउंड के लिए क्लोज है सो My God! ऑन स्क्रीन चैट कर रहा उसके साथ भी नाच रहा है भाई वो मार नहीं पा रहा है इसको चलो गया ऑन स्क्रीन चैट कले पोटैटो भाई प्लीज थोड़ा सा ड्रॉपिंग प्लीज या और भाई इधर खेल रहा तो मैं बी पे हां बी खेलो मैं तो अभी प्ले करूंगी चलिए फ्लैश करते हैं बी ले लो रुक जा कॉल दूंगा बी है शायद आए ला बिलो कर रहा हूं करो का स्मोक दे दूंगा नॉट ए उन लोग पे फ्लैंक देखने वाला कोई नहीं है मेरे को पूरा वॉक करना पड़ेगा क्योंकि डेडलॉक का यूटिल रहेगा फ्लैश फाइट करना आया भाई हुका है क्या भाई मॉली किया हुआ था वो लोग नहीं आते इतना जल्दी 130 रे रील हो गया अबे बी अंदर आ रही है एनिमी बी टीपी मार Last player standing. Spike down B. यार हाइड्रा भाई वहां पे थोड़ा मानिए फ्लैश मेरा लेफ्ट राइट हो गया तो मैं खुद ही फ्लैश हो गया था अरे मार दिया भाई उसने मेरा पहला किल नहीं आया अब तक I'm out of here.
गैम्बल ऑन नहीं है क्या? नहीं, गैम्बल मैं ऑफ रखता हूँ। मैं रेस का वेट करता हूँ, सैचल मार के आएगा इधर। ठीक है, मैं प्ले बना रहा। नहीं, मैं बैठा हूँ पीछे, मैं नहीं कर रहा कुछ। Toxins going up. Poison orb emitting. My ult's ready. Poison's on. Nice. Spike down A. अरे की शॉट शिमड़िया चमले 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 एक ही लेके गया स्पाइक लेके गया। शावर की तरफ गया वो। कैन बी वन मोर शावर। नाइस शॉट टीवी चैट, वेल प्लेड बेबीज। स्पाइक लेके क्या वो? मेरे पे मैं नहीं देख रहा हूँ ये शॉट। आलिया उसका स्पाइक लेके गया, स्पाइक लेके गया। ये शॉट है वो। एक शावर। मैं 50 की साउंड ब्लॉक प्लेयर हूं। एक और शावर। Spike down A. One enemy remaining. Enemy spotted A. Shot. Last player standing. My territory, my room. काम 25 जमा खेल लिया वाइड हेडलॉक। किक करके पिक क्यों दे रहे हो? अंदर खेल लिया वाइड हेडलॉक। बेचारा रेस भाई खेल लिया मैंने ओपी। शीश गेमर बोलते ना भाई को। भाई को क्या बोलते हैं? गेमर बुलाते हैं मार्केट में मेरा नाम है ना हर्ष भाई से फेमस नहीं है, मेरे को गेमर बुलाते हैं भाई। मैं याद हूँ जनेया कदम। हाय कैसी हो? अबे अल्ट है उस पे यार, प्ले नहीं कर सकता या प्ले कर सकता हूँ, उसका अल्ट तोड़ने के बाद प्ले कर सकता हूँ ना। चलो करते बैंडल चलाते। मल्टीपल आ रहे हैं। चलना है, चलते रहो। Poison orb emitting. अल्ट क्यों नहीं कर रहे भाई वो लोग? Poison's off. Spike down A. क्या शॉट? नहीं गया। क्रॉस देख रहा है, हाँ हो जा, वॉक करके नहीं। रुक जा, टाइम। One enemy remaining. ये ऑफर है इधर, मार्कर पे ऑफर। शॉट कम फ्लशिंग नाइस शॉट इन द चैट बेबीज। My priority. क्या शॉट मारी यार मैंने, क्या शॉट मारी। I'm too good Need a drop. Thanks. Go. भाई एस दिखा दो। रुकना अभी देख ऐसा एक प्ले दिखाऊंगा ना, लेकिन भाई वो लोग का स्काई का अल्ट है बे। स्काई का अल्ट जब तक नहीं करता ना वो, तब तक अपन प्ले नहीं बना सकते बच्ची। डेड एजेंट हेलो कैसी हो? नहा लो हर्ष भाई। शिट बे सही में मैं अब तक नहाया नहीं हूँ। इधर बैठ जा अकेला ही शॉट था। शावर कंट्रोल रखना, यहाँ पे रह, ऐसे खेल। अरे बहुत गंदा पीला मैं, डॉग आ गया मुंह पहले। पीछे जा रहा है। I've got your trail. ए शॉट। भाई वो लोग जंप कैसे करते रे प्रोज में? बी जा रहे हैं। ए शॉट है ओए हर्ष। ये शॉट कैसे है ये? भाई मैं जंप ये कर रहा था यार अपना। भाई मैं जंप ट्राई कर रहा था यार। भाई वो लोग Last player standing. ओए यार सॉरी भाई सॉरी। अबे मैंने सुना ही नहीं ये शॉट है। Get ready. I'm out of here. राइट रेडी है। हमारा एक गंदा सा ऑपर मरा है ना, मैं ऑप लेता हूँ उनको। Go. भाई उसने डॉग मार दिया, मैं बेट बन गया उसके डॉग से। भाई साइलेंट जंप कैसा करते मालूम तुमको? क्राउच लास्ट सेकंड पे। ओके लास्ट में छोड़ना है। अरे लास्ट में छोड़ देना है। हाँ यार। I'll show them. Time to jump. Gotta go. वही कर राजेश शावर। Go. How they shot?
Can you stun default? Toxin screen down. Last player standing. भाई मेरे स्मोक No more doubts. I'm out of here. We're ready. भाई चांद मैं तकरा पन्नाते ऑप लगा के शॉट देगा तारे ने पसंद है मैनू मोस काले पाते तेरे कालियां शिपिन के दे मेरे कन दी तेरी यार इतने सारे लोग थे यार इतने सारे शायद स्मोक में से ना घुस गया होता है यार भाई लोग होता है 5 साल बाद खेल रहा हूँ वॉच पार्टी करता हूँ मैं सिर्फ हुक्का क्रॉस हो सकते हैं ऑप अगेन बी टू down B. मैं फ्लैंक आ रहा हूँ एक है इधर ठीक है लॉन्ग पे One enemy remaining. Thrifty. नाइस वन That was embarrassing. ले लो Go, go, go. गन्स उठाओ वहां पे लॉन्ग They mess with one of us. भाई गेम को रिलीज हुए 5 साल नहीं हुए भाई मैं तो पहले से खेल रहा हूँ ना लेकिन अर्ली बेटा फेज मुझे दिया था तुझे नहीं तो तुझे कैसे पता प्ले देखो अभी प्ले देखो भाई का प्ले देखो तुम लोग अरे मैं बिना वार्म अप के खेल रहा हूँ यार थोड़ा इजी जाओगे मेरे पे सालो लाइक मारो जरा लाइक मारो लाइक नहीं मार रहे हो 2000 लाइक नहीं हुए मुझे घर पे खाना नहीं मिलेगा अगर मैं 2000 लाइक करके नहीं सोऊंगा लगेंगे शॉट पाशा पे मैं रोटेट कर रहा हूं कोई मदद कर देता तो मजा आ जाता भाई क्या बताऊं कोई मदद कर देता यार कोई मदद ही नहीं करता भाई मेरी क्या करूं चैट में कहां घुमा रहे भाई एक शॉट अरे दिल नाल नहीं तू बाल बड़ी है तेरे तेरे हुन कच्चा लेकर पक्का डकदा एक शॉट बता प्लांट ले रहा है रुक जा हां मैं Spike एक शॉट planted. प्लांट वन ग्रीन बॉक्स पेड़ बन रहा हूं भागो फिर भागो तू मार उसको अरे इसको बोल रहा अरे अल्लाह बेंच आराम से खेलो Out of charges. One enemy remaining. लेंस पे था 55 Last player standing. पीछे से ही आएगा वो हेल्प कर दो भाई मेरा परसों बोर्ड एग्जाम से ठीक है तेरे को चीट्स बना के दो छोटे छोटे हेल्प कर दो बोल रहा है अरे हगा से पढ़ाई कर बाय या सेव है अपना तुम लोग कर लो तुम लोग बाय कर लो मैं बी खेल रहा हर्ष भाई ये लो वेंडर लो मेरे से मुझे पॉइंट दिलाओ और Quick trigger. I'm out of here. शॉट Poison orb emitting. गंदा स्मोक है अंदर आ My ult gotta go. Tox poison's on. अल्टा मेरे पास फ्री किक खेलो Gotta go. Toxin screen down. Spike down A. क्लोज सिटी केयरफुल Reloading. Go, go, go. Spike planted. फ्लैश आएगा बैक साइड रेना कैरी होल यूएल है बेंच Toxin screen down. क्या बेंच है One enemy remaining. Toxins going up. Last player standing. नाइस Go, go, go. नाइस कैसे मारा वो ऊपर से आया हवे में वॉल आपको पे आया हेडशॉट ना मारा उसने ऐसा भी I've tried explosions.
ऐसा मारेगा बच्ची। मेरे को गेटो के मॉली पे ट्रस्ट ही नहीं है भाई। Last round before the switch. भाई उन पे 5 अल्ट है, मैं ए शॉट अल्ट मार रहा हूँ। मोटाटो भाई ड्रॉप देना। और हर्ष भाई याद रखो मेरे पास गेको है, अपना विंगमैन यूज कर सकते हैं हम लोग। ओ जी 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 मोटाटो भाई गिरा दो। मोटाटो भाई क्या बोल रहे? समझा नहीं। 18 शील्ड डैमेज 18। अच्छा अच्छा सेल करो फिर। ये दो बी के लो पाशा भाई, बी के लो। ये दो फाइट सैचल इनसाइड। ओके स्मोक्स मार रहा हूं लॉन्ग का। My territory, my rules. तोड़ Toxins going up. I've got your trail. Fire in the hole. Toxin screen down. Prepare for hellfire. The hunt begins. Last player standing. बनीर बॉल डाल दे लॉन्ग पे। Spike planted. Flawless. भाई नीचे क्या मच्छरों की पार्टी चल रही है क्या? Switching sides. क्या भाई नीचे तुम लोग का? That's what's आइला Right there. क्या प्लान है भाई अभी बता दो। भी चलते हैं। Right there. Right there. अल्ट करो किया ना अल्ट भाई, किधर करूं? नीचे वाइपर की तरफ पाद दो भाई। सुबह से मैं 5 बार तो पाद होगा एटलीस्ट। दोस्तों हम यहाँ से जीत सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। स्पाइक पे विल गो लॉन्ग। हुका पिकिंग। हमला। तोड़ो ये। यार इसमें बॉल बनाना पड़ेगा। नाइफ से तोड़ेगा, क्लोज होगा तो पिल्ले। ऑफसाइड मेरे पे फ्लैंक हो रहा होगा। फ्लैंक हो गया। रुको इधर रोटेट कर लियो लोग। रोटेट कर लियो इधर। ओके गो बैक। चलो Toxins going up. Poison orb emitting. I can smoke heaven for you. Toxin screen down. Sky's dead. चल सीडी चल मोटाटो। हां रिलोड कर। दो सिटी नॉट फाइटिंग पाशा पीछे। ऑल 3 सीडी देख लिया उसने। वाओ अनलकी बस। सेफ किल Up and away. One enemy remaining. Blind up. Nice. Good blind. This was taken. नाइस फ्लैश। फर्स्ट टाइम सेटअप किया हूँ। कहाँ डालूं? आप डालो शट अप फ्लेक्स में। भाई अच्छा किल किया कि नहीं मैंने? अरे क्या सीन किधर जाने का है बता। हुक्का चलते हैं ये वाला नहीं राउंड चल। पूरा जिंदगी स्मोक डालते हुए मर जाऊंगा। बोर्ड एग्जाम होते रहेंगे, आपकी स्ट्रीम ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ। अल्ट्रा भाई प्लांट ले लो। अल्ट आएगा जल्दी। Got your back, Neon. बाय कर लो ना। बाय कर लो। Here we go. Decoy. Gotcha. Flashing inside. Toxins going up. Wingman's gonna play spike. Spike planted. Out कभी। 1-1. Screen down. One enemy remaining. Gone. Elbow, I think. Pissed me off. मेरी अल्ट। The dimensional fabric here is thin. स्लो खेलते मैं शावर वाले को पिक ऑफ करने का ट्राई करता। कोई तो मेरे साथ पीक ले लो, मैं 1-1 बॉडी देता। मेरे पास आओ ना। ठीक है ये मेरा ये ले लो। ये ले लो। क्या? सुनो मैं ए पे अल्ट करूंगा ना यहाँ से तो वो शावर पीछे जाने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। राइट हाइड्रा भाई मैं भी अल्ट ले सकता हूँ। रुको साथ में करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ अगर मैं ए शॉट अल्ट करता हूँ तो शावर वाला फॉरवर्ड आने की कोशिश करेगा तो उसको पकड़ो तुम दोनों। हाँ क्लच भाई वॉक करो। ठीक है मैं बॉडी मारूंगा, तुम मारो उसको। क्लोज
Launching smoke. पकड़ो इसको ले ले Taken out. Decoy. Someone's there. रुको मैं अल्ट वापस कर रहा हूँ चल Yeah, waiting. फ्लैंक My ult strength. गाइस मेरे पे भी अल्ट आएगी। हाइड्रा भाई बोलो जब आपकी रेडी होती है। या 6 seconds. एक ही वॉल Thrash is ready. Thrash is going again. go Handle this. ग्रीन बॉक्स है एक। Cutting through. Down you go. Many enemies there. एक ही वॉल Last player standing. Spike down A. Poison's off. One enemy remaining. Toxin screen down. क्या हुआ जी मेरे को लगा I played it so well भाई। Do what we do. मारेगा उसको। I played it so well यार हट। मैं आगे आपके एल के साथ पुश करा ना वो सेचल मार गया। अबे मेरे को इन्फो ही नहीं था इसका यार। अच्छा मैंने फ्लैंक मारा एक और छी यार खेल लिया था ऑलमोस्ट खेल लिया था। अरे वो है ना ये जनरेटर हेलो? के ऊपर चढ़ के बैठा था। कौन बात कर रहा है? मार के तेरे पास आया लद इसको भाई मुझे लगा आप यहाँ ले जाओगे। कौन बात कर रहा भाई? नहीं लैंप्स नहीं मैं साइड का ले जाऊंगा ना शावर ओपन करना है तो छोटा भाई तो छोटे भाई को गार्ड देता हूँ मैं मालूम क्या तुमको? हाँ क्या? डेडलॉक ने हुक्का पे ट्रैप लगा दी। ओके इससे लोग रहते भाई। Toxins going up. Enemy spotted A. Smoke's down. I'm out of here. Spike's ticking. Thanks, little man. Toxin screen down. अरे शार शावर एक साइड ही गॉट गन। एक सिटी। टाइटल तो चेंज करने ही नहीं जरूरत नहीं। हेवन जा रहा है कि सिटी आ रहा है? मैं आ रहा हूं लड़का आ रहा हूं। गोइंग हेवन गया। One enemy remaining. Nice. Hi. Fight's not over, you know. I need a drop. Thank you AFK Jadid for the 2-month support. ये ले क्लर्च कहां गया? ये ले Where is my wingman? को कंप्लीट ना बहुत ही कर लिया था भैया। अरे वो डेडलॉक इसका वॉक करो हाँ तो वॉक करो ना। डोंट मेक साउंड और हुक्का मत बॉल करेगा। एक शॉट है। ओके दे विल रोटेट है बिल को भी डाल दिया भाई। नहीं दिया उसने। मैं आता हूं ब्रो व्हाट अ शॉट। हुक्का जा रहा है सिटी जा रहा है। जल्दी जाना है तो जल्दी बोलो। आ जाओ लॉन्ग जाओ। Launching smoke. क्या शॉट दिया भाई मैंने। चल करो प्लांट हो जाएगा। लाइन अप भी है। Molly. Spike planted. Thanks, Wings. स्मोक दे रहा हूं वापस सिटी। गंदा स्मोक है। मॉलिड सिटी। एल्बो केयर। वॉल करो। Toxins going up. Fire in the hole. I'm dropping the wall. Toxin screen Prepare down. for hellfire. Is it defusing? Poison orb emitting. मॉली किया डिफ्यूज मॉली किया। दोनों मॉली किया। चल कर देर पे आप डर क्या? Poison's off. डन। They're dead. My ultimate is ready. One enemy remaining. Last player standing. Oh my god भाई। So, do we mix it up? Double down? Let's talk. Lemon. Bro was so lost. Go. अरे उसने हाफ कैसे किया पर? तेरा मॉली आने के पहले हो गया। हाफ नहीं था ना शायद। हो गया था। हाफ हो गया था। उसने हाफ बोला इसलिए पिक किया। वही वो अल्ट में ना मेरे को लगा कि उसने अल्ट किया ना उसकी आवाज में उसने टैप किया था शायद। Reloading. भाई they are Got that lineup gamer. फ्लैश वगैरह डाल के। दो और है। Toxins going up. Poison orb emitting. One more shower. He's pushing forward to get my gun. Spike. भाई क्या मार रहा हूँ? भाई माँ गन लेने आएगा देखना।
था ना Cutting through. प्रिम शावर था प्रिम का कोई वो था वगन My वो दे portal शॉट broke. क्रॉस हो गया साइड होल्ड कर मास्टर One enemy remaining. नाइस 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 भाई कोई मार्क नहीं कर रहा था Right there. मार्क नहीं है भाई प्राइम के अलावा सब में हकते हो ए साले एम देख एम भाई वो सब ठीक है मोटा तो क्या किया था तेरे को नो प्रदुमन इज ओके माउस बटन दब गया पता है was farted buff मैच नहीं हुआ था वही हुआ था was farted buff buff भाई शावर लास्ट राउंड 3 जन आए थे मालूम पुश करने I have ult कुछ में आ रही क्या we do that again उसको स्पाइक दे देना फोड़ा वन यू छोड़ो ये कोई बात नहीं ये वॉल तोड़ राइट से जाओ ना ऊपर से on back side यो स्कैश I've got your trail. Toxin screen down. She's going again. Shot fast. ये साइड है behind you गेको behind you आपके पीछे One enemy remaining. default when लेकिन डिफ्यूज कब हुआ तुम्हें साउंड आया डिफ्यूज का भाई नहीं आया इसने जब बहुत सारा फाइट हो रहा था तभी कर दिया उसने I'm out of here. जब हाइड्रा भाई अल्ट में थे और आप पीछे गए थे ना और आपको इतनी सारी आवाज आ रही थी तब उसने टैप कर दिया होगा और वो आवाज ऐसा मफल अप हो गई होगी सिंगापुर सर्वर फॉर द विन ब्रदर आवाज नहीं आता है मेरे सामने गया स्काई मुझे मालूम है एक मारा फिर लेकिन उसने डिफ्यूज किया था मुझे नहीं पता था आया था साउंड था लैंप में कोई होगा तो मेरे को बताना अल्ट खोल दूंगा वन यो लकी स्पाइक दे फ्लैंक आ रहा है Stim beacon down. आपने ये कर दिया था अब फ्लैंक आ गया एक और एक फ्लैंक ए शॉट क्लोज One enemy remaining. डेड क्या हुआ भाई क्या मालूम जब गया तुरंत साउंड आया अच्छा ध्यान नहीं दिया मैंने भाई नेक्स्ट मैच रिवर वैंडल लगाओ ना प्लीज टट्टी स्किन है वो उनका गन खत्म हो गया Let's reset. गन खत्म हो गया नहीं भाई Go. चलो भाई अगर उनका गन खत्म है तो ये चलते हैं अपन अभी बी चलते गेको भाई फ्लैश डाल दियो इधर से मैं वो अल्ट मारेगा इधर ही आएगा पीछे हमारे पे अल्ट आवाज आते ही अल्ट खोल I'll take everything from them. पुश कर ये डेडलॉक अल्ट करने वाला है ओके पर डेडलॉक इज प्लेइंग बी राइट लास्ट टाइम ये था हां वो बी खेलता है लाइक्स टू फ्लैंक इसका शॉट he saw me can you smoke I did Toxins going up. deadlock is here now B पे no sentinel guys Open up the sky. Shot my wingman. Toxin screen down. fall down क्या होल्डिंग शॉट हेवन स्मोक दे Sit down. Nice. Trash is ready. क्लच तेरे लिए स्मोक दिया है मैंने ये क्या कोले ऐसा मत बोलो आज भाई रिवर मेरा फेवरेट है भाई मेरे को पसंद है ब्रो एक्चुअली ब्रो पीछे ग्रीन थैंक यू मदर आशा भाई रुको आई गो तू बैठे रह ठीक है आराम से कोई टेंशन नहीं मॉली डाला है मैंने जीत गए One enemy remaining. रन मैं मर गया माँ ये लाइनअप है ना भाई मैं भूल गया लाइनअप अपना वो वाला Gotta go. रिकॉन मिला क्या नहीं है मेरे पास रिकॉन मैंने अपने आगे वाले ट्विन को डिफ कर दिया भाई आई हैव अल्ट बट ब्रिम अल्ट करेगा ब्रिम अल्ट वेट करा सकता हूं मैं
हाइड्रा में थोड़ा ड्रॉप करके छोड़ दूंगा। क्या बोलते हो, ब्रिमल डिबेट कराऊं? किधर ब्रिम कहाँ खेल रहा है? हर्ष में होल्ड करके इसको नेवर माइंड। अच्छा मैं अल्ट वेट करा रहा हूं। डेडलॉक इधर है, बॉल करिए वो तोड़ उसका। एक सेकंड नहीं तोड़। एक सेकंड देयर इज अ लॉट ए गाइस, देयर इज अ लॉट ए, ट्रस्ट मी। लेट्स डू बी देन। डेडलॉक इज हियर। देखा वो मेरा पोजी देखो आई गॉट द स्पाइक। बिलोंग आप अभी भी हुक्का के बाहर ही हो। हुक्का के बाहर खड़ा है तू। मेरा पोजी देखो गाइस, मेरा पोजी। चल रहा है जा रहे हैं बी कमिट कर। मैं लॉन्ग आऊंगा तब चलना। लॉन्ग क्लियर नहीं है, फ्लैश कर रहा हूं लॉन्ग एक बार। Prepare for hellfire. I have them now. One hookah. Spike planted. हाइड्रा में एक Thanks, wings. अल्ट कर रहा हूं, रुक। करो Last player standing. क्लोज रहना। One enemy remaining. Flash. For 3. Dizzy's up. Big round. For real. Let's go भाई। Match point. Insane round। They look tired. Finish it. It's a high reflect for the win, man. I'm out of here. You know, I've been grinding. Yeah. I know you've been grinding. Get out of the mod. रिल्यूड लगाया क्या तूने? बता मेरे को वैंडल। क्या? रिल्यूड वैंडल चला रहा है। आयरन लगाया है भाई, जो यूज कर रहा हूं। ठीक भाई। अमल्टिंग खोला। 18 पे 6 भाई बोल मत मेरे को। शर्म। रुको गाइस, रुको। गया क्लोज। आप लोग मेरा वेट कर सकते हो। एक यहाँ पे है, एक हेवन है, एक इधर। एक क्लोज है भाई, क्लोज है। एक हेवन एक बैक साइड। Spike down A. बस मैं किधर से मारा? ग्रीन ट्रिपल। Last player standing. भाई 12-11 हो गया। आई शुड अच्छा साथ में ही जाते हैं। लेट्स गो ए अगेन। अपन कंप्लीट लाइनअप पे खेल सकते हैं ये राउंड। फिर भी अपन घुस गए। Vibe check. We feeling good? तुमको लाइनअप आता है अपने पाशा भाई? मेरे को मैं डिफॉल्ट डाल दूंगा। ठीक है। तू आराम से टाइम वेस्ट करा अपनी लाइफ में। अपना टाइम से थोड़ा वेस्ट कर मर के। क्रिएटिव नहीं लेता मैं। सुनो ए फेक करो, वी गो बी। ठीक है मैं करता हूँ। मैं वॉल दे रहा हूँ एंड हाँ तुम अपने स्मोक रखो। बाइक लेके जाना ब्रो। लॉन्ग हो। Saw you, Mosh. Hey, long. Enemy spotted. 80 sky 80 back side. Sky चलो। I've got ये your जाओ trail. दोनों भी ये जाओ। ओके। स्पाइक दे। बस वन बैक साइड। सिटी गया, वो सिटी डीप गया। Wingman's planting. Smoke's down. Sky 80 लो है, ठीक है। एंड कम इन स्मोक। Time to jump. Spike stick. हाइड्रा में flank Thanks, देखो। little man. मैं शावर जा रहा हूं। शावर है। हां चल कोई नहीं। आजा मैं मर जाऊंगा तू बैठ। कूल नो प्रॉब्लम। I got one flash, one kill. हाइड्रा में एक फ्लैश है। मॉली फर्स्ट इफ यू कैन। चल कर। One enemy remaining. मॉली। Flashing. Attackers win. Hell yeah. Played. My crew delivers. Good call, Khelraay. भाई सुनो, वो स्टीम बीकन में था, ठीक है? पूरा बैक साइड आ गया था वो। मांडी डाल के बैठा था बैक साइड पे। सुना था अपनी तरफ बी की तरफ, तो वहीं से स्टीम बीकन डाला और निकल गया। भाई
शर्म आती है गेम को 10 प्लस क्या होता है भाई, थोड़ा 12 तो शर्म आती है मॉर्टल 2 होके झूल रहा 10 किल पे। भाई 140 करता है वो। नहीं अब पिंक का बहाना आ जाएगा, अब पिंक का बहाना आ अल्ट जाएगा का बंगला, अरे तो क्या भाई, हमारी चैट के लिए अल्ट का बंगला तो बनता है ना भाई। सेकंड कले ओसा कले सब क्यों बता रहे हो भाई? भाई यार मेरे इसमें कुछ अच्छा दे दो आप यार, मैं क्यूट खुश बन हो जाओगे जाऊंगा भाई भाई। ऐसा ये इमोजी डाल के सैड वाला। नहीं हार्ड बनो भाई, हार्ड बनो। भैया कोई ट्रिक बता दो, टाइम टेबल बता दो। स्टॉप करना है, सुबह 10 बजे उठो, खोलो अपना मोबाइल फोन और रील देखो। रील देखो कम से कम नहीं तो 1 से 2 घंटे, 12 बजे से 1 बजे तक अपने दोस्त को फोन मिलाओ, क्या चल रहा है, एग्जाम के लिए तैयारी कैसे हो रही है ना। 2 से 4 मस्त रील लो, ठीक है। टेंशन में आ गए, पूरा दिन खराब कर दिया, फिर आप टेंशन में आओगे। टेंशन में आओगे तो उसके बाद क्या होगा, आप फिर से अपने दोस्त को फोन मिलाओ। 6 बजे वापस से एक दूसरे दोस्त को फोन मिलाना है और उससे भी बातचीत करनी है, उसको अपने दुख सुनाने हैं, उसको बोलना है कि यार मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है यार, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये करना है, ठीक है। 7 बज जाएंगे, फिर 7 से 8 क्या करना है तुम्हें, 7 से 8 तुम्हें प्लानिंग करनी है कि कल से कैसे तुम पढ़ोगे। एक तगड़ी प्लानिंग बनानी है कि कल से तो ऐसे 12 से 13 घंटे पढ़ लेंगे। फिर तुम्हें क्या करना है, 8 से 9 खाना वाना खा के फिर वही 10 बजे तक वो रील चला बुला के, ठीक है। ऐसा बनोगे तुम तो भाई। बेस्ट मोटिवेशन सालो, मोटिवेशन चाहिए हगासो, फेल हो जाओ ना, फिर फेल हो जाओ भाई। बेस्ट डब्ल्यू टीचर इन द चैट, कैन वी हैव सम डब्ल्यू टीचर इन द चैट भाई। ये सर का नाम क्या है भाई, ये सर का नाम क्या है? मैच आई लव दिस सर, आई लव दिस सर भाई, आई लव दिस सर। ऊसा कले कले सर थे ये, ऊसा कले कले डब्ल्यू टीचर। ऊसा कले कले था भाई, ये तो मजा आ गया भाई देख के, मजा आ गया, मजा। ओ भाई पता नहीं वाइड एंगल अपने आप खुल जाता है, क्या बोल रहा है भाई? कौन कौन? अरे हाँ कुछ तो लफड़ा है। हेलो हेलो हेलो, खड़ा हूँ आज भी वही, ये दिल तेरी ही आस है। ओ भाई गेस द रैंक, 11 साल क्या गेस रैंक, आरजीबी के अलावा कुछ नहीं है। 11 इयर्स पुराना सीपीयू है, नो जीपीयू, सिल्वर 1, अरे ब्रॉन्ज 2। अरे यार ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशनिज्म ज्यादा कर देता हूँ यार लोगों से। भाई ये क्या है? आइस बॉक्स, बहुत दिनों बाद आइस बॉक्स खेल रहा हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो चलो भाई लोग, लाइक कितने हुए? किसी ने लाइक मारे? ये सर के शॉट्स रोज आते मुझे, सही में। चिस्टाम 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 चिस्टाम। मेरा और क्लरिच का ही ऑन है, बाकी सबका। हेलो 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 हेलो। नहीं नहीं, तुम तीनों ही गए हो, हम सब है बाकी। चिस्टाम मैंने हटा दिया इन गेम वॉइस। लाओ बस भाई को। चिस्टाम चिस्टाम। Go go go. बी करते हैं ना, बी करते हैं। ओके इजी टू टेक। नाइस, I'm out of here. चिस्टाम। हाँ ना भाई, वीसी का क्या हुआ है भाई? वीसी बंद क्यों हो रहे भाई? Set the spike, Wings. Go go go. Hard guy. कट्टी साली। ओके विंग चल ना। Toxin screen down. उस फनाटिक का गन है शायद वो। मेरे ट्रैप में आ गया होगा, टाइमिंग करके आया। ओके ओके। Enemy B. चल 1 HP दोनों साइड है क्या? होल्ड अप, तुम दोनों लो। टैप पे मैं फ्लैश करूंगा, फिर पिक मॉली डाल दे, मॉली डाल। नहीं डाल रहा हूं। क्लोज। One enemy remaining. Careful there. Stick with me. भाई टेढ़े Circles around. भाई टेढ़े
तेरा भाई तेरे मौत। भाई सवेरे राणा का सुना क्या तूने? तुमको नहीं पता हाइड्रा भाई तेरे मौत कौन है? नहीं। रुको अभी व्हाट्सएप देखना ठीक है? मैं भेजता हूँ कुछ। तेरा भाई तेरे मौत। बस भाई मुझे भी। हाँ हाँ। मिस्टर हाइड्रा फ्लिक किधर है? लुका छुपी। नहीं दिखाता हूँ भाई अभी तेरे मौत दिखेगा आपको व्हाट्सएप देखो बस। स्पाइक I got the spike. चैम्बर ऊपर कर रहा है। रुको फ्लैश कर रहा हूँ। Up and away. 101 dead. Backstep. 101 chamber. Wait, come back. भाई guys लाइक मारो मैं आया। Going back. मेरा इनके माइक ऑन हो गया। We're going back. देखो We are also going. Reload. भाई ये कितना ग्लिची गेम है भाई। Come B. भाई मैं तो बैटिंग देख रहा था। क्या मारा है भाई चप्पल। जा हेडर पीछे जा। दोनों आगे। चलना भाई। चलो भाई। अरे मैं तो वेट कर रहा था थोड़ी देर। ये पासा पीक ले रहा है भाई। ये पाशा भाई तो खीरा है। हेड पिक दे गया मेरे को। I'll return. क्या प्लस में भेजा? Wingman's gonna plant spike. तेरा भाई टेढ़े। वो देख भाई कौन सा बॉट है समझेगा नहीं उसका। टिम्बर बोट है ये तो समझ गया होगा। ड्राइव कुछ देख। बैकस्टॉप देख रहा हूँ ना। सीटी से मरेगा तू। साइड आ गया। Out of charges. हाँ चल मेरे पास फ्लैश है। पीक मत ले अभी। फ्लैश हाइड्रा उसको कवर दे दे। पीक किया। दोनों ठीक है चलेगा। Don't peek. One enemy remaining. Last player standing. तेरा भाई तेरे मौत। थोड़ा सा हक दिया था तेरे भाई ने। तेरे भाई का थोड़ा टेढ़ा है ना एम। हाँ? एम। सॉरी एम दे दो। ये हेडर में देखो व्हाट्सएप। पाइप पीक करता है क्या वो? बटाडो आपको ही भेजा हूँ। देखा मैंने। ना कहाँ जाना है भाई? वो वाइपर अच्छा खेलता है। नाइस। ये भी एम लगा के रोगा क्या? पटेली मार रहा वो। यार हाइड्रा तू स्पाइक लगा। ड्रॉप। मेरे को क्यों दे देता है? नेक्स्ट पे दे। Enemy A. My ult's ready. Think ला। चेंबर एक्स प्ले साइड। One screen. अरे दे बाइक किधर है? One blue here. Enemy spotted mid. Time to jump. Hold on, chill out. स्पॉन वाले को मारने का ट्राई करता। बस भाई फ्लैश है क्या? नहीं दोनों उधर है। नहीं कुछ नहीं कर सकते। ओके। Flashing out. क्या हग रहे हो भाई? चल पोस्ट प्लांट। साइड एक। One enemy remaining. मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्लैशिंग आउट। Part of my bigger picture. भाई तो मैंने वही तो पूछा कि फ्लैश है क्या? मैं अरे पीछे था ना तो इसलिए बोला कुछ नहीं कर सकता। फिर आया। मेरे लिए दे देते यार। नहीं बहुत पीछे था। अचानक पैदा कर दिया भाई फ्लैश। सकता था वो, पता है उसको किल चाहिए था। हाँ ना भाई अचानक पैदा किया है भाई फ्लैश। भाई पर तुम एक चीज बताओ हुआ क्यों नहीं फ्लैश? अच्छा था वो लोग पीछे खेल रहे थे। हाँ फ्लैश तो अच्छा था भाई। अचानक फ्लैश आ गया भाई पे जेब में। जेला ये चलेगा ना? ये चलते भाई। आजा नाकत मेकुड़े। ए फेक करके बी कर। नजर चल ना मिल गया। I have the spike. Toxins going up. अरे मैं एक और साइड। One enemy remaining. Daddy, baby. Toxin screen down. देखना फिर से। Oh my god, I just
I think ये Obviously गन निकालने के लिए ट्राई कर रहा VCT तो है GG के 120 निकाल दिया गन पे गन लेने जाएगा, क्रॉस करेगा वो 120 है। There. वो वापस भाग रहा है भाई। गन नहीं लिया ना उसने अभी तक? नहीं अबे मत क्लोज मत जाओ, उस पे स्टिंगर है भाई। 120 है वो, गांड फट रही है क्या भाई? क्या पाशा? ये देखो तेरा भाई तेरी मौत, तेरा भाई तेरी मौत, तेरा भाई तेरे मौत। मेरे पास अल्ट है। डीगल से मारिस भाई, डीगल से दे जा रहे हो आप। मोटर में ड्रॉप देना। अबे सुनना, हर लैंग्वेज थोड़ा कैजुअल हो जाता है। हाँ यहाँ पे फाइट लेते मेरे साथ। हाँ अल्ट है, ये आओ ना। अबे अलग ही चाहिए इंसान, हर्ष भाई को टीपी करने बोलता है। अरे सॉरी, ये आओ ये आओ ये आओ ये आओ। जाओ मोटा तो उधर से ढेर लोग ये आओ ये आ गए हम है। अरे वो दोनों को बोल रहा हूँ। ए पुशिंग क्लोज पीछे क्या? I'm out of here. तो मैं अल्ट करूँगा। रुको मैं Reloading. रेडी हो? क्या? रेडी Go, go, go. शिट मैं नीचे गिर गया। गया एक। Fake teleport. Toxin screen spike planted. पीछे जा। Dead. My ult not recharged पीछे जा हर्ष। वॉल के लिए रुको। Not enough toxins going up. अरे राफ्टर्स आओ। Last player standing. 15 HP देना तो वैसे ही क्रॉस करता मर जाता। मॉली पे खेलता ना। तुम लोग मर गए आगे जाके सब। भाई ट्राई किया यार, ट्राई किया। साले ऊपर से उसने मेरे को टैग कर दिया यार, चैट हट। हॉर्स भाई लाइन अप यूज करो भाई। अरे दादा मेरा वॉल अप नहीं था, मैं 15 HP था, वो फूक में मार देता मेरे को। कोई ना पहला राउंड गया है गाइस। ऐसा डोंट बी लाइक मुंबई सर्वर प्लेयर्स यार। ये पाशा भाई मुंबई सर्वर खेल के ऐसी हो गए हैं। देख लो चने बोल दिया भाई। I'm out of here. एक मूंगफली मेरे को चना बोल रहा है भाई, ठीक है। मूंगफली तो बड़ा ही हुआ ना। You want to play? Let's play. I believe you, bro. Go. This way. Poison orb emitting. Go. Decoy. She's speaking. Hold on. कर बेस पे दो है। पीछे कल्टी। Papa must be flank का। फ्लैश करूं, पिक करूं। मिड पे रहेगा। रियलिस्टिक फ्लैश। मिड से खेल लो तुम लोग, डायरेक्ट भी मत जाओ, मिड से पिक निकाल सकते हो। तेरा भाई तेरे ऑपर है ये ऊपर बैठेगा देखना। अल्ट है मेरे पे। मेरे पास एक अच्छा प्लान है, अगर तुम मिड से लेते हो मैं अल्ट कर रहा हूं। प्लान निकालते हो, हॉल वाइपर हर्ट को एक साइड है भाई। मेरे पास कोई यूटिल नहीं। फिर तू लाइनअप पे खेल सकता है। Last player standing. 30 seconds left. शिट कोई ना भाई, मेरे को शॉट नहीं। सुनो ये राउंड अपने ये करते हैं, मिड जाते हैं, ठीक है? मिड से लेते हैं गेम। Pick something यहाँ पे nice प्लांट to निकाल kill रहा हूँ, ठीक है? them. ऊपर की तरफ। It's the least. हॉल पूरा वाइपर हर्ट कर देगा, देयर विल बी नो चांस फॉर देम टू एंटर एंड वो मॉली पे खेल सकते हैं। मैं वापस कहां से जा रहे, ट्यूब से जा रहे कि एंटर? मिड से जा रहे हैं, यहाँ का प्लांट है। यहाँ का प्लांट है तो हर्ष यहाँ से खेलेगा, किचन से हर्ट करके खेलेगा। ए मैन होल्ड रख रहा और बी में किक करूंगा। Usako kama kole kosu. Usako ne kakone soku. स्मोक दूं क्या मिड? Time to jump. Poison orb emitting. I'm out of here. आओ किचन आउट। पीछे तुम्हारे पीछे। चिम्बर ऑफ। छी रे यार, कितना एक्सपेक्टेड किल मिस किया मैंने। छी टट्टी गेम प्ले बाय हर्ष खेल रहा है। ओपी
हेलो सनी दगिया, कैसे हो? किचन आ रहा है, वो किचन आ रहा है। भाई इसका अल्ट क्यों दिखा रहा है मेरे को? They're dead. चिल कर। एक बीमैन है और एक किचन है। ओके दोनों। स्नो का है क्या? एक स्नोमैन है और एक बीमैन था। ऊपर तो Last player standing. One enemy remaining. Not even half. Well played. Let's go. हर्ष भाई। Yes. तो हमें भाई ने 40 रुपए देके पूछा है कि आपकी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? तुमको बताएगा क्यों? बनाएगा तू नहीं बताएगा भाई? भाई जिस दिन बनेगी ना पूरा ऐसा भंडारा बैठाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। उस दिन ऐसा वो होगा क्या, लंगर होगा क्या? हाँ भाई। क्या बात है। अभी नहीं बनेगी मतलब ना, पर कब तक बनेगी कोई वो मतलब आइडिया? भाई तुमको पता चले तो मुझे भी बता। Get out of my way. अरे लाइनअप पे खेलना पड़ेगा, ये वाइपर अल्ट करेगा। बीमैन पुश करता है, बीमैन पुश करता है। ऐसा मेरे को हर्ट करने के लिए क्वेश्चंस क्यों पूछते रहे? नाइस शॉट ब्रो। एक पुश किया शायद। जेट पुश कर, जेट पुश। पीछे क्या जेट? Somebody's there. साइड। भाई One enemy remaining. वो गया, खत्म है उसकी जिंदगी। Toxin screen down. अब उठा लो उसकी। Charming, but not as clever as you think. Don't stop fighting. You must keep going. मैं खेलूं और? If you're the only one. मैं खेलूं भाई आप? Okay. भाई आप मुझे क्या दे सकते हो? यस। थैंक यू भ्राता। ले मैं आपका लो। शुक्रगुजार रहूंगा। मैं बोला डीसी पे लड़की कहाँ से आ गई एकदम से? हर्ष भाई बोल रहे हैं। हाँ? ठीक है भाई। बोल दिया हाँ। प्यार से हाँ, बात लड़की कर रहा हूँ भाई से। प्यार से बात कर रहा हाँ हूँ। भाई ये, अरे हर्ष भाई ये नहीं समझेगा ना इनको। ये ऐसा मुंबई के कठोर player है बात भाई। करते हैं। मुंबई के प्लेयर है, कठोर बात करते हैं। ऑफर आता है बीबी उसको मारा। किधर किधर क्लच भाई? ओए इधर, वो इधर छोटा एंगल नेस्ट वाला, ऊपर 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 नेस्ट वाला छोटा एंगल, उधर से जो कोंटे से कोपचे से दिखता है वो दो के बीच में से। ये देखो देखो क्या शॉट मारता है मादर पप्पू साला। पीछे आगे दो तुम्हारे। हर्ष भाई पीछे, हर्ष भाई पीछे। वो देखो आ गया। चले को ले। डबल डबल। Last player standing. Spike down A. Thrifty. Nice try guys. ये मोटा सा उधर जाना तू, मेरे इसमें क्यों आ रहा है? हर्ष भाई हाँ? आपने ऑफ किधर? हाँ? हमारे पास वाइपर अल्ट है, गेको अल्ट है, योरू अल्ट है। आओ बी चलो। चलो बी भाई इजी राउंड है ये मैं मिल से आता हूँ, ऐसा अल्ट करके इधर आता हूँ। साइड खाली करेंगे, वाइपर मेरे अल्ट से मारेंगे। अरे ये लो ना, ये तुम्हारे अल्ट से जब वो डिफ्यूज करने जा रहे होंगे तो तुम अल्ट करना, हम स्पैम मारेंगे। चैम्बर गन लेने। पीक लेता है, चैम्बर पीक लेता है। हम फ्लैश देता हूं। चैम्बर आएगा हर राउंड। You want to play? Let's play. मिड एक मिड, ये ऑपरेटर लगा के बैठा है शेमड़ा इसको। अरे यार दो शॉट ही है। दो ऑफ है। इधर कोई तो एक टैग हुआ है। ऊपर जा रहा है तो येलो देख तो। ए सिटी कोई नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ नहीं करो, अल्ट मत करो। चलेगा बुलाओ उसको, वापस बुलाओ। अरे मैं मर गई। देव गन दियो। ये पूरा एक छोड़ दिया हम लोगों ने। गैस स्पाइक। मैं वापस अल्ट कर रहा हूं, रुको। आ गया, क्लोज पीछे Enemy B. Last player standing. अरे रुक जाया करो बे, प्लांट इतने जल्दी मत डालो, भाग गए सब लोग। अबे रुक जाया करो, क्या साइड पे आया करो ना, मेरे जो स्ट्रेटजी वो तो फॉलो करो। ऑफर है वहाँ पे मिड पे, यहाँ लगा के।
ओ भाई भाई जेट ने निकाल लिया भाई साला मेरे को तो क्या मारा वो जेट ने एंट्री पे फिर फट गई भाई अल्ट करने दो यार मैं मुझे इसको जाके ऊपर को स्विंग करके मारूंगा भाई तो शॉर्टी ले ले भाई एक एक्स्ट्रा प्लेयर मेरे से मांग ले लगा क्यों भाई अभी आया था ये राउंड आपका आता हुआ सेक के जा रहा हूं अरे भाई कहा भाई मेरे सामने तो भाई मेरे को जरा चांस नहीं था चांस था क्या मेरे को तुम लोगों ने देखा चांस ही नहीं था भाई ट्राई पीक भाई एम डुएल ट्राई ओके मैं स्पाइक गिरा दे I dropped the spike. I'm out of here. Enemy A. Reloading. स्टिल देयर आई थिंक अभी भी वहीं नीचे कूदा साइड से क्या अल्ट कर गया मैं 113 Spike down A. Toxins going up. Enemy A. Reloading. Toxins screen बॉल down. ड्रॉप I'm out of here. Spike down A. Poison toxins going up. Last player standing. Last round in the half. Spend your money Go, now. go. There's no back in hell. ब्रो बहुत हो गया सुनो ना इसका ये मोटेटो के वॉल बना दो सीधा घुस जाओ मैं तो बोलता हूं मिड टू बी ऑफर यहां पे आता है हमेशा फ्री किल फ्लैश देके स्पाइक देना थी मैंने तेरे को Go, go, go. क्या कर रहे हैं कुछ करने का है क्या डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू नहीं कर रहे हम लोग स्लो खेल रहे हैं स्पाइक दो ठीक है See you on the other side. ठीक है यार कभी कभी होता है ऐसा एक पिक निकालने की ट्राई करते हैं Sit down. Reloading. Coming Upper. through. चेंबर स्पॉट हुआ Reloading. नहीं तो दो लोग मिड आ जाओ ये आ जाओ सॉरी बी आ जाओ चेंबर बी प्लेयर रश भाई एफ क्या मैं वॉल के लिए लेट हूं Spike carrier. ऊपर येलो Can you take the spike, come back? B. जा चेतन निकाल भाई स्पाइक लेके आ जाओ वो मेरे पे आ गया फिर इतनी देर वॉक किया तो वॉक ही कर लेता ना ये है क्या पे है क्या रुको ले रहा हूं आगे रहेंगे अब तक ट्रैप है उसका आ गया बैक साइड ऊपर हेवन आएगा ऊपर में वो राफ्टर्स ऑफ लगाया हेवन ऊपर Last player standing. Spike down A. Put down. I have the spike. 30 seconds left. Don't get in my way. Welcome to my world. I got. Switching sides. Gotta go. I'll pick I'm them out of apart. here. You clean up whatever's left. पीमेंट ट्रैप दो कि मिड का ट्रैप दो तुम लोग के लिए usually what I like to do here this round में is to push Right there. Go, go, go. कोई आएगा push करने हां किधर क्या 3 मिनट push 3 मिनट वाइपर टीम अरे भाई 1v 1000 जन थे भाई सामने नहीं तू चलना ड्यूलिस्ट है तू ये लोग मैं होल्ड चल रहा करेंगे हूं तो हम तीन या हम बोला हां मैं फ्लैश करूंगा तो मैं मिड का ट्रैप नहीं रखता बीमेन का रखता हां बीमेन का रख भाई Stop their advance. Amen. Would be amen. मिड Toxins going up. फ्लैंक जाएंगे अरे बीमेन amen आ रहा है बीमेन पुश कर तू अच्छा हो गया Get lost. Toxin screen down. Spike down A. Go, go. दयांडी साला Last player standing. Teleport's ready. वाइपर टीम इसको क्लियर कट वाइपर टीम बोलते वे
enemy remaining. Spike planted. Oh. ऊपर जाएगा probably. मैं तेरे को बताना भूल गया कि उस टाइम पे तुझे बीवन पुश करने का ताकि पूरा ये क्लियर हो जाए. अच्छा भैया आज कितने की कमाई हो गई? 2 करोड़. एंटी दोस्तों, एंटी. पुशिंग क्यों करना है अभी? अब देखो ये राउंड इम्पोर्टेंट है. ये राउंड इम्पोर्टेंट है. ये जीतना पड़ेगा भाई. ये तो भाई ये नहीं. पाशा भाई आप अभी तक बदले ही नहीं हो यार. वैसे के वैसे ही छो. ये राउंड नहीं जीते तो भाई फिर क्या मतलब है खेल के. ये जाके भी हम कुछ कर रहा. आप ले सकते हो. रुको मैं उसको करता हूं. I'm out of here. चला जाओ. हेलो. अभी चलते उधर से. Spike planted. I'm out of here. Last player standing. थोड़ा सा अभी वॉल शूट डाल दो. हेड बढ़िया वाला. Chamber is always holding backstab. हाँ तो वो ट्रिप लगा के बैठा है आड़ी टेढ़ी जगह पे. मत जाओ. अरे हर्ष भाई एफ के बैठे हैं. एमएन हो रहा है. एमएन आओ जल्दी. अंदर आ रहे हैं. हेलो जैट मैं आ गई. I'm out of here. One more pipe. मोटाडो पुश करना उसको पुश कर. Enemy spotted A. ऊपर. एक ऊपर हो सकता है. One enemy remaining. Spike down A. Hello. Spike is A. कॉस्ट ऑफ देगी बोले 40 रुपए. हाय भाई आ गया मैं तब से 2 चैप्टर किए और 8 RR प्लस हैं. ए भाई यार एक तो पढ़ाई करो या तो वैलोरेंट खेलो भाई. तुम लोग है ना भाई जिसका भी बोर्ड एग्जाम से ना प्लीज एक्सक्लेमेशन बोर्ड्स वाला वीडियो देखो प्लीज. दैट विल हेल्प यू. Gotta go. मैं बी का ट्रैप देता हूं यार. सुनो वो लर्किन करके ना. Time to jump. There. इसके अंदर से फ्लैश बाउंस करना. There. समझ गया. Go. You go forward. I guess I missed it. Chamber mid 1 ट्रस्ट नहीं आओ. बहुत दूर से होता है. Last player standing. दोस्तों लाइक कितने हुए कोई गिन के बताओ मेरे को. पुश क्यों कर रहे हैं अपन एक. करते आज मोटाडो वापस. मैं बता रहा हूँ बहुत ऊपर बहुत दूर हो जाता है मोटाडो. मेरे लिए फ्लैश करना मुझे थोड़ा सामने निकलना पड़ेगा. हाँ बट वो हाँ जंप करके अगर अपना ये राउंड जाता है ना तो नेक्स्ट इको करना पड़ेगा. 7-11 हो जाएगा. रिकॉन तोड़ना फिर मैं करता हूँ. मिड देखना है एक बंदा. मैं फ्लैश देता हूं. मैं ऊपर आया जेट. Toxins going up. ए भाई वो रिकॉन ने बीटी दे दिया यार. Last player standing. थैंक यू शिव कुमार भाई. अबे जी नहीं था ये. वो रिकॉन बीटी दे दिया मेरे को. तुम्हें रेडी नहीं था वो आने के लिए. जा रहे हो एक्सपेक्ट कर रहे हो. तुम्हें फ्लैश वैश सब दे रहे हैं आगे. मिड पुश कर दो ना. अगर पुश ही करना है तो तुमको ना मल्टी.
spot first. मच्छर मच्छर मैं तुम लोग को खाने वाला हूँ भाई मच्छर लोग। Toxins going up. Poison orb emitting. Toxin screen down. Poison lost. Spike down A. Backside plant. Spike planted. Enemy A. Dizzy's up. Last player standing. It's all you, Mosh. यार। One enemy remaining. Rash is ready. दोनों मर जाओ। अनरेटेड चल रहा है क्या नहीं बेबी? Don't stop fighting. You must keep going, even if it's 1.7 के लाइक्स लिए 2 लाइक्स चाहिए, लाइक मारो। Gotta go. Go, go, go. इजी बोल रहा है भाई तुम लोगों को। इस स्क्रीन पे कैसे चढ़ते हैं? बता दो। पागल है? You want to play? Let's play. Be heavy. हाँ कौन बैठता है? Toxins going up. मैं बैठा हूँ। एक निकल गया। पीक मत करो बस, पीक मत करो, मैं हूँ इधर। फ्लैश दे रहा हूँ तेरे लिए। Toxin screen down. Spike down B. One enemy remaining. 40 tag. Nice. Nice one. अरे माँ कसम भाई मैंने रंगोली बना दी थी। Hey, little man, pump us up. Let's go. अब वो चेंबर का ऑफ वो था रे। अच्छा अल्ट था क्या? अल्ट था। हॉल्स का ट्रैप दो कि नहीं दो? बोल जल्दी बोल। एक ही देता छोड़ो। In we go. ये ऊपर आता है यहाँ, ऊपर टीपी मार। ए पे चैलेंज करो बट मरना मत अभी। पीक देना साथी। Toxins going up. Watch out. Toxin screen down. अपना साल्ट चल करो। Falling back, falling back. चेंबर लर्क होगा। मिड क्या करता? बी। दोनों है क्या? एक ही आवाज आ रहा है। एक सीटी होगा देख। Welcome to my world. Last player standing. Match point. If they mess with one of us, they mess with all of us. अपना इसको मारो ना रे। वही उसके ईगो में ही है ना, उसको करना आने देना बोल तो रहा हूँ। वो ईगो में ही अपना गेम गया मालूम। चैलेंज कर रहा है बट मरना नहीं है भाई, ऐसा पीक करके फालतू में। बस दिखाना है कि हाँ प्रेजेंस है, तुम आ नहीं सकते। यू डोंट हैव टू डाई। कमिट नहीं करना फाइट में। वॉल डालना है, वॉल डालना। Toxins going up. Someone's there. पीछे नहीं आ रहा। मिड है। No charges left. मिड कैन। अर्ज भाई देख हाँ। Coming back. वापस आ रहे। बी गया वो। चेंबर होगा लर्क पे देखना। बी गया चेंबर बी गया।
Anyone else? Enemy attacker spawn. Here. 450. Not your best. Last player अरे standing. नहीं दिखा भाई नीचे कूदा Right, Ramesh, हुआ. One enemy remaining. Blow him up, Mosh. Spike planted. Zizira, 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 Zizira. It's playing yellow, right, Chad? My buddy's defusing. Attackers win. चलो भाइयों मेरा हो गया. चलो guys, I'm done. Okay. I'll see you guys later. Bye bye, bye bye. भाई वो ए पुश बार बार करके ना हम लोग ने हरा दिया, मालूम क्या? ए पुश वो बार बार नहीं करना चाहिए था. चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा तो आया गेम में. गाइस 3 लाइक चाहिए 1.7 के लाइक्स के लिए. 3 लाइक, सिर्फ गिन के 3 लाइक. लाइक किया है तुम लोगों ने? अगर नहीं किया तो क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो? लाइक करिए, लाइक करिए. Just saw your boards video, really got motivated. Thanks Ashbhai, and uninstalled my game's social media. Well done. Well done. Well done. All the best for your boards. 1.7 can I clear? 3 likes. Come on, hit it. Hit it. Hit it. Okay. दो और tonight stream. Yes baby. 81.7k OP. Let's go. Okay, likes. Let's go. Thank you guys. Thank you so much for tuning in. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like and subscribe. मिलते हैं हम लोग अपने रात के स्ट्रीम में फोटोशॉप के, ठीक है? और कल फाइनल्स होगा VCT पैसिफिक का PRX वर्सेस GENG BO5. Thank you so much for tuning in. I'll catch you guys later. Till then, bye bye. Take care and see ya.